Good morning, dignitaries on the dais, dear students. So, as we have talked before when we were starting pre-test, I have told you the objective of today's update. Okay, so we have gathered here to learn ECG, its basics. We will learn how to interpret and how to perform interventions. As we know, if an abnormal ECG is there, it shows it is an emergency. Okay, so it is the important nursing responsibility that we should have good knowledge regarding ECG, as well as we should have good knowledge in our skills. Hands on should be to the perfect. Okay, so this is a great opportunity for us that we are having very eminent speaker for today's update, and they are going to share their knowledge and words of wisdom with us, and they are going to give you maximum knowledge. And please feel free to ask any question, because from 9 a.m. to 5 a.m. you are going to have a great learning experience. Okay, so here I would like to call upon Dr. Shashi Mawar. Ma'am is BSc course coordinator, and ma'am is very lovely person. As we all have worked with her, you have been posted with ma'am. Okay, you must have learned so many good things, and ma'am is a very, I should say, best administrator. Okay, all of you agree with me? Yes. Okay, so I would like to call upon ma'am Shashi to have some words with you. Ma'am, please. Good morning, everyone. You all had breakfast now? I want a loud good morning. All awake? Good. So, thank you, Nilima, for your kind words. And thank you, organizers, for creating this platform, a learning platform, for this group of students, because ECG is a thing which you are going to not only utilize only during your theory exam or during your study period, but this is a thing which you are going to utilize it throughout your professional life. And it is not only in the ICUs you are going to utilize that learning experience, but you are going to utilize that learning experience in all across all the areas, even in community. Many a times people will come along with their ECGs and will ask you some questions कि मैडम मेरा ये ECG करवाया था, what do you say? So at least you should be able to interpret the basics and let them know. So the theme of today's workshop, which I am unfolding, is, do you all know the theme? It is basics, interpretations, and interventions. So you are going to learn the basics. For this, the organizers have worked quite hard in selecting the speakers, making it a hands-on workshop, and you are also going to learn about the interpretations. So the steps of interpretation will be cut down for you so that you are able to learn at the maximum. And interventions, that is what will be the management of what kind of interpretations which you are able to do, you should be able to learn even that. So a happy learning to all of you for today, and I hope this is going to be a very good experience for all of you. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your kind words. Now, we will be discussing the schedule for the day. Okay. So first, there will be class on basics of ECG rhythm and normal sinus rhythm. That would be taken by Dr. Seema Sachdeva, ma'am. And the second class will be from 10 to 10:30, 9:30 to 10 a.m. It will be on recording of ECG, responsibilities of a nursing officer, taken by Ms. Vani Krishnan. The next program will be from 10 to 10:30 a.m. That will be on monitoring devices, that is ECG machine, cardiac monitor, AED, defibrillator, Holter monitor, TMT, and related devices or accessories, etc. by Ms. Divya George. It will be followed by a tea break, and then from 11 to 11:30 a.m. We'll be having class taken by Mr. Sajin Abdul Kader on analysis, interpretation, and management of ischemia and infraction. From 1:30 to 2,
There will be class on analysis, interpretation, and management of atrial and ventricular dysrhythmias by Dr. Rakesh Yadav from 12 p.m. to 12:30 p.m. Next class will be on analysis, interpretation, and management of ECG changes in heart block. That will be taken by Dr. Y.K. Subhash Singh. And the next class will be from 12:30 p.m. to 1 p.m. on analysis, interpretation, and management of bradyarrhythmias, tachyarrhythmias, and management by Dr. Nisha Thomas. Next, from 1 p.m. to 2 p.m. we'll have a short lunch break, and from 2 p.m. to 3:30 we'll have skill stations by all resource persons and BSc nursing students. Then there will be we'll be having 3:30 p.m. to 4 p.m. quiz on ECG by Miss Sibi Riju ma'am. Then from 4:30 p.m. to 5 p.m. we'll be having from 4 p.m. to 4:30 p.m. we'll be having the post test and feedback time. That will be taken by Miss Sibi Riju ma'am. And then from 4:30 p.m. to 5 p.m. there'll be small break for tea and snacks. So I hope you understood the schedule for today. Okay, is it clear? Today we are having a tight schedule. Okay, so from this moment onwards, you will be learning so many things. So try to involve with the speakers, ask questions, interact with the speakers, and take the maximum, extract and exploit the speaker maximum. They are having great amount of knowledge. We have undergone classes of 2 to 3% dignitaries, but this class will be really amazing for all of you. So how many of you like cardiology? So are you it will be a great fluttering experience for you in your heart. You will be learning ECG, you'll be understanding it, you'll be able to explain it. If we have knowledge, we'll be having a great power which will not be taken away from ourselves. Money can be taken away, respect can be taken away, but knowledge, it will not be taken away. Okay, so grab knowledge, have focus. You don't spend your time in texting somebody or going through Instagram. Switch off your phones and engage you completely yourself. It will be a very fruitful experience. Otherwise, it will be very futile. Okay. Okay. Ready? So, shall I welcome the first speaker? So, have you seen the flyer? Have you seen the poster for it? Before that, everybody completed the pre-test, right? Okay. So, who is the first speaker for the day? Okay. So, what is the topic? Basics of ECG rhythm and normal sinus rhythm. Okay, it will be a revision for all of us. Okay, so I respectfully invite Dr. Seema ma'am to address us and teach us. Okay, thank you, ma'am. कैमरा ऑन रखना है, मेरी पीपीटी शेयर कर।
इस पे क्लिक करो, शेयर, पीपीटी, बोलो, स्लाइड शो, यहीं से हो जाएगा। Thank you so much. So, a very good morning to my dear students. So before I start, I would like to say my thanks to our respected principal, ma'am, Dr. Lata Venkateshan, our course coordinator, Dr. Shashi, and organizer of this ECG update, Ms. Nilima Raj, Ms. CB, and Hansaram sir, who have worked very hard to arrange for all these things related to the ECG update. You agree with that? Let's start our topic. The first topic of the ECG update is basic of ECG. So before we go ahead with the tachyarrhythmias or arrhythmias, we should know what is the basic of ECG. I hope you must have read in the cardiology unit what is ECG. What do you mean by ECG? Electrocardiogram. Very right. It is also like we also say it as ECG or EKG. Both things are same, right? And it measures the electrical activity of the heart. We have the mechanical activity, like which helps in the conduction. You know the conduction? You must have read in the anatomy physiology. So it measures the electrical activity of the heart. That is called a electrocardiogram. So it's a procedure of recording the electrical activity of the heart. Whatever the conduction is going inside the heart, it measures the electrical activity. And we apply the electrode. In ECG, you know, we apply the electrodes. We have the limb leads, we have the chest leads, they all the electrodes. And this ECG, by using that leads, it measures the voltage, what is the electrical potential of that electrodes, right? We can't see that leads. We can only see the, though we are applying the electrodes on the patient. Here we are having on all four limbs, we are applying the limb leads, right? We are having the electrodes, four electrodes we are applying. And chest, we are applying the chest leads that are also called precordial leads, right? And with that are the leads which, like we say, lead 1, lead 2, lead 3, we have the augmented leads, we have the chest leads. We are not able to see the leads, we are applying just the electrodes, and these leads, they are measuring the electrical that voltage of that electrodes, right? So the electrode combination via leads, it record the potential difference of electrical activity of the heart. And electrocardiograph is a machine which measures the electrical activity of the heart, and electrocardiogram is the record. जो हमारा ECG sheet पे record निकलता है, that is called a electrocardiogram. So this is a picture of cardiac conduction system. I hope you all have read in your anatomy physiology how the conduction system is there in the heart. It starts from the SA node. SA node is also called a pacemaker of the heart. The impulse start from SA node, right? And from SA node, the impulse moves to AV node, right? So AV node is present somewhere. SA node is present in the right atrium, where the great vessels enter into the right atrium. And AV node, it's between the right atrium to the right ventricle. And from AV node, the impulse moves through bundle of His. And from bundle of His, left bundle branch and right bundle branch, and then the Purkinje fibers, right? And it all happens within a fraction of a second. So as you can see in this diagram, first the impulse, it goes to the SA node. SA node is also called pacemaker of the heart, right? First it depolarizes. What do you mean by depolarization? Contraction. Repolarization means relaxation, right? So after the SA node, it depolarizes, the impulse moves to electrical activity, goes rapidly to AV node via the internodal pathway. Now what is the action of AV node? AV node क्या करेगा? It will cause the atrias to contract. Right atrium or left atrium, it contract simultaneously, right? So what will happen? Depolarization spread more slowly through the atria. Once the AV node is depolarized, we have a contraction of atria, right? And then we see the P wave in the ECG. P wave shows the atrial contraction. That is a atrial depolarization.
So depolarization, it spread more slowly through atria and conduction moves through the AV node. If you see the figure number 4, then depolarization moves rapidly through the ventricle conduction system. Once the atrias are contracted, what will happen? Then there is a atrial relaxation is not seen. It is happening, but it is not seen into the ECG. After atrial contraction, impulse moves through the bundle of his. Then we have a ventricle contraction. And ventricle contraction, it is seen into the ECG in the form of very good QRS complex. देखो ventricle की जो muscles होती हैं ना, they are very thick. ठीक है, so it needs a high amplitude to contract. आपने कभी देखा ECG में QRS is a very like उसका amplitude ज़्यादा होता है as compared to P wave because ventricle muscles are very thick. It needs a larger power. It needs a larger potential to contract. That's why the peak of QRS is quite high. और जिन patients का हमारा myopathy होता है, जिनका muscles weak होता है, usually the peak of QRS is quite lesser as compared to the normal patient, right? And after ventricle contraction, what will happen? Ventricle relaxation. Atrial relaxation होगा, वो उसी टाइम होगा जिस टाइम ventricle contract कर रहे हैं, but you are not able to see it into that ECG. ठीक है, तो ventricle relaxation के टाइम which wave will come? T wave. ठीक है, तो हमें ये चीज देखनी बहुत जरूरी है कि टी वेव आ रही है कि नहीं आ रही, बिकॉज इफ द पेशेंट इज हैविंग एमआई के पेशेंट्स में क्या होता है, देयर इज अ ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है एंड देयर पेशेंट इज ऑलरेडी हैविंग डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई कम है, तो पेशेंट का जो टी वेव है दैट विल बी ऑल्टर्ड, राइट? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. So these are the things which are in the basic anatomy and physiology of conduction system of heart. Now we will look for how the ECG leads are placed. You know what are the different ECG lead? हमारे पास chest leads होती हैं. If we talk about the 12 lead ECG, here in this class we will talk about the 12 lead ECG. So in 12 lead ECG, how many electrodes are there? हम patient पे electrodes apply कर रहे हैं. हम जो leads हैं वो hypothetical image देंगे हमें. हम patient पे electrode apply कर रहे हैं. How many electrodes are there? 10. ठीक है, that 10 electrodes give a 12 view of the heart. वो 12 व्यू बताएंगे हार्ट के, वो 10 इलेक्ट्रोड्स. तो वी आर हैविंग दैट राइट आर्म, राइट लेग, लेफ्ट लेग. दीज आर कॉल्ड लिम्ब लीड्स. और जो लिम्ब लीड्स होती हैं दे आर द बाइपोलर लीड्स. इसमें एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा. जो लीड हमारी होगी, लीड 1, लीड 2, लीड 3, दे विल मेजर द potential difference of these two electrodes. Positive and negative का it will measure the difference and it will reflect on that machine, right? So they are called the limb leads. और जो हमारी right leg की जो lead होती है, electrode होता है, that is the neutral one. We don't consider, वो grounding के लिए होता है, वो neutral होता है, ठीक है? And another one is we have the chest lead. Chest leads are also called precordial lead. ठीक है, जो limb leads हैं वो हमारा vertical view of heart देंगी. जो chest lead हम directly apply करेंगे, they will give the transverse picture of the heart. They will give the horizontal picture of the heart, right? So we have the standard limb leads and we have the precordial leads. Precordial leads को हम chest leads भी बोलते हैं. जो limb lead 1 है, it will show the difference of voltage between right arm and left arm, right? And lead 2, अगर ये right arm से left arm में move कर रही है तो which view of heart will be shown? कौन सा view दिखाएंगे ये? Lateral view of heart. And lead 2 and lead 3, जो lead 2 है it will connect from right arm to left leg, right? Can you see negative and positive? So it is a bipolar lead. It will measure the potential difference of voltage between positive and negative. So lead 3, it will measure the from left leg to left arm, right? And it will give the lead 2 और lead 3 कौन सा हमारा व्यू देंगे? हार्ट हमारा ऐसे है ना, तो कौन सा व्यू देंगे ये हार्ट का? इंफीरियर व्यू ऑफ हार्ट. ठीक है, अगर हमें इंफीरियर वॉल एमआई देखना है तो बेसिकली वी विल गो फॉर लीड 2 एंड लीड 3. आपने ईसीजी में देखा ना, वी यूजुअली सिलेक्ट की कौन सा लीड सिलेक्ट करना है. अगर हमें इंफीरियर वॉल एमआई लग रहा है देन वी विल गो फॉर लीड 2 एंड लीड 3 सिलेक्ट करके इट विल गिव द बेटर इमेज ऑफ द हार्ट. So this is also called Einthoven's triangle. Can you see the lead 1? Lead 1 connect from to left arm. Okay, electrodes are attached to the skin surface and it will measure the difference of voltage between these two, right arm and left arm. And lead 2 from, always remember this, lead 2 for right arm to left leg, lead 3 from left arm to left leg. And it lead 2 और lead 3 हमेशा inferior view of heart देंगे आपको, ठीक है? और lead 1 हमेशा lateral view of heart. So we also have the augmented limb leads. Augmented limb leads जो हमारी होती हैं वो होती हैं ABR, AVL and AVF. ABR का मतलब है
ऑगमेंटेड वोल्टेज राइट, जो हमारा राइट व्यू ऑफ हार्ट देते हैं, ठीक है। हमारे राइट साइड ऑफ हार्ट का जो बेस्ट व्यू है वो एवीआर व्यू से आता है, ओके। दे आर यूनिपोलर लीड्स, इसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। एवीएल इज ऑगमेंटेड वोल्टेज लेफ्ट एंड एवीएफ इज ऑगमेंटेड वोल्टेज फुट। जो एवीएफ है ये कौन सा व्यू दे रहे हैं हार्ट का, हार्ट के नीचे की तरफ से इमेज ले रहे हैं ना, कौन सा व्यू दे रहे हैं, इंफीरियर व्यू, ठीक है। तो वी हैव AVL lead 1, lead 2 it gives the lateral view, lead 2, lead 3 AVF inferior view, और AVR हमेशा हमारा राइट साइड ऑफ व्यू ऑफ हार्ट देंगे। AVR में हमारा QRS कॉम्प्लेक्स हमेशा नेगेटिव आएगा, नीचे की तरफ आएगा, बिकॉज इट गिव द राइट साइड। में जो एंगल्स है ना दैट विल बी बेटर एक्सप्लेन्ड बाय द सजिन, जो इसमें आइनथोमन्स एंगल्स में इसमें जो आपके डिग्रीज दिया हुआ है ना, एपेक्स इज यूजुअली एट द 0 डिग्री, आपको 0 डिग्री नजर आ रहा है इसमें, एपेक्स इज यूजुअली एट द 0 डिग्री, जो हार्ट के पास है वो पॉजिटिव है, जो हार्ट से दूर आ रहा है वो नेगेटिव में आएगा। So V1, V2, V3, V4, V6, V1 and V2 it will give the image of the right side of the heart and anterior side of the heart. V3, V4 anterior, V5, V6 will be the lateral and left ventricle view of the heart. So this is about lead placement. Lead placement में can you see the limb leads? नजर आ रहे हैं limb leads? बेटा जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, इट हैज गिवन अ स्टैंडर्ड कलर कोड कि लिम्ब लीड्स का कलर कौन सा होना चाहिए। अब हम लगाते हैं, हमें पता नहीं होता कि ये राइट में लगाना है कि लेफ्ट में लगाना है, तो हाउ वी विल रिमेंबर इट, हाउ वी विल रिमेंबर। सबसे ऊपर टॉप में कौन सा है, राइट एट्रियम का कौन सा है, व्हाइट, व्हाइट इज फॉर स्नो, और राइट लेग में कौन सा कलर है, ग्रीन, तो दैट इज फॉर ग्रास। तो हाउ वी रिमेंबर इट, स्नो ओवर द ग्रास, राइट, it's just a way how you have to remember mnemonic, snow over the grass. So right leg में जो लगेगा, सॉरी जो राइट आर्म में लगेगा that will be white in color, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने स्टैंडर्ड कलर कोडिंग दिया हुआ है। जो राइट लेग में है that will be green, right। now लेफ्ट आर्म में कौन सा कलर है, ब्लैक, that is for the smoke, ठीक है। एंड लेफ्ट लेग में कौन सा है, रेड, that is a fire over the smoke, okay। so this way you have to remember, snow over the grass and smoke over the fire, right। this way you can remember it। and we also have the lead chest leads, they are also called the precordial leads। हमारी कितनी precordial leads होती है, 6, V1, V2, V3, V4, V5, V6, ठीक है। अब लगाना कैसे है, how we have to put the V1 कहाँ लगाएंगे हम, ये आपकी क्लेविकल बोन है, कैन यू फील दैट, ये हमारी सुप्रास्टर्नल नोच है, यहाँ से हम काउंट करना शुरू कर देंगे, एंड वी विल गो टू द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है। फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे हम पहला इलेक्ट्रोड लगाएंगे V1 राइट साइड में, ऑलवेज रिमेंबर राइट साइड ऑफ द हार्ट वी विल अप्लाई द V1। उसी के बिल्कुल पैरेलल फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे हमारा कौन सा लीड लगेगा, कौन सा लगेगा, V2, ठीक है। ये हमारा सेप्टल व्यू ऑफ हार्ट देंगे हमारा, ठीक है। अब V2 के बाद V3 नहीं लगाना, V4 लगाना है, क्योंकि V3 जाएगा V2 और V4 के बीच में, ठीक है। और V4 कहाँ लगाना है, वी हैव टू अप्लाई, फोर्थ पे हमने लगा दिया, अब उससे जस्ट एक रिब नीचे आओ, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एट द मिड क्लेविकुलर लाइन, ये हमारा क्लेविकल है, मिड क्लेविकुलर लाइन पे फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे, ठीक है। नाउ आफ्टर V4 वी कैन गो फॉर डायरेक्टली फॉर द V6, ठीक है, क्योंकि V5 यूजुअली हमारा V4 और V6 के बीच में जाता है, तो V6 विल बी एट एंटीरियर, दैट विल बी एट द मिड एक्सिलरी लाइन, जो हमारा आर्म पिट के सेंटर में ना मिड एक्सिलरी लाइन पे जाएगा। और V5 कहाँ होगा, V4 और V6 के बीच में, वो कहाँ पे आएगा, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, जहां से हमारा शुरू होता है। कैन यू सी दिस एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, वी विल शो यू अ वीडियो आल्सो, इज इट क्लियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू हैव टू, बिकॉज अगर आपने गलत लगाया तो इट विल गिव अ डिफरेंट इमेज ऑन द TCG मशीन एंड यू कैन रॉन्गली इंटरप्रेट योर ECG, ठीक है। सो यू शुड नो कहाँ कहाँ पे कौन सी लीड लगानी है एंड चेस्ट लीड्स कैसे लगानी है। शुड आई मूव अहेड, इज इट क्लियर। So the representation of electrical heart, electrical activity of the heart is critically dependent on position of electrode। अगर आपने electrodes गलत लगाए, it will give a wrong image of the heart, ठीक है, and you can wrongly interpret and accordingly management will be different। The same electrical activity will look different on different electrode combination, right? And a combination of electrode of for recording is called lead। lead हम देख नहीं सकते, पर lead हम मशीन में select करते हैं, हम सिर्फ पेशेंट के इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करते हैं। ये 10 इलेक्ट्रोड पेशेंट का 12 व्यू ऑफ हार्ट देंगे, right? Is it clear?
तो आपको सिर्फ ईसीजी के बेस पे मैनेजमेंट नहीं करना, आपको पेशेंट की सिम्पटम्स के बेस पे मैनेजमेंट करना। हो सकता है कि ईसीजी के इलेक्ट्रोड्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इनटू द मशीन, तो सिर्फ और सिर्फ ईसीजी के बेस पे आप पेशेंट का मैनेजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है? अलोंग विद द ईसीजी यू विल सी द सिम्पटम्स ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को भी आपने ऑब्जर्व करना है, फिजिकली एग्जामिन करना है, ओनली देन यू विल स्टार्ट योर मैनेजमेंट पार्ट, राइट? कई बार होता है ना कि फ्लैट लाइन प्रोटोकॉल, पेशेंट की वहाँ फ्लैट लाइन हो रही है एंड यू विल स्टार्ट द सीपीआर, जब बाद में पता लगेगा आपने सीपीआर करना शुरू कर दिया एंड पेशेंट का पल्स है ऑलरेडी, जस्ट बिकॉज योर इलेक्ट्रोड्स वर लूज एंड इट इज शोइंग द फ्लैट लाइन, ठीक है? जबकि पेशेंट का पल्स है, तो यू हैव टू सी, आपको पेशेंट के सिम्टम्स भी देखने हैं। नाउ वी विल कम फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ ईसीजी पेपर। ईसीजी देखा है सबने? ईसीजी का पेपर देखा है आपने? ईसीजी का पेपर हम 2 डायमेंशनली देखते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट? एक्स एक्सिस में हम क्या देख, कैन यू सी अ बिग बॉक्स एंड स्मॉल बॉक्सेस? एक बिग बॉक्स में कितने स्मॉल बॉक्सेस होते हैं? 5 स्मॉल बॉक्सेस। जो हम एक्स एक्सिस में वहां हम देखेंगे ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब उस कंडक्शन में कितना टाइम लग रहा है, उस कॉन्ट्रैक्शन, उस रिलैक्सेशन में कितना टाइम लग रहा है। जो हमारा एक स्मॉल बॉक्स होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्स एक्सिस नाउ, एक स्मॉल बॉक्सेस ड्यूरेशन इज 0.04 सेकेंड, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अगर हम नॉर्मल ईसीजी इंटरप्रेट करते हैं तो आपको पीआर इंटरवल कितना है, क्यूटी इंटरवल कितना है, ये पता होना चाहिए एंड दिस यू विल सी इन योर पोस्ट टेस्ट आल्सो, ठीक है? एक स्मॉल बॉक्स का ड्यूरेशन है 0.04 और एक बिग बॉक्स जो 5 स्मॉल बॉक्सेस को मिलकर बनता है, दैट ड्यूरेशन इज 0.04 into 5, 0.20 सेकेंड, राइट? क्लियर? एंड इफ आई टॉक अबाउट द एम्पलीट्यूड, जो एक बॉक्स का हाइट है दैट विल बी 0.1 मिलीवोल्ट, ठीक है? और 5 का कितना होगा? 0.5 मिलीवोल्ट। इज इट क्लियर? So this is how we interpret the ECG. P wave, QRS, T wave. You all know P wave कब आएगी? जब आपका AV नोड डिपोलराइज, पहले ऐसे नोड से AV नोड में जाएगा, AV नोड आपका डिपोलराइज होगा तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन आएगी, तो P वेव नजर आ जाएगी आपको। P वेव के बाद एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, नाउ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है? जैसे ही वो आर वेव पे पहुंचा, वेंट्रिकल विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। पीक ऑफ आर वेव जैसे ही हुआ, वेंट्रिकल विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है? और उसके बाद टी वेव फॉर वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, ठीक है? नाउ पी वेव दैट आई हैव टोल्ड यू। इसके बाद हम क्या देखेंगे? पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल का मतलब होता है ऑनसेट ऑफ एट्रियल एक्टिवेशन टू ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकल एक्टिवेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब हम नॉर्मल ईसीजी इंटरप्रिटेशन सिखाते हैं, यू शुड सी व्हाट इज द पी आर इंटरवल, ठीक है? सो पी आर इंटरवल हमें क्या बताएगा? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के बीच में, डिपोलराइजेशन के बीच में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है? QRS complex will tell you about the ventricle depolarization. T wave will tell you about the ventricle repolarization. और QT interval क्या बताएगा? QRS किसके लिए? Ventricle contraction. T for ventricle relaxation. So QT interval tell you about the complete ventricular activity, contraction as well as relaxation. So this I have told you, one small box 0.04, one large box 0.20. So now we will come about the calculation of heartbeat. आप अपना हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे ईसीजी के बेस पे? डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट? यू विल हैव द मल्टीपल क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। अगर हमारा रेगुलर रिदम है, हाउ यू विल कम टू नो कि पेशेंट का रेगुलर रिदम आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, from this side, how you will come to know? Anyone? Whether it is a wrong answer? No problem. कैसे पता लगता है ये रेगुलर रिदम है कि इररेगुलर रिदम है? स्टैंड अप एंड से यस। ड्यूरेशन और कुछ जो आपको देखने से ही पता लग जाता है कि ये रेगुलर आ रही है कि इररेगुलर? यस बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। आप आरआर के बीच में देखते हो कितने बॉक्सेस हैं। अगर आपको लग रहा है कि हर बार तीन बॉक्सेस आ रहे हैं तो इट मींस ये रेगुलर है। चाहे वो एक बॉक्स ही, चाहे वो टेकीकार्डिया ही है, पर वो रेगुलर है कि इररेगुलर है? तो आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर रिदम के लिए मैनेजमेंट डिफरेंट है, इररेगुलर रिदम के लिए मैनेजमेंट डिफरेंट है, ठीक है? तो कितना डिफरेंस है, ठीक है? अगर एक जगह आ रहा है, 2 आरआर के बीच में 3 बॉक्सेस आ रहे हैं, एक जगह सिर्फ 1 बॉक्स आ रहा है, एक जगह 10 बॉक्सेस आ रहे हैं, तो इट मींस इट इज अ इररेगुलर रिदम, ठीक है? अगर वही चीज बार-बार 6 सेकंड की हमारी ईसीजी स्ट्रिप होती है, अगर उसी में ऐसे बार-बार इररेगुलरिटी आ रही है, तो वी विल से इट इज अ इररेगुलर रिदम। नाउ वी विल टॉक अबाउट रेगुलर। रेगुलर मींस इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन 2 आरआर, राइट? अगर इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं तो हाउ टू कैलकुलेट द हार्ट रेट? नंबर ऑफ big boxes between 2 RR divided by
सॉरी 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस। अगर मेरे उसमें 2 बिग बॉक्सेस हैं तो व्हाट विल बी द हार्ट रेट? 150। अगर 3 है 100, वेरी गुड। अगर सिर्फ एक ही है तो 300 है, ठीक है। और देयर इज अनदर फॉर्मूला, स्मॉल बॉक्सेस को काउंट कर लो एंड यू विल 3 that 1500 divided by number of small boxes. Yeah, this also you can calculate. This is same. And if we have the irregular rhythm, अगर हमारी irregular rhythm हो रही है तो we will not calculate by this method. What we will do, हमारी 6 सेकंड की ECG स्ट्रिप में जितने RR हैं, जितने QRS complexes हैं, we will multiply it by the 10. ठीक है, that will give us a rough estimate of what is the heart rate. Okay? So this is the rule of 300. How we have to calculate? You all know this? पता लग गया ये? तो व्हाट विल बी द हार्ट रेट इन दिस? ऊपर वाले में कितना हार्ट रेट होगा? कैलकुलेट करो। 100, 3 स्मॉल बिग बॉक्सेस हैं, डिवाइडेड दैट 300 डिवाइडेड बाय 300, राइट? नीचे वाले में कितने हैं? 75, राइट? तो नाउ कैलकुलेट द हार्ट रेट। सेकंड वाले में काउंट करो, सेकंड वाले में काउंट करो, व्हाट विल बी द हार्ट रेट? यस, वेरी गुड। So now you got an idea? Now important aspects to interpret in ECG. अगर हमारे पास ECG strips हैं तो हमें क्या-क्या चीजें देखनी है, ठीक है? What all important things which we have to look. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि what is the difference of heart rate between an adult and a child. ठीक है? There is a physiological difference, right? And you have to calculate the heart rate by using the formula number of boxes divided by 1500 or 300. Then you have to see whether it is a regular rhythm or it is a irregular rhythm. ये जरूर देखना है। जब भी आपके पास ECG स्ट्रिप आएगी, ये देखना है कि हार्ट रेट कितना है, रेगुलर है कि इरेगुलर है, राइट? प्रेजेंस ऑफ पी वेव, उसमें पी वेव नजर आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है? एंड पी वेव शुड बी बिफोर द QRS, ठीक है? पी वेव शुड बी बिफोर QRS एंड एक QRS से पहले एक ही पी वेव होनी चाहिए इन अ नॉर्मल ECG। रेशियो शुड बी 1, ठीक है? 1 पी वेव फॉर 1 QRS। इफ इट इज अ मोर देन 1 पी वेव देन समथिंग रॉन्ग इज देयर, पेशेंट इज हैविंग सम एबनॉर्मलिटी। नॉर्मल, अभी हम नॉर्मल ECG की बात करें, हम नॉर्मल ECG हम सब्सिक्वेंट प्रेजेंटेशंस में डिस्कस करेंगे, ठीक है? एंड PR इंटरवल, आई हैव टोल्ड यू द ड्यूरेशन ऑफ स्मॉल बॉक्सेस, बताया है ना मैंने। एक छोटा स्मॉल बॉक्स कितना उसका ड्यूरेशन होता है? 0.04। तो जो हमारे PR इंटरवल है, जो उसका नॉर्मल एक ECG में PR इंटरवल जो होना चाहिए, इट शुड बी 0.12 टू 0.20, या फिर एस्टिमेट, या फिर वी विल से 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस। अगर ये उससे ज्यादा हो गया तो इट इज टेकिंग मोर टाइम फॉर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, उतना ही ज्यादा टाइम लग रहा है। समथिंग रॉन्ग इज देयर, समथिंग रॉन्ग इन द कंडक्शन एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ठीक है, विच इज इंटरफेयरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। सम ब्लॉक इज देयर, समथिंग रॉन्ग इज देयर, दैट इज टेकिंग अ मोर टाइम। तो अगर हमारे नॉर्मल ECG में हमें पता होगा कि PR इंटरवल 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस होना चाहिए, देन वी विल कम टू नो कि हमारा पेशेंट का ECG नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, ठीक है? वी विल से 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस। नेक्स्ट इज एवरी P इज प्रेसिडेड बाय QRS, तो हर QRS से पहले P होना चाहिए। अगर P नहीं है, समथिंग रॉन्ग इज देयर इनटू द ECG। हो सकता है पेशेंट में सिर्फ QRS नजर आ रहे हैं, P आपको नजर ही नहीं आ रहे। इट मींस एट्रिया का काम हो ही नहीं पा रहा, सीधा वेंट्रिकल्स ने चार्ज ले लिया। समथिंग रॉन्ग इज देयर, ठीक है? कुछ एक्टोपिक फोकाई काम कर रहे हैं एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग इनटू द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द एट्रिया। ओनली AV नोड इज वर्किंग, SA नोड इज नॉट वर्किंग, सो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, ठीक है? सो यू हैव टू स्टार्ट द इमीडिएट मैनेजमेंट। QRS कॉम्प्लेक्स नैरो है कि वाइड है, तो QRS कॉम्प्लेक्स का जो नॉर्मल इंटरवल होता है दैट शुड बी 0.04 टू 0.10 सेकेंड, और हम बोलते हैं कि इट शुड बी अराउंड, इट शुड बी अराउंड लेस देन 3 स्मॉल बॉक्सेस, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 स्मॉल बॉक्सेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? सो दीज ऑल थिंग्स विच यू हैव टू सी इनटू द नॉर्मल ECG, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। क्या क्या चीजें होती है इसमें बताओ नॉर्मल ECG में? फर्स्ट थिंग इज हार्ट रेट, हार्ट रेट का फॉर्मूला पता है, और क्या चीज देखनी है आपको? रिदम रेगुलर है कि इरेगुलर है, और क्या? अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में ना वी विल आस्क यू कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, स्किल स्टेशन पे भी, तो आपको ये सब चीजें, आपको ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं कि ये सब चीजें हमने देखनी है। थर्ड चीज क्या देखनी है? पी वेव QRS से पहले होनी चाहिए एंड रेशियो शुड बी 1। और क्या देखना है? PR इंटरवल कितना होना चाहिए? 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस। उसके बाद QRS नैरो है कि वाइड है, एंड जो QRS नॉर्मल होता है इट शुड बी अराउंड लेस देन 3 स्मॉल बॉक्सेस। अब दिस इज अबाउट द नॉर्मल साइनस रिदम। नॉर्मल साइनस रिदम में जो हार्ट रेट होगा 60 to 100 होगा, ठीक है? 60 to 100। अगर 130 से ऊपर है तो हम बोलते हैं टैकीकार्डिया है, 150 से ऊपर पेशेंट अनस्टेबल हो जाता है,
ठीक है, इसमें रिदम रेगुलर होगी, सारी वेव्स प्रेजेंट होंगी, पी क्यू आर एस टी सब नजर आएगा आपको। ईच पी वेव इज प्रेजेंट बिफोर क्यू आर एस। पी आर इंटरवल जो होगा वो 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस होगा एंड नॉर्मल क्यू आर एस इंटरवल विल बी लेस देन 3 स्मॉल बॉक्सेस। क्लियर? दिस इज अबाउट द नॉर्मल साइनस रिदम। जब आपको इंटरप्रिटेशन में आएगा ना, देन यू शुड बी एबल टू से कि ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। साइनस ब्रैडिकार्डिया में क्या होगा? लेस देन 60 होगा, ठीक है, और 40 से कम होगा तो पेशेंट अनस्टेबल हो जाएगा। तो आर आर इंटरवल विल बी कांस्टेंट एंड रेगुलर, ऑल वेव फॉर्म विल बी प्रेजेंट एंड पेशेंट यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक। ब्रैडिकार्डिया तो है पर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होगा क्योंकि हार्ट रेट अभी 40 से नीचे नहीं गया है, ठीक है, एंड नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। ऑफनली इट इज बिकॉज बाय द ओवरडोज ऑफ बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड इट इज ऑल्सो सीन इन टू द एथलीट्स, ठीक है, इन पेशेंट्स में भी हमारा ब्रैडिकार्डिया मिलता है एंड दैट इज अ नॉर्मल फॉर दीज पेशेंट्स, दीज पर्सन्स। साइनस टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया मीन्स 100 से ऊपर पर 150 से नीचे रहेगा, ठीक है, 150 से ऊपर जाते ही पेशेंट अनस्टेबल हो जाएगा, तो उसको हम साइनस टेकिकार्डिया नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे अर्दमियाज शुरू हो गए पेशेंट को, ठीक है। सो इसमें आर आर इंटरवल कांस्टेंट होगा, रेगुलर होगा, पी हार्ट रेट बढ़ जाएगा 100 से ऊपर पर 130 से ऊपर यूजुअली नहीं जाता है, ऑल वेव फॉर्म्स होंगे। इट यूजुअली हैपन इन केस ऑफ एक्सरसाइजेस, स्ट्रेस, पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक, यूजुअली इट आल्सो हैपेंस इन केस ऑफ हाइपोवोलेमिया। इज इट क्लियर? जो जो चीजें समझनी है ईसीजी में वो क्लियर है? नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू ऑल नो, क्या क्या करते हैं हम ईसीजी से पहले? जब हमने ईसीजी लीड्स लगानी, क्या करेंगे हम? पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे, प्राइवेसी देंगे, स्पेशली फीमेल पेशेंट्स में हमें प्राइवेसी देना है, और क्या करेंगे? यू विल चेक कि सारे इलेक्ट्रोड सही से लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, ठीक है, बिकॉज अगर आपने गलत लगाए, अगर आपने अच्छे से नहीं लगाए, इट विल गिव द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। और कुछ? हाँ, मशीन का कनेक्शन देखेंगे, जेली लगाएंगे फॉर द प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, एंड यू विल डॉक्यूमेंट। शेयरिंग कर। So this was all about my slides. Now we will just see the small videos. ठीक है, ECG placement और ECG.
नीलिमा मैम का मैं डाउनलोडेड है वो दूसरा ये तो इसमें मेल कर दूंगी मैं बता दो ये तो खुला है उसमें A node fails, or there's a block somewhere here, then the AV node will kick in. It will generate its own impulse. And when this happens, the AV node will generate a heart rate of 40 to 60 beats per minute. And that also includes the bundle of hits. The bundle of hits also will generate its own impulse, and it's enough to make 40 to 60 beats per minute. And if the AV node or the bundle of hits fail, then the right bundle branches and the Purkinje fibers will generate their own impulse, and they have the capacity to make a heartbeat up to 20 to 40 beats per minute. So now, let's talk about EKG. It has different parts. We will start with this small bump right here called the P wave, followed by this tall structure right here called the QRS complex. And lastly, the last bump after the QRS complex would be the T wave. Let's discuss them one by one. Let's start off with
P wave. The P wave represents atrial depolarization. During atrial depolarization, the two atria are contracted. Next up, the QRS complex. Now, the QRS complex represents ventricular depolarization. During ventricular depolarization, the ventricles of the heart are contracted. Depolarization is for contraction. So how do you know which one is which? The P wave is for atria, while QRS is to ventricles. So if you look at the diagram right here, the QRS complex, it kind of looks like an inverted V. So V for ventricles. So you see a QRS complex is 0.12 to 0.20 second. Of ACC, I hope it is clear. If there is any question, you can ask. आपको ECG में यही सब चीजें anything else which you want to ask, any query? Thank you very much. So I hope everybody understood about the basics, right? It was an interesting class, right? Any doubts, any queries, you can ask ma'am, contact ma'am anytime. I hope so. Okay, ready for the next section? So, for a good house, what is required? For building a strong house, what is the requirement? Basic requirement to build a strong house. Cement. Your structure, part of structure. It should have a strong foundation, right? So that it can survive wind, storm, tsunami, anything. Okay. So now we have had a strong foundation. So now we are moving to the next speaker for the day, which is Miss Vani Krishnan. She'll be taking on recording of ECG responsibilities of nursing officer. Ma'am has been working in various departments. She has experience in post anesthesia care unit, orthopedics ward, obstetrics and gynecology ward, and she has also worked in poly trauma ICU, and she is currently in D6 ward, GA surgery. Okay, she's also an BLS ACLS instructor and an instructor in ISECN. Anybody know the full form? ISECN, Indian Society of Cardiac and Emergency Nurses. So she is having a great skill and great experience. So please listen to ma'am and explore ECG with her, the nursing responsibilities with her. Okay, thank you. Ma'am, please. Students, please remain silent. We'll start the class soon.
So, better now? So, good morning. I am Vani Krishnan. I'm a nursing officer working in All India Institute of Medical Science, that's AIIMS only. I have a total of 8 years of experience in AIIMS and also outside AIIMS also. I've done my BSc nursing from Kerala, and I'm an instructor in with the American Heart Association for BLS and ACLS, and also in Indian Society of Emergency and Cardiac Nurses. So, welcome, and I would really like to thank College of Nursing for organizing such a wonderful workshop and inviting me. Thank you, ma'am. So, Seema ma'am has explained beautifully about the basics of ECG. Now, all of you are well versed with the basics, but can anyone explain what is ECG? Can anyone just tell me what is an ECG? Yes, ma'am. Just say it out loudly, whatever you feel. Yes, very correct. It is the representation of heart's electrical activity in a graphical form. And to convert that electrical activity to something tangible so that we can interpret it, we can see it, what's going on inside our heart, to identify the abnormalities, to see the effectiveness of some medication, to see if certain managements like pacemakers have been implanted. So to see that effectiveness, we need a graphical or a tangible information so that we know the heart is functioning properly or its conductive system. So with the help of this graphical representation, we can identify any anomalies in the heart, that is the conduction system. So, to convert this, what do we need it? What do we need the most to do that? What's the basic thing we need to convert the electrical activity, the conduction system, which is happening in our body, to see, to visually see it? What do we need? Yeah, electrodes is needed, but what is that instrument called? Yeah, that's the graphical representation is electrocardiogram. But we need an ECG machine with the all electrodes or a monitor with the electrodes and all, so that we can, so that the machine interprets the electrical activity and converts it to the physical uh, graphical representation of it. So today, we all are doing nursing. So as a nurse, what is our responsibility for preparing a patient, and what all things we need to observe why to get an ECG? So that we will be seeing in this session. That is recording of ECG, responsibilities of a nursing officer. As I told earlier, you can see a picture of the ECG machine. Can you identify what all things are there in that ECG machine? There is a paper which prints the you can see a small screen on top of it, like here you can see a small screen. This is the way we see in an ECG machine, not in a monitor. This is about the ECG machine. So when we get a printed picture of the ECG paper, so when we attach all the electrodes to the patient, like ma'am said, what all types of electrodes are there? Limb electrodes and chest electrodes. So when we attach all the electrodes properly, then there will be a graphical representation of the electrical activity of the heart in this screen. So we have to, and then we have to print, then we have to press the print button, and then a print of that thing will come. Okay. So moving on, this is a machine, and other than that, we have also a monitor system. Like in ICUs, to monitor the ECG, we use monitors. So that in that we don't get a print. Some monitors have the facilities to print, like in defibrillators. Some defibrillators we will find a print also. But other than that, we'll have a just a visual representation, which will be continuously monitoring the patient's ECG.
So we can also see there, we won't be able to see the graphs, we'll only be able to see the waveform. So these are the two main types of machines which we use to read the ECG. So first, who all are eligible to do a ECG? Ma'am says that ECG technicians. So if you are in bedside and a patient is suddenly having chest pain and you have a machine available, so you'll wait for the technician for for that person to come and then do the ECG. Of course, you people also can do the ECG if you know how to place the electrodes properly. So if example, if there is no technician, no nurse, can a doctor do an ECG? Yes. Any medical professional who knows how to place the electrodes properly and if the machine is available can do an ECG. And as a nurse, it's our responsibility to analyze and interpret it correctly to help the patient and identify the causes and treat it immediately, because most of the cardiac emergencies can be treated and prevented if we identify the problem at the start before it becomes a flat line, right? So anyone who is trained in proper placement of the lead and the machine is available can do an ECG because it's an emergency procedure. Okay. So now let's move on to patient preparation. Seema ma'am has already dealt it with it, but still, let's discuss it. We don't need we don't need to buy hearted. Just imagine yourself in a hospital and a patient's ECG, bedside ECG is being done. What all things you will note? Like when we were doing COVID duty, that time technicians usually won't come. We had an ECG machine in the COVID ICU. So that time we used to do the ECG in the machine. So what things first should be done from the patient? Like first of all, we have to identity of the patient should be. We have to identify which patient we need to do ECG, and in that machine, you have seen before. I've shown the machine. There are a lot of letters and alphabets and all those things. We can set the patient's name, age, sex, everything. So the identity of the patient can be recorded, because if you're taking ECG for 2 3 patients, which ECG is for which patient we need to confirm it. So before starting the record button, we should uh, input the identity of the patient, that is the name here, UHID, bed number, age, sex, whatever the biomet data is there. We have to put that first, and then we have to do the procedure. First, ECG. Can anyone tell me where are the electrodes? You said there are 4 limb electrodes and 6 chest electrodes. So where are these being placed? Anyone from that side? Where are these electrodes placed? Yeah, limb electrodes on the limb, that is wrist and ankles. And what about the chest electrodes? Where are these placed? Yes, if a patient is wearing the patient kurta or pajama, we'll place it on the kurta pajama. Then where? On the bare chest. So it's a procedure which requires very if a patient is female patient and is conscious, we won't be exposing the bare chest like simply without giving a proper privacy or screen, right? So even if it's a male patient, we should ideally provide privacy to the patient because it exposes the bare chest, right? Without exposing the chest, we cannot do the ECG. And if there are no male nurses here, but if a male nurse is doing this procedure and for a female patient, there should be a presence of a female staff or a female medical professional, anyone. And we should first inform and take consent that the patient's privacy is being intruded, and we need to take care, like should explain to them so that the patient will otherwise sue you for uh, any sexual harassment, like why are you being we are just touching my bare chest, right? So it should be it's really important for
informing the patient and giving proper privacy to the patient. Now the position. Can anyone please from that side back, just, it's not an interview, so just simply say what comes to your mind. What positions we can do an ECG? One person from there. Anyone, please stand up. Can't hear you. Supine, very good. That's one of the positions, and it's the most common position. We should make the patient lying supine in a bed, in a comfortable bed, and can take the ECG. Can anyone tell me other uncommon positions in which we can do an ECG? Semi follows, but that's also common. That's not uncommon. Yes, obviously. We can, if a patient is having some abdominals, some position conditions in which with the patient cannot be, like spinal injury or some spine surgeries are being done, we cannot make the patient lie on supine. So that time we can modify it and by using giving the patient a lateral position. Other than that, for some certain condition, even the patient can lie supine. We'll give another position for ECG, taking ECG. From anyone from that side, can you guess which other position can be given? Yes, very good. That is prone position. If we need to take a posterior ECG, for that we need the patient to be lying in prone position, and if a patient cannot lie in prone position, we can give a lateral position and take the posterior ECG. Other than that, some positions is like sitting position. We can do an ECG if a patient is very uncomfortable lying down. We can take an ECG while sitting. The patient should be comfortable. And like in Holter monitoring and stress test, with the patient is usually ECG is taken while walking or in a treadmill or doing cycling. So that all positions are done. But ideally, it's supine or semi follows position. The most important thing for getting an ECG in supine and semi-follows is a supportive bed. The patient, because to take an ECG, the patient should lie in a way for around 5 to 10 minutes till the ECG is being recorded. So if the patient is very agitated, restless, the bed is not comfortable or not supporting enough, the patient might move. Because of the movement, the ECG might get altered. So the bed should be very supportive and should also be comfortable, and you should explain to the patient that it will take a few minutes. That is explanation to the patient. From this beginning of the procedure, we should explain to the conscious patient. Like most of the ECGs are being done for conscious patient, OPD basis ECGs are being done. So most of ECGs will patient will be coming walking in and for an ECG test. So that time you should explain to the patient that it's it's a painless procedure. So you don't need to worry about getting like pricked, or it won't. Some people think that it might give some current because all the wires are being placed. So some patient will be agitated, like पूछते हैं मुझसे कि current तो नहीं लगेगा हमें इसमें से. So you should explain to them that it's painless procedure. But you have to lie still and take normal breath, relax and calm for 5 to 10 minutes. Okay. So we have to explain all these things to the patient. And most important thing, which usually everyone forget to explain, is that uh, the placement of electrodes should be explained to them, that it will be placed over your chest, and the use of jelly. Like to use an ECG machine with those vacuum suction type devices. So for proper adhesion, we use jelly, and the jelly is cold and bit slimy, so it's uncomfortable to the patient. So let the patient know that a jelly will be used, and you don't need to be worried about that jelly. It won't harm you or do any kind of problem towards that. You have to explain everything to the patient. Skin preparation. So which type of patients do we need skin preparation for taking an ECG? Yes, male patient with lot of hair, because of the hair, the adhesion of that
electrodes won't be properly, and if the electrodes are not adhere to the skin properly, it might cause some interference, and it might get, sometimes it might get detached, or sometimes it might even give some bizarre ECG waveforms. Okay, so we have to if it's not being at least we should prepare the part on which we will place the electrode, not the whole chest, just over the area. Like if you're using an AED device, and we have to stick pads, so that we have to use a small area like a patch, we have to use that. And if it's using small electrodes, then we have to use, or you need to only put it over the area where there is less hair, or if it's not causing any problem. Skin preparation is very necessary. Or yes, ma'am. Uh, in uh, in that case, we can use um, like if the areas which are not burnt, like if the chest is burnt, we can do a posterior ECG. If limbs are burned, you can use, like if the wrist is burned, we cannot place the ECG over the wrist, we can use the arms. Or if the area which is not burned, we have to modify it according to the condition of the patient. Yeah, yeah, yeah. If that we have to, but while getting the ECG, we have to mention it. It's the right side view, and we have to interpret it reciprocally. That I will be covering it in just few slides. I'll tell you about the reciprocal view of how we to interpret the ECG like that. So we can, if the left side is burned, you can use the right side. If both whole chest is burned, you can use the posterior side. We'll get an idea, but we have to mention it that it's the posterior view, or it's the right sided view, or it's, and if the limbs are involved, we can use, like if both legs are burned, you can use it in the abdomen. Like you have to place it near the like in the abdomen, directly the leads. It can be detached actually. So you can directly stick the leads to the abdomen, because we need only, like if it's just called the foot lead, but actually it's from the view from the down. So we need to put it somewhere below the heart only. So it can be placed like in monitor ECGs electrodes, we place it in the abdomen, or somewhere below only, we don't use the legs. So like that we can place it. So what is the main important thing to explain while sorry, not explain, consider while electrode placement? If it's a fat or obese kind of male patient, and where will you place the chest electrodes? Or if it's like a female um, old lady, where will the chest electrodes will be placed? Over the breast tissue? We have to slightly lift the breast tissue, even if for obese male patients also we have to consider that, because we cannot, the conduction of the electrical activity won't be clear in that over the fat tissue. So we need to put it directly over the chest. So in case of obese male or even a female patient, we have to slightly lift the breast tissue and then place the electrode. Okay. See different types of positions given for taking ECG. We can see the ECG waveform if there are any interference, or if the waves are clear and legible. Like if any electrode placement is wrong, we can first see in the screen. And if the it's an inverted, all ECGs are being inverted, then you must confer that something is wrong with what electrode placement. You have placed the right to the left and left to the right. So by looking at that monitor, we have to first confirm there are no interference. Like if you're taking an ECG, you have placed all the electrodes correctly, but still you cannot properly identify that PQRST. There are some zigzag abnormalities coming. What will be that?
Will you confirm that the patient is in VFib? The patient is very conscious and talking to you. एम्पलीट्यूड बढ़ा के देख सकते हैं और क्या कर सक रिपीट कर सकते हैं। वो अभी हमने प्रिंट नहीं लिया, हमें वो मॉनिटर में ही दिख रहा है कि मतलब उसमें बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि बच्चे ने स्क्रिबल किया है, कोई पी नहीं दिख पा रहे, क्यूआरएसटी नहीं देख पा रहे, कुछ भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या आ रहा है। पता नहीं कुछ अजीब सा सब कुछ ऊपर नीचे करके आ रहा है। लीड्स तुमने चेक कर लिया, 4 बार चेक कर लिया, सब कुछ परफेक्ट है, या जेली-वेली सब है, सब चिपके हुए हैं, करेक्ट है, फिर भी ऐसा आ रहा है। मशीन में डिफ़ॉर्मिटी से पहले ये होता है कि अगर आपके बगल में कोई जैसे कि हम वार्ड साइड में तो पेशेंट के बेड पे क्या होता है, सिरिंज पंप लगे होते हैं और भी मॉनिटर्स अटैच्ड होते हैं। तो उन सब की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस आ सकता है। क्योंकि ये ईसीजी क्या रिकॉर्ड करता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो वो अगर किसी और बिजली का इलेक्ट्रिसिटी भी तो वो लेगा ही। तो उनको ऐसा तो हमें पहले क्या करना है? We should ensure that all these electrical equipments which is attached to the bed or nearby to the patient are properly grounded. ठीक है? प्रॉपर ग्राउंडेड वाला होना चाहिए। यानी कि उसमें जो या तो फिर तार से छुटवा दो ताकि वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ना आए, नहीं तो फिर वो जो न्यूट्रल प्लग होता है ना, वो वाले में अटैच होना चाहिए। तो वो इंटरफेरेंस रुक जाता है। ये स्पेशली तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब पेशेंट का हमें फ्लैट लाइन ईसीजी लेना होता है आफ्टर पेशेंट जब एक्सपायर हो जाता है। तो उसके बाद हमें एक फ्लैट लाइन ईसीजी कंफर्म करना होता है, द पेशेंट इज़ डेड। उस टाइम पे क्या होता है कि पेशेंट तो वैसे डेड है, बट फिर भी उसमें ना ये बहुत सारी ईसीजी वेव फॉर्म्स आते हैं और हम डिक्लेयर नहीं कर पाते। क्योंकि इतने सारे सिरिंज पंप, वेंटिलेटर सब कनेक्टेड होता है ना पेशेंट को। जब तक हम कंफर्म नहीं करेंगे वी कैन नॉट डिटैच एनी ऑफ द मॉनिटर्स। तो उस टाइम पे हमें ये मेक श्योर करना है कि सारे सिरिंज वगैरह सब इलेक्ट्रिक मतलब वो बैटरी पे तो ऑपरेट होता ही है। तो हमें बस वो मेन प्लग से हटाना होता है, तब वो प्रॉपर विदाउट इंटरफेरेंस हमें एक प्रॉपर ईसीजी मिल जाता है। तो हम रिकॉर्ड बटन तभी यानी कि वो जो प्रिंट होता है ना रिकॉर्ड बटन यानी कि प्रिंट जो पेपर निकलता है उसे बिफोर प्रेसिंग दैट वी शुड मेक श्योर द on the screen that all the waveforms are correct. And additional strip might be needed if you find some abnormalities. You can take not वो होता है ना एक छोटा सा पेपर होता है. If you need, you can take a long strip. If you find any abnormality and notify only if you can correlate with the symptom. Like आपने देखा नहीं इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस है, आपको लग रहा है वीफिब में और पेशेंट बात कर रहा है हमसे, सीधा जाके डॉक्टर को नोटिफ़ाई नहीं करना कि पेशेंट वीफिब में है, ठीक है? या फिर पेशेंट फ्लैट लाइन आ रहा है, आपने देखा नहीं कि वो इलेक्ट्रोड्स डिटैच हो रखे हैं, नोटिफ़ाई नहीं करना है, ठीक है? तो वी हैव टू कोरिलेट विद द पेशेंट्स क्लिनिकल सिम्पटम ऑल्सो कि पेशेंट को कुछ उसके हिसाब से आपको कोई अबनॉर्मैलिटीज़ दिख रहा है या नहीं, ओके? हाँ, हाँ, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तो उसमें क्या होता है पीक्यूआरएसटी सब है, पेशेंट कॉन्शियस नहीं है और आप कैरोटिड भी चेक करो उसमें कुछ है ही नहीं, तो उसका मतलब पेशेंट नॉर्मल है? नहीं, वो क्या होता है पल्सलेस इलेक्ट्रिविटी कुछ भी आ सकता है उसमें वेवफॉर्म। तो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वी हैव टू ऑलवेज कोरिलेट, अगर आपको कुछ भी अबनॉर्मल दिख रहा है, पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस है, फर्स्ट चेक पल्स, फिजिकली आपको पल्स चेक करना ज़रूरी होता है। ठीक है? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आफ्टर केयर। ईसीजी परफेक्टली रिकॉर्ड कर लिया है, सब कुछ हो गया, अब क्या? आफ्टर केयर में पहले इलेक्ट्रोड्स रिमूव करेंगे, हो जाएगा पेशेंट्स से पहले इलेक्ट्रोड्स जो प्लेस किए वो सब हटाएँगे हम पहले। वो हटाने के बाद क्या करेंगे? जेली रिमूव करेंगे क्योंकि वो चिपका होता है, कुछ स्टिकी होते हैं, कुछ वैसा होता है, तो वो पेशेंट को टिश्यू या टॉवल कुछ देंगे, कॉन्शियस पेशेंट है तो। जेली रिमूव करेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि हो गया है, नाउ कवर करने को, ठीक है? बिकॉज़ हमने एक्सपोज़ किया हुआ है ना पेशेंट को, तो हमें कवर भी तो करना है बाद में। स्क्रीन पहले नहीं हटाना है, पहले पेशेंट को कवर करना है, सब कुछ ठीक करना है, उसके बाद देन रिमूव द स्क्रीन। तो हाँ, ये सब तो हो गया बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैम ने बोला था बीच में, मैंने जब बोला कि ईसीजी में गलत वेवफॉर्म आ रहा है तो क्या करना चाहिए? तो मैम ने बोला था कि एम्पलीट्यूड बढ़ाना है।
वो कैसे बढ़ाते हैं? क्या बोलते हैं उसको? मैग्निफिकेशन तो नहीं बोलते, ये वाला सेंसिटिविटी या गेन बढ़ाने को बोलते हैं उसको। ठीक है? ईसीजी की जो बोले ना एम्पलीट्यूड वेव फॉर्म जो है हमें छोटे से दिख रहे हैं। अब हमको लग रहा है कि भई आपने पढ़ा था, अभी मैम ने पढ़ाया था कि क्यूआरएस जो होता है वो इतना लंबा होना चाहिए। मिनिमम इट शुड कवर 3 3 स्मॉल बॉक्सेस का वो होना चाहिए। तो मगर आप देख रहे हो कि अपनी प्रिंट के ईसीजी में वो बहुत छोटा-छोटा आ रहा है या फिर आपने देखा कि बहुत ही बड़ा आ रहा है। तो क्या होगा? आपको सबसे पहले क्या देखना है, चेक करना है ईसीजी मशीन में कि उसकी सेटिंग में कहीं आपने गेन 2.5 में डाल दिया है तो क्या आएगा? बहुत ही छोटा आएगा। ईसीजी दिख नहीं रहा, ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन जैसा ही लगेगा। तो वो फ्लैट लाइन नहीं है, तो आपको हमेशा गेन सेंसिटिविटी चेक करना है। उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ 2.5, 5, 10, 20, 40 तक होता है। फॉर सर्टेन कंडीशन कुछ इवैल्यूएट करने के लिए वी नीड टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द गेन। बट आइडियली सेटिंग में कितना होना चाहिए? नॉर्मली 10 mm पर मिलीवोल्ट होना चाहिए गेन, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है, वेव का जो साइज़ है, वो 10 होना चाहिए। हमेशा ईसीजी पेपर जब आपके हाथ में उसके ऊपर लिखा होता है, तो आपको वो चेक करना है कि 10 mm पर मिलीवोल्ट गेन है। और दूसरा पेपर स्पीड। आप देख रहे हो ईसीजी में आप आरआर कैलकुलेट करते हो ना? हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए आरआर देख रहे हो। आपने जो स्पीड रखा है 50, 50 में आप वो स्पीड में जा रहा है ईसीजी, बहुत सारे पर सेकंड, वो बहुत ज़्यादा मतलब आप कह रहे हो साइनस अटैक किया, बट आपने ईसीजी पेपर में तो ध्यान ही नहीं दिया, तो 50 mm पर सेकंड में है। तो जो आइडियल सेटिंग है वो है 25 mm पर सेकंड, जो स्पीड होना चाहिए पेपर स्पीड, यानी कि जो ईसीजी वेव फॉर्म पर सेकंड में जो पेपर मूव करता है, जिस स्पीड में वो पेपर मूव कर रहा है, वो है 25 mm पर सेकंड। और जो साइज होता है वो है 10 mm पर मिलीवोल्ट। तो ये सेटिंग आइडियली चेक करना है। जब भी ईसीजी है सबसे पहले ये चेक करो। पता चला वो 12.5 पे और आप कह रहे हो ब्रैडिकार्डिया हो रहा है पेशेंट को, नहीं करना। तो सबसे पहले ये ऑटोमैटिकली पहले ये देखो 10 और 25 है, उसके बाद फिर ईसीजी रीड करना शुरू करना है। और मैम ने जैसे एक्सप्लेन किया था वैसे मैं जस्ट रिवाइज़ ही कर रही हूँ, क्योंकि ये ईसीजी मशीन के साथ ही हम इन्वॉल्व होता है कि कहाँ ईसीजी प्लेसमेंट इलेक्ट्रोड्स प्लेस करना है। जो 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कहाँ प्लेस करना है? कोई बताएगा? कोई एक जना बता दो वहाँ से। राइट और लेफ्ट रिस्ट, एंकल, राइट एंड लेफ्ट एंकल। तो उसका कलर कोड भी मैम ने बताया था, राइट? 2 लिम्ब, 2 हैंड में है और 2 रिस्ट में, 2 एंकल में है। 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड्स हैं। इसके अलावा 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड्स हैं। चेस्ट इलेक्ट्रोड V1 कहाँ पे प्लेस करना है? वन एक 1% सबको सुनाई देना चाहिए ना। 1% फ्रॉम द बैक। V1, यस मैम। राइट साइड यहाँ पे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, राइट ऑफ स्टर्नम। राइट ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम इज वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि हमें राइट में यहाँ कहीं दूर भी रख सकते हैं। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, राइट ऑफ स्टर्नम, ऐसे बाय हार्ट ही करना है, ठीक है? तो और V2 कहाँ करना है? लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट ऑफ स्टर्नम। ओके, ये दोनों स्पेसिफिक हो गए। चलो V4 कहाँ प्लेस करना है? एक जना वहां से। मिड क्लेविकुलर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, राइट में लेफ्ट में? लेफ्ट में, ठीक है। और जो V3 है, V2 और V4 के बीच में आ जाएगा। और V5 कहाँ पे है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड एक्सिलरी। और V6 मिड एक्सिलरी नहीं, फिफ्थ, हाँ, V5 is anterior axillary, fifth intercostal space, V6 is mid axillary, fifth intercostal, यानी कि 4, 5, 6 तीनों fifth intercostal space लेफ्ट साइड में ही। और एक है मिड क्लेविकुलर, एक है एंटीरियर एक्सिलरी, एक है मिड एक्सिलरी।
ये हम एंटीरियर ईसीजी ले रहे हैं। आपने जैसे बोला था कि सर्टेन कंडीशन में हमें कैसे-कैसे ऑल्टर्ड पोज़ीशंस में लेना पड़ता है। तो ये हमें जो नॉर्मल ईसीजी अभी हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है कि हम आइडियली ये वाली सेटिंग में जो ईसीजी वेवफ़ॉर्म्स आ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये जो है वो कैसे व्यू देता है, मैम ने समझाया था वैसे, ये जो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट से हमें कितने सारे वो मिलेंगे, लीड्स मिलेंगे, कितना? 12 लीड्स मिलेंगे। ये 12 लीड्स क्या है? 12 व्यूज़ है। 12 व्यूज़ यानी कि 12 कैमरा रखे हैं। हमें हर एंगल से हार्ट को व्यू कर रहे हैं हम। लीड्स को हमें क्या इमेजिन करना है? कैमरा है, ठीक है? और जो फ़ोटोज़ आ रहे हैं ना हर एंगल से, अगर आप एक जना यहाँ पर खड़ा है, उसको हर 12 एंगल से हम उसकी फ़ोटो ले रहे हैं, ठीक है? बट ये जो लिम्ब इलेक्ट्रोड्स है वो अभी एक शॉर्ट वीडियो में बताया था। कौन से प्लेन में आ रहा है? वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन में हम हार्ट को व्यू कर रहे हैं सामने से, और ये जो चेस्ट इलेक्ट्रोड्स है वो हॉरिज़ॉन्टल प्लेन में हम व्यू कर रहे हैं, ठीक है? तो राइट साइड ईसीजी कब करते हैं? यस, राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्ट में या राइट साइड हार्ट फेलियर सस्पेक्ट करेंगे। मगर सस्पेक्ट कैसे करेंगे हम? पता कैसे चलेगा राइट साइड ईसीजी लेना है? नॉर्मल ईसीजी लेंगे तो वहाँ पे क्या दिखेगा हमें? ये नॉर्मल ईसीजी इलेक्ट्रोड्स लगा दिया, इसमें हम देख रहे हैं एक ईसीजी वेव फॉर्म आया, तो उसमें हमें क्या देख के पता चलेगा कि यार ये राइट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ, साइन एंड सिम्पटम से ऊपर जो ईसीजी देख के हमें ये पता चलेगा, अ, जो ये क्या कहते हैं, V1 और V2 हार्ट का कौन-सा पार्ट का व्यू देता है? हार्ट का कौन से मतलब कहाँ का व्यू देगा? एंटीरियर एंड स्पेसिफिकली सेप्टल व्यू। वेरी स्पेसिफिक एंटीरियर व्यू तो दे ही रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो एंटीरियर व्यू दे रहा है, वो भी सेप्टल, क्योंकि दिख रहा है आपको, हम स्टर्नम के राइट और लेफ्ट में लगा रखा है, तो ये दोनों डायरेक्टली हार्ट के सेप्टल व्यू देगा। और ये जो V3, V4, V5, V6, V3, V4 कहाँ का देगा? इंफीरियर व्यू देगा, वो भी इंफीरियर। हार्ट के इंफीरियर में क्या है? क्या चीज़ रखा हुआ है? मतलब आप एनाटॉमिकली आपको पता होगा ना, एनाटॉमी तो पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। एपेक्स तो V5, V6 देगा ना, लैटरल साइड में आ गया ना एपेक्स तो। इंफीरियरली आपको हार्ट का क्या चेंबर दिख रहा है? इंफीरियर नहीं, एंटीरियर में ही कौन-सा व्यू देगा? यस, कौन-सा वेंट्रिकल दिखेगा? राइट वेंट्रिकल। तो हम अगर नॉर्मल ईसीजी ले रहे हैं और V4, V5 में कुछ अबनॉर्मैलिटीज़ दिखेंगे, यानी कि अगर आपको, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में हमने प्लेस किया है, ठीक है? एनाटॉमिकली ऑपोज़िट है ना, राइट? र तो अगर इसमें अगर डिप्रेशन दिख रहा है, तो उसके हम राइट साइड ईसीजी, यानी कि अगर हम लीड प्लेसमेंट इस साइड में करेंगे तो वो एलिवेशन दिखेगा। कि मिरर इमेज दिख रहा है। लेफ्ट साइड से हम व्यू कर रहे हैं तो हमें उसका मिरर इमेज दिख रहा है। समझ आया? कन्फ्यूज़ हो गए। अ, दैट स्लाइड अगर तो आपको अगर एंटीरियर में कुछ अबनॉर्मैलिटीज़ दिखेंगे तो हम उसका मिरर इमेज, यानी कि पोस्टीरियर वॉल एमआई में हमें अगर एंटीरियर लीड्स, यानी कि V1
V2, V3, V4 एंटीरियर लीड्स है। उसमें हमें अगर कुछ अबनॉर्मैलिटीज़ दिख रहे हैं, एलिवेशन दिख रहे हैं यानी कि वो एंटीरियर वॉल में है। मगर अगर डिप्रेशन दिख रहा है यानी कि पोस्टीरियर में है जिसका इन्वर्टेड हमें दिख रहा है, उल्टा इमेज हमें दिख रहा है। तो हम पोस्टीरियर ईसीजी लेंगे। पोस्टीरियर ईसीजी लेने के लिए जो V1, V2 और V3 है वो सेम पोज़ीशन में रहेंगे। बट V4, V5, V6 ये जो 3 इलेक्ट्रोड्स हैं, इसको हम पोस्टीरियरली V7, V8, V9 में प्लेस करेंगे। यानी कि पेशेंट को लैटरल या प्रोन पोज़ीशन में लिटा के V7 इज़ पोस्टीरियर एक्सिलरी, 5th intercostal space, 8 is tip of left scapula, and V9 is left paraspinal region, 5th intercostal space. ये पोजीशन यानी कि V4 जो है V7 बन गया, V5 जो है V8 बन गया और V6 जो है V9 बन गया। और एक और ईसीजी हम प्रिंट करेंगे तो उसमें हमें प्रॉपर एलिवेशन दिखेगा, राइट। और वैसे ही सेम अगर आरवी इन्फार्क्ट दिख रहा है हमें एंटीरियर ईसीजी में, तो हम राइट साइड ईसीजी लेंगे टू कंफर्म इट, क्योंकि उसमें हमें डिप्रेशन दिख रहा है तो उसका लेफ्ट साइड का ऑपोजिट क्या है, राइट। राइट में हम राइट साइड ईसीजी लेंगे ताकि वो एलिवेशन देख के हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ राइट साइड हार्ट फेलियर हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या है, V1, V2 सेम पोजीशन में रहेंगे, V3, V4, V5, V6 सेम एनाटॉमिकल पोजीशन बट राइट साइड में, राइट साइड में, ठीक है। लेफ्ट साइड में रखा था जो इलेक्ट्रोड्स, उसको सेम उल्टा राइट साइड में रखेंगे। और जैसे आपने बोला था कुछ कंडीशन में अगर हमें ऑलरेडी पेशेंट के जैसे बर्न हो रखा है राइट साइड में किया है तो हमें उल्टा इमेज दिख रहेगा, मतलब हमें समझ जाना चाहिए इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है। हमें व्यू कर, जैसे कि अगर ऑलरेडी पेशेंट को कुछ ट्रॉमा की वजह से एंटीरियर नहीं ले पा रहे और पोस्टीरियर ईसीजी ले रहे हैं तो वो इमेजेस उल्टा आ रहे हैं, हमें वी हैव टू अज्यूम इट, ओके। तो एनी डाउट्स? क्लियर है ना? तो ईसीजी मशीन, it's very simple procedure and it's usually done and it's very common, like तुम कोई भी वार्ड में हो, कोई भी कहीं पे भी पोस्टिंग हो, किसी चीज़ देते ही हैं सब पेशेंट का। तो अभी आपको लीड प्लेसमेंट याद रखना है, क्योंकि अगर लीड प्लेसमेंट पता है और अगर इमरजेंसी सिचुएशन में कोई भी बेड साइड में स्टूडेंट भी ईसीजी कर सकता है, ठीक है। तो बीइंग अ स्टूडेंट आल्सो यू कैन डू ईसीजी इफ यू नो हाउ टू प्रॉपर्ली प्लेस द इलेक्ट्रोड्स, ओके। और वार्ड साइड बेड साइड जाओगे तो ट्राई टू, अगर कहीं मिल रहा है आपको मॉनिटरिंग में पेशेंट को, तो यू शुड ट्राई टू डू इट 1 और 2 टाइम्स ताकि आपको याद रहे कि कहाँ कौन-सा इलेक्ट्रोड प्लेस करना है। क्योंकि हम फिज़िकली यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं। फिज़िकली पेशेंट को वो एनाटॉमिकली वो पोज़ीशन कहाँ आ रहा है, वो व्यू करके इलेक्ट्रोड प्लेस करने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ओके? थैंक यू सो मच। Thank you so much, Vani ma'am, for such a wonderful session. She was taking so calmly and addressing you as ma'am. That was so highly appreciable, ma'am. It is the first time some teacher was addressing student ma'am. It was like, yeah, okay. So I hope you understood. With great power comes no Spider-Man fans out here. With great power comes great responsibility. So as a nurse, you have a great responsibility to have a quick action to manage the patient. Okay. So now we are moving to the next speaker. She is Miss Divya George. Divya ma'am will be taking the class on the monitoring devices. So it will be these are our weapons, right? So we have understood the basics. Now we are moving to the monitoring devices, including ECG machines, cardiac monitor, AED, defibrillator, Holter monitor, TMT, and related devices or accessories, etc. She is currently working in CT3 ward. She has an experience of 7 years, and she has also graduated, postgraduate from our AIIMS Delhi only. She is our senior, very, very senior, not so senior. So I cordially invite ma'am to take the class.
Good morning, all. Are you tired? Yes, ma'am. All of you, please stand up. Stretch yourselves. Those who are sleeping. Okay, sit down. Okay, now we'll not be taking any lecture. We'll be just discussing. We'll be discussing about ECG monitoring devices. You all have been to wards. All have gone to cardiology wards also, na? So So you have seen patients on monitors, right? What monitors? Cardiac monitor. What all are being recorded or what all things are being monitored in cardiac monitor? One. Ah, well, heart rate, VO2. Okay. What all patients are being on monitored? Are being monitored? What conditions? Like all patients won't be on cardiac monitor. In what situations we require a cardiac monitor? Critically ill patients, after surgery patients, in cardiology wards, all patients will be on monitor. Pacemaker patients, yes. Patient having MI, patient had MI, post surgery patient, yes. So, what is the significance of cardiac monitoring? Why we or cardiac monitoring, or what is the significance of ECG monitoring? In the past session, we have dealt with what is ECG and what is the significance of ECG monitoring, right? So, with ECG, what all conditions can be monitored or what all conditions can be diagnosed? Arrhythmias, yes. And that all will come in arrhythmias. Arrhythmias can be bradyarrhythmia or tachyarrhythmias. Electrolyte imbalances, right? Hyperkalemia, hypokalemia, yes. Blood pressure is other thing. That is not any ECG. Okay. So with single ECG monitoring, we can diagnose many conditions like or if the patient is deteriorating or if the patient is having pacemaker or any ICD. What is ICD? Implantable cardioverter defibrillator. If there is any problem in these machines, these can be identified during a cardiac monitoring. Okay, so it's a diagnostic tool for various heart conditions like myocardial infarction and all. The patient is having angina. You have heard STEMI and NSTEMI.
So all of you, please go for tape.
अजय बेटा आपका सेशन है स्टार्टेड नो मैम मैंने इसमें भैया जी हाँ आप एक मिनट okay. So we were discussing about the significance of ECG monitoring. So we know that with ECG we can it will help in diagnosing many conditions like MI, and also it helps in it will tell about the physical orientation of the heart. Physical orientation of the heart matlab it is the cardiac axis. Cardiac axis means it is the direction of the electrical conduction of the heart. Okay, and it will help in it will show us the rate and rhythm of the heart. So, what are the devices which help in cardiac monitoring or ECG monitoring? What all devices you have seen? Cardiac monitor, Holter monitor, yes. ECG machine, yes. Defibrillator, yes.
So we will just briefly discuss each one of these. These are the ECG monitoring devices: ECG machine, cardiac monitor, Holter monitor, defibrillator, AED. What is AED? Automated external defibrillator. And TMT. TMT is not, it's not actually treadmill test. It's not a monitoring device, but it is a diagnostic test where we trace the ECG also. Okay. So in the last session, you have learned about ECG machine and how it is being traced, and all the details was dealt. So I'll not go into details. The basic principle of ECG is that stimulation of muscle alters the electrical potential of the muscle fibers. You have learned about cardiac action potential. Yes. So you know how when during each phase of cardiac potential, how ECG is being traced, right? P wave, QRS complex, and T wave, right? So cardiac cell have automaticity. What is automaticity? Its own, it has the capacity to generate its own impulses, and it will be transferred to other cell through gap junctions. Thus, from one cell to other cardiac cell, this action potential will transfer, and thus is the cardiac atria contracts, then ventricle contracts. Okay. You know the 12 lead ECG system. How many electrodes are being placed? 10 electrodes. 3 standard limb leads, 3 augmented leads, and 6 precordial leads. Right? This will give 12 lead ECG. What is the how these 10 electrodes can give 12 lead ECG? Leads means this is the different views, right? This all you have seen, right? So while performing an ECG, have anybody of seen? Have you seen performing an ECG? What is the procedure? If the patient is fully hairy, will you get a good ECG? No. Why? There is a problem in the yes. You have seen that electrodes have jelly, which helps in yes. Okay. So proper adhesion is required for proper ECG. Okay. In the right hand, which color lead is being placed? Right hand, red. You have seen four leads being placed on the four limbs. Right hand mein it's red. So okay, there may be differences. Okay. 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 In the left hand, what is being practiced in our setup is red in your right hand, yellow in left, green where? Left side, lower limb, and black in? Yes. Next is cardiac monitor. What is cardiac monitor? ये पढ़ना नहीं है. It's a device which help in recording your electrical activities. Okay. What all parameters are being recorded or displayed in a cardiac monitor? ECG, heart rate, pulse rate, SpO2. Have you been to CT5 ward, CTVS ward? Yes. You are in there. You might have seen arterial waveforms also. Arterial waveforms and central venous pressure waveforms also. Okay. In post-surgery patients, these are also being monitored. Okay. I'll show you. These are the accessories which we use in a cardiac monitor. What is this? These are the ECG leads. This is the ECG electrodes. This is the hose for connecting NBP cuff. This is the SpO2 probe. Okay. The first tracing is, what is this? This is the ECG tracing. And this is the heart rate which is being shown. This is the SpO2 trace. This is the SpO2 saturation. 97. Okay, what is this? 15.
Respiratory. What is this? BP. That is NIBP. Okay. If when you see in CT5 or post cardiac surgery patients, you will see red color tracing. That is arterial waveform. You might have seen patient with arterial line and is connected to a transducer, and you can see arterial waveforms. Likewise, you can see central venous pressure monitoring also. Okay. What is a Holter monitor? How many of you have seen Holter monitor? Holter monitor, yes. Patient attached to Holter monitor. For how long it will be, ECG will be recorded? 24 hours, yes. How is it being placed? How many leads are there? 6 leads. Yeah, it is also called ambulatory ECG. Okay. Like what is the need of a Holter monitor? Sometimes you might have a patient come with a episode of syncope, or patient will say dizziness, and with ECG comes out to be normal. You cannot diagnose with single ECG. Sometimes also patient may have symptoms very rarely, like once in a day or once in 2-3 days. Okay. So in such cases, we'll go for Holter monitoring. Holter monitor, it will record your ECG tracing for 24 hours. Okay. And this patient has to wear this this Holter monitor for complete time, 24 hours, and the patient will be provided with a diary. If the patient experiences any symptoms like sweating, dizziness, fainting, or any such episodes, patient has to note it down on the diary, and patient and this same timing that can be checked with the Holter also. This Holter has, this is a picture of a Holter. In this we have a chip which record all the ECG recordings. Okay, then we can check with the tracings and see for what is any tachyarrhythmia, patient had any tachyarrhythmias or any ventricular fibrillation, or patient is in heart block, etc. Okay. This is placing an ECG electrodes V1, V2, and V1 to V. 4 leads will be placed on the right arm, left iliac fossa and right iliac fossa, and 6 like chest leads will be placed. Okay. And here also we have to place it so properly that it will not stick out. So we will place a micropore, or we will be adhesing it very close to the skin. Okay. Otherwise there will be artifacts. What is artifacts? What is artifacts? Might have seen in ECG, like some may interpret it like fibrillation. It's artifacts, like when it is not properly attached, and if the ECG electrode is not properly fixed to the skin, it will not give a proper ECG. Okay. Here the leads connect to the electrodes that are placed on the skin of the chest with glue-like gel. You might have seen like gel on the ECG electrode. Have you seen? I will show you during the skill test. This metal electrodes conduct heart's activity through wires and into the Holter monitor where it is being recorded. Have anybody of you seen this Holter monitor report? It's a big report. It's like 10-12 pages will be there. Whole 24-hour ECG recordings will be there, and it will show like heart rate histogram, any bradycardia or QTC, any abnormalities, and all these will be given in separate portion. Okay. Where are we using Holter monitor? Here, this we are using when the patient is having unexplained syncope, near syncope, or dizziness, patient having recurrent palpitation, or patient having ICD or pacemaker, and again patient is having the episodes of syncope and all. To evaluate such condition, we are putting the patient on Holter monitoring. Okay. Next is defibrillator. What is a defibrillator? You have seen defibrillator. What is that? What is it used for?
to give shock. When are we giving shock? Which condition? Ventricular fibrillation. During a cardiac arrest, we use defibrillator. This defibrillator also we can use it as a monitor also. It has option for AED and monitor options also. You might have seen patches, AED patches also. Either AED patches can be attached or ECG electrodes can be placed, and with the leads it will give ECG tracing, or else these paddles. You see, like shock paddles, you know, when we place these paddles on our chest, it will give ECG tracing. Okay. This we cannot during a cardiac arrest. In case of automated external defibrillator, that machine itself will analyze whether it is a ventricular fibrillation or ventricular tachycardia, or the patient requires a shock or not. But in case of manual defibrillator, the physician should recognize the rhythm. He should identify whether it is a shockable rhythm or not. Okay. This is an AED. The manual external defibrillator is what you see in wards. This manual external defibrillator requires a physician or some special person to read the ECG and to say whether it is shockable or not. Automated external defibrillator, the machine itself will tell whether it is shockable or not. Implantable cardioverter defibrillator, what is that? It is implanted. Yes, you might have seen pacemaker implanted in the patient. Likewise, the ICD is also a similar device, small device. It will be implanted here in a subcutaneous pocket, and these leads are introduced into the atrium of the heart. Atrium and ventricle. Okay, what does this ICD does? If the patient is continuously having any life-threatening arrhythmias like ventricular tachycardia, patient has episodic. We cannot keep the patient all the time on hospital and give shock. Such patients require implantable ICDs, which will in the machine itself will give shock. AED, like we have discussed, where are these AEDs placed? Have anybody of seen AED somewhere? External. This is external. Automated external in airports, public places, malls. These AEDs are placed. So this is made in such a way that layman can also use this. Okay. This will give instructions like place the paddles. Then it will recognize the rhythm. Yes, it is shockable rhythm. When you give shock, you should move away, right? Otherwise, you will also get shock. Okay, this will continuously give instructions, and you just need to follow that. Okay, that is automated external defibrillator. This also will monitor the ECG for a while only. This cannot be used as a monitor for a long time. Okay. When the patient experienced a symptom, or you have seen if some patient collapse in front of you, for that time you can use this as a monitor also. That's all. Next is treadmill test. What is a treadmill test? Have anybody of seen somebody performing a treadmill test? No. Okay, this is a test which we use to when for example, a patient had angina or chest pain, or the patient is having coronary artery disease. To confirm that, we will do treadmill test. If the patient had angina, chest pain, patient will first go for an ECG. Okay, there is changes in the ECG. In MI, what is the change in ECG? Okay, so with the single ECG, we cannot say how much bigger is the disease, or whether the patient requires any percutaneous intervention, or the patient can be medically managed. In such condition, we will go for further test. Okay, in treadmill test, like
this angina will happen mainly on while we are exertion, like while walking or climbing stairs, etc. Okay. So in order to identify such condition, the patient will be asked to walk on a treadmill. If the patient cannot walk on a treadmill, pedaling bicycle can be used. If the patient cannot do both this, then we will give infusions also. Like what happens is that what is happening when you are walking or when you are walking on when you are bicycling, you are doing a work. Okay, when we are doing work, our myocardial perfusion also increases, workload also increases. When workload increases, the myocardium has to pump more. So if the patient is having any plaques or coronary artery disease, the patient will experience symptoms, right? So while treadmill test, the patient is attached to cardiac monitoring, continuous cardiac monitoring, and the patient will be asked to work on a treadmill. Slowly, that stress will be increased. How the speed will be increased, and also the slope will be increased. So stress is increasing. So if the patient is having coronary artery disease, there will be ECG changes. Okay, that is what is happening. Treadmill test or stress test. So during whole time, ECG will be traced and also the blood pressure will be traced. Here you can see patient is made to walk on a treadmill or pedal a stationary bicycle. The level of stress is progressively increased by raising the difficulty and speed. It helps to diagnose CAD or to assess the patient prognosis after a myocardial infarction. Some other devices which help to monitor ECG, record ECG is event monitors, mobile cardiac telemetry, and insertable cardiac monitor. These are not used in our setup. These event monitors, these are used for 30 days. The patient has to wear this for 30 days. And if the patient, when the patient experiences any symptom, he has to press the button so that it will be recorded. Okay, it's not being automatically recorded. That is event monitor. Next is mobile cardiac telemetry. What is telemetry? No, telemetry. If the patient is on telemetry, the healthcare professional in the hospital setup can view the ECG or what is being recorded, even if the patient is at home. Like even from the remote areas, ECG can be monitored in the hospital. That is telemetry. Okay, there is mobile cardiac telemetry. It is a wearable monitor that automatically detects, records, and transmits abnormal heart rhythms up to 30 days. Next is insertable cardiac monitor. This is like ICD, which is implanted inside the body. It can be up to 3 years. These three monitors I have not seen in our wards. What is present in our is other, like we have cardiac monitor, ECG monitor, Holter, defibrillator, treadmill test. All these are present in our setup. And there is, if you now have not seen treadmill test, there is a Holter, like Holter lab and treadmill is happening in same room in ground floor cardiac OPD. You can just go and see how it is being done. Okay. So these are the devices which we use for cardiac ECG monitoring. Any doubts? So when the patients are on ECG monitoring, what is our responsibility? Already the nurse's responsibility is already dealt. What is our responsibility? Tell me. Identification of the patient. Yes. Privacy of the patient. Yes. Explain the procedure. The patient has to be put on Holter monitor and all. Test should be prepared. If the patient's male and
Patient is too hairy, part preparation is required. Okay, and also if the patient has to go for Holter monitoring, and you should explain. The patient should not go for swimming and all with that machine. Okay, it should not get wet. All these things you should explain to the patient. Anything else? Patient's privacy, chest preparation, proper placement of the electrodes and the electrodes placement and adhesiveness. You should check. Also, you might have seen some patients being allergic to ECG electrodes. Some are very allergic to these electrodes. So that should be taken care of. And also check for artifacts. If it is not properly placed, there will be artifacts. Okay. Yes, yes. You can use, but these electrical, this ICD and all, pacemaker, ICD and all, those patients should not go to the places where there is high magnetic field. Like you have seen in metro and all handheld device for checking. These can impair the ICD function or pacemaker function. Okay, there they should ask for hand checking. Okay, and all high electrical voltage areas, these all can hamper. And also nowadays there is MRI compatible devices are available. Otherwise the patient should also, if the patient has to undergo MRI and all, they should say, I have an ICD or pacemaker implanted. That can interfere with that. Any other? हाँ, एक दिन के लिए ना, 24 hours. Otherwise that electrodes will go away, no? And that they are carrying that Holter machine along with them in a bag. Anything else? I have said. Sometimes while on patient discharge, this happens. Uh, the patients, especially in our cardiology, if the patient goes after pacemaker insertion, PPA, they will be asked to come for dressing every alternate day. Okay. When the patient is being discharged, we have to remove the stickers also. Patient don't know what is that. They will, after 1 week also they will come with that same stickers. That happens. They don't know. They don't know what is it. They may think it's something very. So they that also should be taken. That happens. Okay. Thank you so much. Ah. Thank you so much, Divya ma'am, for such a wonderful session. Now, there is an announcement. Those who didn't get snacks during the previous section can go and collect your snacks right now. Only those who didn't get the snacks. Just for 5 minutes. We
Only 25 were there earlier. Now everybody is rising and going, please. जिसको नहीं मिला है सिर्फ वही लोग जाना है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. You're audible. Sir, actually, we are having a 5 minutes break. Sir, we are having a 5 minutes break for now. So can you please wait for 5 minutes? We'll just join afterwards. Okay, okay, sir. Thank you. So the next speaker will be Dr. YK Subhash Singh. He had completed his DM cardiology from AIIMS New Delhi on October 2021. He is now a faculty in Department of Cardiology, IQ City Medical College Hospital, Durgapur, West Bengal. So I cordially invite to, sir for the session. To everyone. Hello. Yes, sir, you're audible. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for to the AIIMS team and also to the nursing college team for inviting me. And it is a great pleasure for me to take this class for the nursing students. I shall begin my presentation shortly. Is my screen visible to everyone? Hello. Not yet, sir. Is Not my yet. screen visible to the audience? Okay, thank you. Yes, sir. Thank you. So the topic given to me is ECG changes in heart blocks and its management. So we will try to overcome the blocks by understanding the ECGs, and hopefully by the end of this session we will be able to identify some of the important heart blocks. So let's begin with the class. Kindly give me a minute. The computer is getting hanged now because. Just give me a minute, please. Slide share more. Slide share मोड पे डाल सर वही करेंगे बोलने से बोलो he told अच्छा is getting hanged 2 मिनट ठीक है ये देखे आ रहे अंदर लाना मना तो हाइड करके ला बॉडी So, dear students, please be attentive because you are going to have quiz session in afternoon and you will have post test. And there is one important announcement from ma'am principal side that those who will be the winner, first, second, third in the post test would get prize books मिलेंगी आपको from ma'am side.
Please be attentive. Okay, सोना नहीं है. It's a good thing, na? It's a good opportunity. Okay. And ma'am has said that she would join in lunch with us. And Excuse me, sir. Yes, this thing. Gopal, Yes, sir. ma'am. Sir, can you please make it full screen, visible in full screen, slideshow mode? Yes, madam. Yes, madam. Just a minute. Is the screen visible now? Hello. Sir, screen is visible. Hello. Please make it in complete slideshow mode. Okay. Sir, can you see the slide which says layout of the presentation? No, sir. It's in the still in the first slide. ECG changes in heart blocks. Actually, my computer is showing that it's already on slide number 2. Sir, sir, please continue with the session, sir. Is it visible now? Sir, we are still on the first slide. First Visible. slide. It is No, visible. okay. It's still on the first slide. So this is the layout of the presentation. So we'll just try to understand what is heart blocks. Then we'll try to diagnose heart blocks based on the ECG, and then we will go through the management of heart blocks, and finally we will conclude this session. So understanding heart blocks, as everyone knows that the heart is like a pump. It pumps blood to the different parts of the body. The right side of the heart, as you can see, which is depicted in the blue, it collects the deoxygenated blood from the body, and it is transferred to the lungs by the right ventricle. Excuse me, sir. From there, Excuse me, sir. We are still on the Yes. first slide, sir. The slides are still not on- moving. It's not changing. Sorry. I'm sorry. Sir, if you can share the PPT with us, we can present the screen from here. Madam, I have already shared the presentation. If Okay. you can play from your side, it would be good. Okay, okay. We will show. Hello, sir. In the meantime, please can you stop? You can press F5, then it Yes. Move कर रहा, move कर रहा. Now it Yeah, is Now moving. it is moving. Now it's moving, but I think in the presentations, is it now visible? Hello. Yes. So this is the layout of the presentation. So let's go to the next slide. Is the next slide visible to you now? Understanding heart blocks. No, we are still on the layout of presentation. It's still on layout. Maybe there is a hang from this side because of maybe the internet is slow. If you could share from your side, then it would be good, I think. Yes, sir, we are trying. In the meantime, can you please stop presenting and try to present again? Yes, madam. So I have stopped my presentation now. एक मिनट कृष्ण ये है क्या है ना ये डाउनलोड
अरे मेल में हमारे से Sir, we have presented from our end. You can start the class. You can see next and we'll move. Sir, we have presented the slides from our end. You can start the class. Okay, okay. We are moving. If we say next, then we'll move. Sir, excuse me, sir. Sir, please let me know when you have to change the slide. कोई बात नहीं, he will be joined. तेरी फोन करो इसको तो हटके हाँ अरे मिल नहीं रहा ना मुझसे काम तो बड़ा मुश्किल होगा दिक्कत हो रही है यार ये सब Hello, Dr. Subhash. Please rejoin. Please rejoin. We have shared your PPT. Please rejoin. Okay, Karen. Any one of you want to share her experience, like when you were dealing with ECG electrodes or leads? We can use this time. Sir is rejoining. इसमें कुछ बताना है? No. मैम नॉर्मली जब हम ईसीजी करवाते हैं ना तो कई बार क्या होता है कि मतलब एबनॉर्मेलिटी उसमें ईसीजी में मेंशन आ रहा है लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि मतलब एवरीथिंग इज नॉर्मल तो मतलब उसमें लिखा हुआ है कि एबनॉर्मल साइनस रिदम ईसीजी में जो होके आया है पर वो कई बार मतलब डॉक्टर कहते हैं कि मतलब एवरीथिंग इज ओके तो मतलब Experts can explain. ऐसे तो मतलब अबनॉर्मल है तो नहीं बोलता कोई डॉक्टर जब उसको पता नहीं होगा यूजुअली अबनॉर्मलिटीज होती है तो Most of the doctors सबकी स्पेशलिटी नहीं होती हर किसी को कोई एविडेंटली वो है तो फिर इन टच में ये कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस आपसे बात करना पूरा वेस्ट बंगाल से समझ गया प्लीज कीप बट वो एग्जैक्टली क्या है पिन पॉइंट करके बता नहीं पा रहा हूँ नहीं एक्चुअली कैन आई एक्चुअली व्हाट हैपेंड तो आप ऑलरेडी
पेशेंट को ट्रीटमेंट चल रहा है, ये तो कोई जादू मंत्र नहीं हो रहा है ना, जैसे कि ट्रीटमेंट वहां से स्टार्ट हुआ और छू मंत्र होके वैनिश हो गया, ऐसे नहीं है. इट इज अंडरस्टूड दैट ऑलरेडी द ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड एंड इट टेक्स सम टाइम, है ना. तो इसी टाइम में होता है, ऑलरेडी इट इज द केस ऑलरेडी नोन, ये एक्सपेक्टेड है कि पेशेंट का चेंजेस विल कम, तो इसीलिए बट वो नहीं कर पाए आंसर. हाँ जी सीमा शेयर करिए. मैंने तुम्हें ममता आपको मैंने शेयर करी है. ये नहीं बाबा, ये नहीं सर का दीदी सच्ची कहाँ दिया मैंने इजीली बेसिक करके 5 ग्रेड का चेंज किया होगा. नहीं मैंने ममता आपके मेल में है ना. व्हाट्सएप में भी. हाँ जी मेल में भी बस इसीलिए बेसिक. So now we'll be having a session by Professor Dr. Rakesh Yadav. He is currently working as a professor Department of Cardiology at AIIMS New Delhi. He is formerly Sub-Dean, Academic and Acting Dean of AIIMS New Delhi. Has passed MBBS from Gorakhpur Medical College with many distinctions. He passed the MD degree from the Agra Medical College with gold medal and DIM in Cardiology from AIIMS with gold medal. He received many prestigious awards including Dr. B.C. Roy National Award for Eminent Medical Teacher 2014 by Medical Council of India, Yash Bharati Award 2014-15 by UP government, and many more awards. He has published various articles and journals, and he is highly resourceful and person, and he has expertise in various areas. So please interact during the session and please ask questions. Please utilize his great presence here. So please. Thank you. ECG. मेल में मैंने भेजा. हाँ सर वो अभी मैं दोबारा भेजू लेकिन जा नहीं रहा एक बार. सर आपके मेल में है. उसमें भी है ना, मेरे तो व्हाट्सएप में मेरे में राकेश यादव उसमें व्हाट्सएप में निकाल. मैंने व्हाट्सएप भेजा. इससे हो जाएगा सर. व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा. व्हाट्सएप से डाउनलोड कर लो. एक मिनट मैं सर की स्कैन करना. अच्छा सर हम सो सर आप
please have lots of questions. There is expert in everything. Question. इसमें फिर वो बेसिक ये है, लेकिन आप व्हाट्सएप से ले लो, सबसे आसान आजकल ये बहुत डिले करने लगा पूरा ऑनलाइन हो जाएगा सर तब तक इंटरेक्ट because the ECG until you see the ECG very difficult to understand. That is the only thing in which you want to see the thing. Because you all are aware of normal ECG. You all know what is a normal sinus rhythm. The two important things in analyzing the arrhythmia is you have to understand two important things. What is a P wave? What is a QRS complex? And what is the relation of the P wave to QRS complex? This is three fundamental basic of understanding of tachyarrhythmia. I'm not going to teach you bradyarrhythmia because I am just focusing myself to tachyarrhythmia. So you have to understand what is a normal P wave. You have to know what is a normal QRS complex and what is the relation of P wave to QRS complex. So depending upon that, and you all know that arrhythmia may arise from where the normal sinus rhythm arises as a node, which is located into the right atrium near the superior vena cava, junction of right atrium to superior vena cava. So impulse starts from that, and it starts from the inner part of sinus node. It travels the sinus node. Sinus node is a structure in which the impulse travel. It travels very fast. Then it exits from the sinus node. When it exits from the sinus node, it stimulates atrial myocardium. It creates the P wave. Then from the atrial myocardium, impulse goes to AV node because all other part of the ring which connects the atrial ventricle is insulated. It doesn't pass atrial any impulse. Electrical impulse. So the electrical impulse has to pass from the AV node until there is an additional connection which we know as accessory pathway. If there is no connection, if you cut down the AV node, the atrial impulse will never go to the ventricle. So from the AV node, what happens? AV node has a property. Because God has given a property. If the atrial rate is 300, you can never create ventricle rate 300 because AV node is a licensing part. It stops. No, I will not let ventricle stimulate more than 100 or 110, 120. Why it is so? Because a rhythm which is known as atrial fibrillation, in which atria contracts at a rate more than 300 per minute. If all impulses passes from AV node, the ventricle will start contracting at rate of 300. Die. It's a safe part. So the property of the AV node, which we know as decremental property, which we know as decremental property, is very important for sustaining the life. So AV node, what happens? It restricts a number of impulses coming to the AV node from AV node. What happened? It goes to his bundle. And his bundle is where? It is at the annulus. It is at the annulus. From his bundle, it goes to a bundles. Left bundle, from left bundle to anterior fascicle to posterior fascicle and into the right ventricle. From that, the impulse goes to Purkinje fibers. From Purkinje fibers, it goes to ventricle myocardium and then the heart. So this is a normal conduction system. Any abnormality, any rhythm can occur, can originate from any part of this conduction. So it creates the tachyarrhythmia. Suppose a part of atrium का एक myocardium है, वो उसमें कुछ हाइपर एक्टिविटी हो गई, हम कहते हैं ट्रिगर एक्टिविटी, autonomous activity, and it start firing an impulse. So your sinus impulse is usually at a rate of 70, 80, 90.
But if it start firing at a rate of 150, it will going to capture the atrium from AV node to ventricle. So it become an ectopic rhythm. So the heart rate will increase. It is a tachyarrhythmia. Same thing. The impulse can come from Purkinje fiber, from left bundle, from ventricle myocardium. So this is how impulses tachycardia is created. There's three important mechanism of tachycardia. You always remember. One is particular focus has increased automaticity. When it has increased automaticity, it fires as a. Second thing, there's a reentered circle. Suppose a impulse come and there is a pathway. हमेशा physics में पढ़ाया जाता ना, if you have a return, the return will move very fast. So there may be a reentrant tachycardia. Is two automatic, reentered or trigger activity. How any impulse comes from any part of the heart can lead to tachycardia. So first important thing, what you know is normal sinus rhythm. A normal sinus rhythm is a rhythm which is from the rate from 60 to 100. So 60 brady, above is tachy. The P wave should come from sinus node. Then it is a normal sinus. If it comes from atria, it is an ectopic atrial. So it should come from a sinus node, travel from sinus node to AV node with a normal PR interval. So your PR interval, you all knowing this all thing now? Your PR interval should be normal. Then it followed by a QRS complex. It should be normal. And the rate should be from 60 to 100. So this is a normal sinus. Any abnormality, if the rate become less than 60, it is all bradyarrhythmia. Rate become more than 100, it is all. The first and foremost normal part of arrhythmia is which we know as sinus arrhythmia. A normal sinus rhythm is a normal thing, but sinus arrhythmia is also a normal phenomena occurring in the body. See this ECG. This ECG first is a normal P wave. Ideally, you should comment normal wave when you see all the 12. Normal P wave means it should be upright in lead 2. Basic याद रखो. And it should be biphasic in मोटा. हम लोग उसको कहते हैं axis of the P wave. Axis of the P wave should be from around 60 degree. Then it's a normal. But a normal P wave will have a upright P wave in lead 2 and small biphasic in lead. So now see this. How? Now if you see this, you can say nahi, RR interval vary कर रहा है. So it may not be. Because normal sinus rhythm में PP interval, RR interval should. However, we have two autonomous function, parasympathetic and sympathetic. When you take deep breath, your parasympathetic increase. So a normal variation in RR interval up to 10% is acceptable with your respiratory cycle. More than 10% we say is abnormal sinus arrhythmia. However, we all consider sinus arrhythmia as a normal thing, not treat. An athlete who has a strong parasympathetic, a yogachari who has a very strong parasympathetic, child, in that the sinus arrhythmia, the variation in RR interval will be more than 10%. But what is a prerequisite? Sinus arrhythmia, P wave morphology should be normal, PR interval should be normal, and every P wave should be followed by. So this is a sinus rhythm. So if you see in any ECG that there is an irregular rhythm, don't say atrial fibrillation ho gaya, because each and every QRS is preceded by which is normal. All P wave morphology is normal. Suppose what happened in third beat, the P wave morphology become abnormal. Invert हो जाती है. अभी upright है ना, दिख रहा ना सबको, invert हो जाती. तो क्या diagnosis?
now this P wave is abnormal P wave. So it is not coming from sinus node. So it is an ectopic P wave, ectopic rhythm, atrial ectopics है. तो इस ectopic क्या होती है? अर्ली आती है, इसीलिए ये QRS कॉम्प्लेक्स जल्दी आ गया. तो अगर ये P wave abnormal होती तो हम इसको साइनस रिदमिया. Clear? So for sinus arrhythmia, normal or P wave should be. Now this is how you should approach. याद रखो लास्ट में तुम लोग 90% डायग्नोसिस अपने आप से ही बताओगे टैकीकार्डिया की. दिस आई कैन बेट इट. कोई मैं क्लासिकल म्यूजिक नहीं पढ़ा रहा. जस्ट कंसंट्रेट. वेरी सिंपल. कोई भी टैकीकार्डिया को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले हम रेट देखते हैं. रेट दो चीजों का होता है. वेव का रेट होता है, एक QRS का रेट. ठीक है, तो हमने दोनों के रेट देखने हैं. फिर हमें देखना है कि उसका जो QRS है वो वाइड है कि नैरो है. नैरो एंड वाइड डिफरेंस इज QRS width is less than 120 or equal to 120 is a narrow QR. If it is more than 120, it is a broad QR. A very basic thing you should understand, because as far as you are concerned, any broad tachycardia, if suppose a patient has a ECG which has narrow QRS, an ECG of tachycardia broad QRS, a diagnosis of ventricular. You should treat as a ventricular tachycardia until somebody say no, it's an SVT, supraventricular tachycardia. So it's important to see the QRS with. Then regular है और irregular. ठीक, या तो रेगुलर टैकीकार्डिया होगा या इरेगुलर होगा. कभी आर इंटरवल कम होगा, कभी ज्यादा. अब इरेगुलरिटी में भी दो चीज हो सकती है. इरेगुलरली इरेगुलर होगा, इरेगुलरली इरेगुलर होगा. मींस 3 बीट टाइम खट खट खट, एक नॉर्मल है खट खट खट. तो ये रेगुलरली इरेगुलर है, बट खट 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 इरेगुलरली. तो आपको दूसरी चीज. तीसरी, उसके बाद पी वेव को देखिए. उसके बाद आरपी इंटरवल मींस बाद में अभी बताता हूं मैं, और पीआर इंटरवल को देखिए. फिर ये देखिए टैकीकार्डिया शुरू कैसे हुआ. इफ यू हैव अ ईसीजी ऑफ स्टार्टिंग ऑफ टैकीकार्डिया, तो जनरली आपको ईसीजी में तो मुश्किल से मिलती है, होल्टर में मिल जाए. फिर टैकीकार्डिया खत्म कैसे हुआ. फिर टैकीकार्डिया में कोई बंडर ब्रांच ब्लॉक हुआ कि नहीं हुआ, एंड सम मैन्यूवर, वेगल मैन्यूवर किया, एडिनोसिन लगा के देख लिया. तो दिस इज अ 9 step by which you can diagnose practically 90% of the. अब दिस इज ऑल्सो अ एल्गोरिदम. तो टैकीकार्डिया में हमने दो रेट तो बताया, 100 से ऊपर है तो टैकीकार्डिया है. फिर हमने रेगुलरिटी बताई. अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है QRS को हमें देखना. हमने थर्ड इज QRS बताया था, कि आप लोग सब नोट कर लो, इसी से हम आपकी सारी डायग्नोसिस बनवा. रेट, नैरो ब्रॉड, irregularities, P wave, RP interval, this all. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है. अगर नैरो QRS है तो वाइड QRS है. तो वाइड QRS है तो आपके हिसाब से 90% वो वेंट्रिकुलर. क्लियर. वाइड QRS at your stage, you should never make a diagnosis of SV until योर प्रीवियस ईसीजी जो नॉर्मल थी उसमें लेफ्ट बंडर ब्रांच ब्लॉक था. तो लेफ्ट बंडर ब्रांच में क्या होता, QRS वाइड हो जाता. ठीक है, क्लियर. तो सपोज पुरानी ईसीजी का QRS मॉर्फोलॉजी और टैकीकार्डिया की सेम है तो ये एसवीटी होगा. पुरानी ईसीजी की मॉर्फोलॉजी और टैकीकार्डिया की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है तो वो वीटी होगा, ज्यादा ब्रॉड है. तो ये मोटा मोटा याद रखो. अब अगर नैरो QRS तो आपको दो चीज देखनी है, रेगुलर है और इरेगुलर है. रेगुलर है तो ये 6 ही पॉसिबिलिटी हो सकती. सबसे पहली पॉसिबिलिटी हम 6 से जाते हैं. साइनस टैकीकार्डिया. ठीक, आपको हम अभी हाथ दे कस के तो आप धक 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 करने लगेगा, तो इस साइनस से चल के आएंगी, आपकी हार्ट बीट 140 हो जाएगी. साइनस टैकीकार्डिया. बट साइनस टैकीकार्डिया की प्री रिक्विजिट क्या है, हार्ट रेट तो 100 से ऊपर है. व्हाट इज द प्री रिक्विजिट,
P wave, and second important thing, P wave should be coming from, it means P wave morphology should be normal. That is prerequisite. तो पहली चीज होगी, अगर रेगुलर आ रहा है तो साइनस टेकिकार्डिया बनाओ। दूसरी ये हो सकती है, इसको आप लोग पीएसवीटी कहते हो, पीएसवीटी हो गया। उसको पीएसवीटी का भी मैकेनिज्म बताएंगे, बहुत सिंपल है। एक होती है पीएसवीटी जिसमें जो सर्किट होता है वो एवी नोड के अंदर क्रिएट, एक इंपल्स आई एवी नोड में सर्किल क्रिएट हो गया, तो एवी नोड से आगे भी आई पीछे भी गई इंपल्स, तो आगे आई तो उसने क्यूआरएस बढ़ा दिया। एक होता है आपकी एवी नोड ठीक है बट एक एसेसरी पाथवे है कहीं पर हार्ट में, ये रिंग हो गई, रिंग में यहाँ एवी नोड हो गई, ये माइट्रल रिंग हो गई, ये ट्राइकुस्पिड रिंग हो गई, बीच में एवी नोड होती है। अब माइट्रल रिंग के पास एक एसेसरी पाथवे बन गया, तो अब इंपल्स वहां से भी कंडक्ट हो रही है। तो एक टेकिकार्डिया, इसको हम एवीआरटी, एट्रियोवेंट्रिकल रीएंट्रेंट टेकिकार्डिया कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, टेकिकार्डिया का पाथवे होता है नोड से मायोकार्डियम में, फिर से एसेसरी पाथवे से घूमता है। तो इसमें क्या होता है कि हम इस एसेसरी पाथवे को जला दे तो रीएंट्रेंट सर्किट क्या होगा, खत्म हो जाता है। एवी नोडल रीएंट्रेंट में हम एवी नोड में एक पाथवे जला देते हैं जिसको हम स्लो पाथवे कहते हैं। तो जब एक पाथवे जल गया तो रीएंट्री नहीं हो पा रही है। रीएंट्री तो तभी होगी जब दोनों तरफ से इंपल्स चलने की जगह होगी। अब इंपल्स एक तरफ से चली बट ये वाला पाथ चला दिया तो रीएंट्री नहीं होगी। सेम थिंग एवी नोडल में, एवी नोड है, एसेसरी पाथवे, अब एवी नोड से इंपल्स आई और एसेसरी पाथवे से वापस चली गई, तो उसमें एक ट्रिगर होता है कि एक पर्टिकुलर साइकिल लेंथ में क्या होता है, वो इसमें फिर रीएंटर कर जाती है, तो ये एक सर्किल बन जाता है विच इज एट रेट ऑफ 200 160। तो अगर हमने एसेसरी पाथवे को जला दिया तो क्या हुआ, अब वो रीएंट्रेंट खत्म हो गया, तो मरीज को कभी टेकिकार्डिया नहीं होता। तो सेकंड रीजन हम लोग एवीआरटी मींस एसेसरी, यू ऑल नो एसेसरी पाथवे ना, एसेसरी पाथवे जो हो जाते हैं। तीसरा होता है एटी, एट्रियल टेकिकार्डिया। मैंने ये बताया कि साइनस नोड तो एक्टिव होती है। अब सपोज एक फोकस लेफ्ट एट्रियम की जो मसल है वो फायर करने लगी, उसमें पैथोलॉजी हो गई कि वो हाइपर हो गई, तो अब क्या होगा, इंपल्स जो साइनस नोड से आनी थी वो कहां से आ रही है, एक्टोपिक से आ रही है। अब वो मसल पे आएगी, मसल से एवी नोड में आएगी, एवी नोड से कंडक्ट कर जाएगी, तो उसको कहते हैं एक्टोपिक एट्रियल टेकिकार्डिया। एक्टोपिक मतलब कहीं से आ रही है, एट्रियल मतलब एट्रिया की मसल से, टेकिकार्डिया मतलब टेकिकार्डिया। अब एक होता है एसएनआरटी, साइनस नोड रीएंट्रेंट टेकिकार्डिया, जंक्शन टेकिकार्डिया। एक चीज याद रखो, दुनिया में अगर हम एक ईसीजी आपको दे दें, तो अगर साइनस नोड जहां से इंपल्स ओरिजिनेट हो रही है वहां पर हाइपर एक्टिविटी हो गई तो ईसीजी कैसी आएगी आपकी, 12 लीड ईसीजी। सपोज रेट पेशेंट का पल्स रेट 140, ईसीजी आपने देखा और हम कहते हैं ये साइनस नोड रीएंट्रेंट टेकिकार्डिया, मतलब जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो कहां हो रही है, साइनस नोड में हो रही है। ईसीजी कैसी होगी, नॉर्मल की अबनॉर्मल, आपकी नॉर्मल इंपल्स कहां से आती है। अब ऐसे नोड के अंदर कोई भी खुराफात चल रही है, पी वेव कब क्रिएट होती है, जब इंपल्स ऐसे नोड से बाहर निकलती है। तो अब अंदर कुछ भी खुराफात हो रही हो, इंपल्स तो ऐसे नोड के बाहर निकल रही है। तो कोई भी टेकिकार्डिया जो साइनस नोड के अंदर क्रिएट होता है उसमें सिर्फ हार्ट रेट बड़ी होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है जो बताएंगे, बट ईसीजी 12 लीड ईसीजी अगर हम आपको दिखा, आप उसकी कि आप ईसीजी से उसकी डायग्नोसिस नहीं बना सकते, इसके लिए हमें मैप करना पड़ता है। क्लियर। तो अगर रेगुलर रिदम में तो 1 2 3 4 पीजीआरटी को भूल जाओ, पीजीआरटी तो डीएम वाली डायग्नोसिस को भूल जाओ, ये याद रखो। एग्जाम में 6 बता दिया ना तो सामने कह के आप जल्दी भागो यहाँ से, हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये याद रखो, अगर नैरो क्यूआरएस है और अगर रेगुलर है तो यही 6 चीजों से, साइनस टेकिकार्डिया और एसएनआरटी लगभग ईसीजी में। तो आपको डिफरेंशिएट क्या करना है, सिर्फ 4 में, साइनस है, एक्टोपिक एट्रियल है, एवीएनआरटी है, एवीआरटी है। और अगर इर्रेगुलर है तो एट्रियल फिब्रिलेशन है और एट्रियल फ्लटर। एट्रियल टेकिकार्डिया को भी भूल जाओ, एट्रियल टेकिकार्डिया में अगर हार्ट रेट ब्लॉक, वेरियस डिग्री ऑफ ब्लॉक होता है,
अब एट्रियल टेकिकार्डिया 170 रेट पे चल रहा है। अब एवी नोड आपकी बहुत अच्छी है, तो वो हर इम्पल्स को पास, आपका वेंट्रिकल रेट कितना, ठीक है। अब आपकी एवी नोड बूढ़ी हो गई है, आपकी एवी नोड का नहीं भाई, हम तो 170 में 130 ही इम्पल्स पास, तो रेगुलर तो पास हो नहीं सकती। 170 को 130 करोगी तो रेगुलर तो हो नहीं सकती, तो क्या करती है, 2 ब्लॉक कर देगी, तीसरी को कंडक्ट, चौथी को कंडक्ट होने दी। आरआर इंटरवल रेगुलर होगा कि इरेगुलर? तो कोई भी ऊपर का टेकिकार्डिया अगर एवी नोड उनको ब्लॉक कर रही है तो इट कैन बी इरेगुलर। तो ऊपर जिसमें एवी नोड इन्वॉल्व, एवी एंड आरटी कभी कभी 2:1 ब्लॉक हो जाता है, बड़ी चीज है। एक चीज याद रखो, इरेगुलर टेकिकार्डिया में आप तीनों में डिफरेंशिएट भी बता देंगे कैसे ईसीजी में, बड़ा सिंपल है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं। यहां तक एवरीथिंग इज क्लियर? बहुत अच्छा भाई। अब इतना तुमने देख लिया, फिर पी वेव देखो क्या। अब आपने रेट देख लिया, क्यूआरएस नैरो वाइड देख लिया, नैरो है तो रेगुलर इरेगुलर देख लिया, वाइड है तो वीटी डायग्नोसिस। अब इतना देख लिया ना, उसके बाद पी वेव देखो कहां है, वेयर इज पी वेव। अगर पी वेव दिख रही है तो एवीएनआरटी नहीं हो सकता, सिंपल। अभी सब ईसीजी दिखा। अगर इतने के बाद, ये थर्ड स्टेप है ना, इसमें तुम्हें पी वेव दिख गई, नहीं दिखी, डायग्नोसिस क्या हो जाएगी, एवीएनआरटी, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल रिंटर्न टेकिका, ठीक है। अब पी वेव दिख गई, ज्यादा नहीं है, ऐसा बात नहीं तुम घबराओ इसमें, ये भी तुम डायग्नोसिस सब बनाओगे। एक सिंपल बात बताओ, लीड 2 में पी वेव अपराइट क्यों होती है? लीड 2 का एक्सिस क्या होता है, 60 डिग्री होता है ना, और पी वेव कहां से आ रही है, ऐसे नोड से, और ट्रेवल ऐसे कर रही है, तो लीड 2 में हमेशा पॉजिटिव होती है, और एवीआर में क्या होती है, पी वेव नेगेटिव होती है। बहुत अच्छा भाई। अब सपोज पी वेव नीचे से आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो लीड 2 में क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अच्छा, लीड 2 और 3 में नेगेटिव हो जाएगी। अब हम पी वेव को देख लेते हैं, जब दिख रही है और पी वेव अगर पॉजिटिव है लीड 2 लीड 3 में, ये मोटा मोटा याद रखो, ठीक है। लीड 2 और लीड 3 में पॉजिटिव है, तो इसके मतलब पी वेव जो भी आ रही है ऊपर से आ रही है। ऊपर से 3 जगह से आ सकती है, साइनस नोड से आ सकती है, या एक्टोपिक एट्रियल से आ सकती है, चाहे वो लेफ्ट एट्रियम की रूफ हो, चाहे वो लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज हो, या राइट एट्रियल अपेंडेज हो, जो नॉर्मल कारण है एक्टोपिक एट्रियल। अब एवीएनआरटी और एवीआरटी जो होता है, उसमें सर्किट कहां बना हुआ है, रिंग पे बना, एक एवी नोड में बना हुआ है, एक रिंग पे बना हुआ है, ने बताया था ना। तो उसमें पी वेव कहां से जाएगी, नीचे से ऊपर। और अगर सपोज तुम्हारा राइट एट्रियम है, और राइट एट्रियम में आईवीसी नीचे होती है, वहां से एक्टोपिक आ रहा है, तो एट्रियम कैसे होगा, नीचे से। तो पी वेव से तुम ये बता सकते हो कि तुम्हारी पी वेव कहां से। तो अभी तुम्हारे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज है, इफ यू आर नॉट एबल टू सी दी पी वेव, डायग्नोसिस, and if you can see the P wave, it is either an atrial tachycardia or sinus tachycardia। AVRT में भी तुम लोग नहीं देख पाओगे, इसलिए वो भूल जाओ। अगर if you are not able to see the wave, make a diagnosis of both AVNRT और AVRT, you will get 100 out of no problem, because इन दोनों में ट्रीटमेंट चेंज नहीं होता। अगर पी वेव दिख रही है तो तुम्हारी एक्टोपिक, तो डायग्नोसिस बनाना सीख लो। साइनस टेकिकार्डिया है, एक्टोपिक एट्रियल, साइनस टेकिकार्डिया में पी वेव की मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होगी, टॉपिक एबनॉर्मल, ठीक है। अब ट्रीटमेंट, अभी तो ईसीजी बाकी है, अभी तो हम एक बिल्कुल भूमिका बांध रहे हैं। ट्रीटमेंट में एक चीज याद रखना, किसी की मरीज की हार्ट रेट 170 180 चल, बीपी नहीं फील हो रहा है, सबसे पहले क्या करना है, अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन है और पेशेंट डायनेमिक अनस्टेबल, तो चाहे नैरो हो चाहे ब्रॉड हो, यू हैव टू गिव अ कार्डियो, डोंट ट्राई मेडिकेशन।
कि आपका 60 चल रहा है, कुछ नहीं ट्राई करना। अगर बीपी ठीक, आपका बीपी नाप 120, पेशेंट कंफर्टेबल, सिर्फ never try to treat it immediately because you want to make a diagnosis. Take a 12 disease and make your diagnosis. Because the treatment of VT is different, treatment of SVT is clear. Now, first and foremost is a sinus technique. Now, this is an ECG. Yeah? This is an ECG. See everything. पहले से चलो रेट सीक्वेंसेस को एनालाइज को, कोई भी एक लीड ले लो उसमें अच्छी पी और क्यूआरएस मिल रहा, ठीक है, कोई भी एक लीड ले लो। ये लिम, हम यूजुअली लिम लीड प्रेफर करते हैं इसमें। कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट बीट, हार्ट रेट इज was more than, ये लगभग 11 स्क्वायर है, तो हार्ट रेट कितनी हो जाएगी 140 150। अगर 10 स्क्वायर कवर करता है तो 150 होती है, 15 स्क्वायर कवर करता है तो 100 होती है। सिंपल मोटा मोटा याद। तो अब पहला हमने बताया था रेट, इट इज 140, इट इज अ टेकिका। दूसरा क्या बताया था हमने, अब क्यूआरएस कितना है, ये मुश्किल से 2 स्मॉल स्क्वायर है ना, नैरो है। 3 के लिए 3 स्मॉल स्क्वायर अगर होता तो वाइड होता, नैरो है, नैरो में वीटी नहीं है, ये अलग हो गया। तीसरा क्या बताया था, रेगुलर है कि इरेगुलर है, रेगुलर है। तो रेगुलर है तो क्या क्या चीज हो सकती है, एवीएनआरटी, एवीआरटी, एट्रियल टैकिकार्डिया, एसएनआरटी और साइनस टैकिकार्डिया, बस ठीक है। अब चौथा क्या बताया था हमने, पी वेव। अब इसमें पी वेव दिख रही है, बहुत बढ़िया दिख रही है। अब पी वेव में आ जाओ, कितनी बढ़िया पी वेव दिख रही है। और पी इंफीरियर लीड में अपराइट है, 2 में अपराइट है, अपराइट है ना। तो एवीआरटी एवीएनआरटी खत्म, 3 चीज बची, साइनस टैकिकार्डिया, एसएनआरटी और एट्रियल टैकिकार्डिया। अब ये मॉर्फोलॉजी ऑफ द पी वेव देखो, इसका एक्सिस काउंट नॉर्मल है, लीड 2 में पॉजिटिव है, स्लाइटली बाइफेजिक है, लुक्स लाइक अ नॉर्मल पी वेव। तुम्हारी डायग्नोसिस क्या हो गई, कार्डिया और एसएनआरटी, साइनस नोडल रीइंटरटेकिक। ईसीजी में इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो अगर इसका टर्मिनेशन भी मिल जाए तो। सपोज ये सडन, क्योंकि जो साइनस नोडल एट्रियल टैकिकार्डिया होता है सडन ऑनसेट होता है, सडन ऑफसेट। साइनस टैकिकार्डिया ऐसा नहीं हो सकता, धीरे धीरे बढ़ेगा ना, घबराहट धीरे धीरे होती है ना, और फिर जब सांस लोगी तो धीरे धीरे। सिर्फ एक चीज है इंपॉर्टेंट जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है, एसएनआरटी में क्या होता है, अंदर एक्टोपिक हुई, वो फट से ठीक हो गई, अब नॉर्मल रिदम आ गई। तो एसएनआरटी अब्रप्ट स्टार्ट होती है, साइनस टैकिकार्डिया ग्रेजुअल स्टार्ट होती है। अगर 12 लीड मिल जाए तो यू कैन क्लियर। एब्सोल्यूट के किसी को और कंफ्यूजन है तो पूछ लो अभी। अब 2 चीज और बोलते हैं, इनएप्रोप्रिएट साइनस टैकिकार्डिया और एसएनआर, बिकॉज इन तीनों में 12 लीड डिसीज। अब साइनस टैकिकार्डिया कैसे कैसे हो सकते हैं, आपको ओपीडी है, आपको फीवर है, आपने कफ सिरप पी ली, आप तमाम बीटा एगोनिस्ट लेते हैं, आप एंजाइटी में हैं, आपको पैनिक अटैक हो गया, तो आपकी धड़कन नॉर्मल चीज है। तो अगर आपकी धड़कन किसी भी और कारण विच यू कैन आस्क फ्रॉम द पेशेंट और डायग्नोज दिस, बट इफ योर हार्ट बीट इज इंक्रीज, नो अदर कॉज, इट इज इनएप्रोप्रिएट। इनमें क्या था, कुछ लोगों में सिंपैथेटिक ड्राइव बहुत होती है, पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव कम होती। क्लियर। तो इनएप्रोप्रिएट साइनस टैकिकार्डिया, जैसे आप हैं, अब आपने कहा साहब हम तो एक फ्लाइट चढ़ते हैं, मेरी हार्ट बीट 160, थोड़ा चल ले हमारी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है। तो इनएप्रोप्रिएट साइनस टैकिकार्डिया सिर्फ एक चीज है, प्योर साइनस टैकिकार्डिया देयर इज नो कॉज। क्लियर। और साइनस नोड सेम चीज होती है,
एक चीज नीचे होती, सबसे नीचे क्या लिखा, एब्रप्ट ऑनसेट। यही एक है जिसमें एसएनआरटी और साइनस टैकीकार्डिया में। वो क्लियर है बिल्कुल। नाउ सी दिस ईसीजी, बन जाएगा डायग्नोसिस। पहली 5 बीट में टैकीकार्डिया है, बाद की 5 बीट में नॉर्मल साइनस रिदम है। अब बताओ, तो क्राइटेरिया बताया था, कुछ मत करना, उसी क्राइटेरिया से जाओ। पहली रेट ज्यादा है, पहली 5 बीट टैकीकार्डिया है, क्लियर। दूसरा क्या बताया था, क्या है, नैरो है। तीसरा क्या बताया था, क्या है, पहले वाला क्या है, रेगुलर है, तो तुम्हारी डीडी कम होती जा रही है। फिर चौथा पी वेव, इसमें दिख रही है, कहां से आई है पी वेव, लीड टू पॉजिटिव है, लीड टू पॉजिटिव है तो ऊपर से आ रही है, ठीक है। और बगल की ईसीजी क्या है, नॉर्मल साइनस रिदम है। दोनों की पी वेव में मॉर्फोलॉजी में देखो क्या एक है कि अलग है, लगभग। अब थोड़ी बहुत अलग अलग है ना, है कि नहीं है, लगा। लीड V1 देखो, V1 में टोटल प्राइड थी, फिर थोड़ी बाइफेजिक हो गई, तो अब इसकी डायग्नोसिस बता दो। एसएनआरटी में क्यों एबनॉर्मल होगी नॉर्मल से, हमने जो क्राइटेरिया में लिखा कि नहीं, देखो सब बना लोगे। इतने के बाद तुम्हारी क्या डायग्नोसिस बचती थी, तीन ही तो बचती थी, क्या क्या, साइनस टैकीकार्डिया, एसएनआरटी और तीसरी एट्रियल टैकीकार्डिया। तो एट्रियल टैकी यही तो बनती है, एक्टोपिक एट्रियल टैकीकार्डिया। तो एक्टोपिक एट्रियल टैकीकार्डिया में हमने क्या बताया था, abnormal पी वेव, जो नॉर्मल साइनस पी वेव थी उससे उसमें है कि नहीं है। तो पहली 5 बीट क्या हो गई, एक्टिव एक्टोपिक टैकीकार्डिया, और सडन टर्मिनेशन हुआ, एक्सेप्ट साइनस टैकीकार्डिया और टैकीकार्डिया टर्मिनेट्स, क्लियर। तो अब इसको तुमको साइनस टैकीकार्डिया नहीं ना, साइनस टैकीकार्डिया एक बीट में कैसे टर्मिनेट हो सकता, नहीं हो सकता, इससे ग्रेजुअल होगा, क्लियर। अभी तो बाद में सब बना लो डायग्नोसिस। अब एट्रियल फ्लटर एक दूसरी रिदमिया है। एट्रियल फ्लटर में क्या होता है, हमारा हार्ट डिजीज हो गया, हमारा एट्रियम डिजीज हो गया, डिजीज होने से डायलेट हो गया, तो क्या उसमें एक सर्किट बन गया, साइनस नोड तो अपना फायर कर रही है, लेकिन इस सर्किट के कारण, इस सर्किट से एट्रियल रेट बहुत बढ़ जाती है, 200 300, तो वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करता है 250-300 के रेट पे, बट एवी नोड ब्लॉक कर देती है, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन कितनी ब्लॉक की। इट्स नॉट एन एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर में आपको कभी भी ईसीजी मिलेगी तो पी वेव विल लुक लाइक अ सॉ-टूथ अपीयरेंस, बिकॉज़ इट्स वेरी रैपिड, इट्स वेरी रैपिड कॉन्ट्रैक्टिंग, 250 300. So if you see a saw-tooth P wave on ECG is atrial flutter. अब एट्रियल फ्लटर के बाद वेंट्रिकल रेट डिपेंड अपॉन एवी नोड, कितना ब्लॉक कर देती है। अगर एवी नोड बहुत ज्यादा ब्लॉक करेगी तो हार्ट रेट स्लो हो जाएगी, एवी नोड अच्छी है, वो चलो पास होने दो, तो हार्ट रेट कभी कभी 220 तक नीचे चली जाती है, तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ द एवी नोड ब्लॉक्स द फ्लटर रेट। बट इफ यू सी a saw-tooth appearance, it is a flutter. This is another ECG. In first ECG, you are seeing the saw-tooth appearance of the P wave. yes sir, Just बिल्कुल अपने दिमाग में प्रिंट कर लो, अगर ऐसी ईसीजी मिले saw-tooth तो तुम बनाना डायग्नोसिस एट्रियल फ्लटर। अच्छा, कभी कभी एक्टोपिक एट्रियल टैकीकार्डिया में भी पी वेव बहुत तेज हो जाती है, इन दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंट होता है। फ्लटर में कभी भी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन नहीं आती, देखो सब जुड़े हुए हैं ना, कोई भी ले लो, जैसे नीचे वाले में ले लो, लीड 2 में कोई आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है नहीं, बट एक्टोपिक एट्रियल टैकीकार्डिया होगी तो उसमें आइसोइलेक्ट्रिक पी वेव होगी, फिर आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, फिर पी वेव, फिर पी वेव दिखाएंगे। ये बेसिक डिफरेंस समझ लो। फ्लटर में कोई आइसोइलेक्ट्रिक लाइन नहीं होती, बिकॉज़ एक सर्किट है, वो ऐसे ऐसे सर्किट में एट्रिया में घूम रहा है, तो एट्रिया जो है कंटीन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एक्टोपिक में क्या, जब तक वो फायर करेगा तब इंपल्स आएगी, इसमें कंटीन्यूअस इंपल्स जारी है एट्रिया, so there is absolutely no isoelectric. So if you are seeing a saw-tooth appearance on ECG, it is an atrial flutter. ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट है, बट याद रखो आपके लेवल पे अगर हार्ट रेट बहुत ज्यादा है
तो हम हार्ट रेट कंट्रोल करने की दवाएं देते हैं, जो बीटा ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। यू शुड नो एवी नोडल ब्लॉकिंग एजेंट। और उसमें एब्लेशन, एट्रियल फ्लटर को हम एब्लेट भी कर सकते हैं, जैसे दैट इज लॉट ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट। तो वी कैन जला सकते हैं, उस सर्किट को हम जला देते हैं जिससे फ्लटर हो जाए। तो एज फार एज ट्रीटमेंट इज वी शुड ट्राई टू इंकरेज दी control the ventricle rate, and there is a radio frequency ablation technique available so that we can burn this flutter. So this is again flutter. देखो ऊपर क्या हो रहा है, फ्लटर में हार्ट रेट स्लो है, सेम थिंग एवी नोड ने कहा जाओ सारी की सारी जाओ, तो हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाए। तो फ्लटर में हार्ट रेट डिपेंड्स अपॉन द एवी नोड। अब ये दो चीज बताई थी ना, एवी नोडल री एंटर, एवी नोड से जो री एंट्री होती है। अब इसमें क्या होता है, हमारी जो एवी नोड होती है उसमें दो पाथवे होते हैं, एक फास्ट पाथवे होता है, एक स्लो पाथवे। तो नॉर्मल इंपल्स किससे जाएगी भाई, दो चीज होती है, फास्ट निकलना होता है वही जल्दी जाएगी, एक खट से फास्ट पाथवे से नहीं, स्लो पाथवे से नहीं जाती। बट स्लो पाथवे पड़ा रहता है, कभी कभी प्रॉपर्टी इन पाथवे की ऐसी चेंज हो जाती है, इंपल्स आई और ये, क्योंकि जैसे ही इंपल्स तो दोनों में जाएगी बट ये स्लो है, तो यहाँ पर इंपल्स आके ब्लॉक हो जाएगी, जैसे कंडक्ट। बट कभी कभी दोनों की प्रॉपर्टी ऐसी हो जाती है कि ये फास्ट से इंपल्स वापस स्लो में चली जाती है, स्लो पाथवे का रिफ्रैक्टिव पीरियड जो होता है वो खत्म हो जाता है। हर कंडक्शन सिस्टम में एक रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। रिफ्रैक्टिव पीरियड मतलब अगर वो एक्साइट हो गया, इतने पीरियड में आप उसको कुछ भी करो वो री एक्साइट नहीं हो सकता, इज नोन एज रिफ्रैक्टिव। री एक्साइट का मतलब वो फिर शुरू हो जाएगा। तो ये एक इंटरनल एवी नोड में सर्किट होता है, इतना मोटा मोटा जानो, दो पाथवे होते हैं, स्लो पाथवे और फास्ट पाथवे, इन्हीं के अंदर सर्किट बनता है, तो एवी नोडल रीइंट्रेंट टैकिकार्डिया क्रिएट होता है। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं नाउ, चलो हो जाओ, ईसीजी तुम्हें बनाना, मुझे नहीं कुछ बनाना। डायग्नोसिस पहला क्या, रेट, रेट कितनी है, ज्यादा 200 के करीब है। दूसरा क्यूआरएस नैरो है तो वीटी हट गया, एक लाइन में आएगा। पी वेव दिख रही है कि नहीं दिख रही है, और अच्छी बात है, नहीं दिख रही है बोलते क्या नहीं हो, नहीं दिख रही है, सही बात है नहीं दिख रही है। क्या डायग्नोसिस हो गई। और आप देख, तुम लोग अपनी उम्र में एवीएनआरटी एवीआरटी दोनों रख सकते, दोनों रख सकते हो, ठीक है, दोनों रख सकते हो। दोनों में एक ही डिफरेंस है, ईसीजी में आ जाओ लीड V1 में, और लीड V1 में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद एक नॉच दिख रही है, ये एक छोटी सी नॉच दिख रही है ना, अगर ये नॉच दिखे तो उसको एवीएनआरटी डायग्नोसिस, एवीआरटी नहीं। बस तुम्हारे स्टेज पे सिर्फ इतना चाहिए, पी वेव नहीं दिख रही है ना, तो या तो एवीएनआरटी या एवीआरटी है। और इन दोनों में डिफरेंस के लिए अगर तुमको V1 के क्यूआरएस के लास्ट में एक नॉच खटसी मिल गई तो इट इज ठीक। चलो इसकी डायग्नोसिस बना, खटाखट खटाखट 15 सेकंड। बस एवीएनआरटी ठीक है, सारे कटे बैठे, नॉच दिख गई, दो में से पी वेव तो दिखी नहीं रही इसमें। पी वेव हमेशा ट्राई किया करो देखने के लिए लीड 2 में, लीड 2 और 3 में सबसे अच्छी पी वेव एवीएनआरटी। अब एसेसरी पाथवे आ गया जिसको हम एवीआरटी कहते हैं, एनआरटी नहीं, एवीआरटी। एसेसरी पाथवे कहीं भी हो सकता है, माइट्रल एनुलस के भी चारों तरफ हो सकता है, ट्राइकस्पिड एनुलस के भी चारों तरफ हो सकता है। तो राइट साइडेड ट्राइकस्पिड को कहते हैं, माइट्रल को क्या कहते हैं, लेफ्ट साइडेड कहते हैं पाथवे। बस अब नॉर्मल क्या होता है, बहुत पेशेंट्स में एवी नोड का कंडक्शन फास्ट होता है, सारी इंपल्स एवी नोड से आ जाती है। और कुछ में क्या होता है, पार्शियली इससे भी इंपल्स आती है, एवी नोड से भी इंपल्स आई, पाथवे से भी इंपल्स आई, तो क्यूआरएस थोड़ा फ्यूज्ड हो जाता है, तो हम लोग डेल्टा वेव कहते हैं। तो कभी कभी इधर से भी कंडक्शन हो सकता है, कभी कभी इसमें एंटीरियर कंडक्शन होता नहीं, सिर्फ पीछे से कंडक्शन हो सकता है, ये डिपेंड अपॉन पाथवे मॉर्फोलॉजी। बट यू शुड नो accessory pathway can lead to tachycardia which is known as AVR। अब ये अगेन एक tachycardia है, तो
रेट, टेकिकार्डिया, क्यूआरएस, नैरो, पीटी हट गया, एसवीटी में आ गया। थर्ड, रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर, तो रेगुलर में 6 ही डायग्नोसिस हैं। फोर्थ, पी वेव, पी वेव सीन, नो, हाँ पी वेव, एवीआरटी और एवीएनआरटी। अब लीड V1 के लास्ट में चले जाओ, है नॉच नहीं है, तो डायग्नोसिस क्या हो गई, सिंपल बात। और इसको तुमने कन्वर्ट किया तो बहुत बार तुम एसेसरी पाथवे पा लेते। डेल्टा वेव में दिखाता हूं, ऐसी ईसीजी मिलती है ना कि क्यूआरएस के पहले स्लरिंग होती है थोड़ी, उसको हम लोग डेल्टा, पीआर इंटरवल बहुत शॉर्ट हो जाता है। इसका पीआर इंटरवल देखो क्या है, पी यहां से शुरू हो रहा, जहां पी खत्म हुआ वहीं से क्यूआरएस शुरू हो जा रहा है। प्रैक्टिकली पीआर इंटरवल 80 मिली। तो accessory pathway में क्या होता है, you will have a very short PR interval and the initial part of the QR is slurred, जिसको हम लोग डेल्टा वेव कहते हैं। तो अगर ऐसी ECG मिले तो it is known as accessory pathway। तुम कह दो ये सब accessory pathway, राइट और लेफ्ट भूल जाओ, ठीक है। तो now it is very clear कि यार resting ECG you see this and tachycardia में वो मिला तो तुमने डायग्नोसिस बना ली AVRT और accessory pathway में। समटाइम एक चीज याद रखो, एक ये ECG दुनिया की सबसे हिस्टोरिकल ECG है। डायग्नोसिस बताओ, चलो। बहुत बढ़िया, तुमने जो भी डायग्नोसिस बनाई है पॉलीमॉर्फिक वीटी जो है या वीटी, वो हमारे लेवल पे सही है। बट एक चीज बताओ, वीटी इतना इरेगुलर क्या है? पॉलीमॉर्फिक में क्या होता है, क्यूआरएस चेंज होता है, इतना इरेगुलर क्यों है? अब एक चीज बताओ, एक पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन भी है और पाथवे भी है, क्या होगा? ब्रॉड क्यूआरएस होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल ठीक है, अगर तुमने पॉलीमॉर्फिक बनाई है तो तुम्हारे लेवल पे 100 में 90 नंबर मिले। तो हमेशा ब्रॉड क्यूआरएस जो भी तुम देखो तुम्हारे लेवल पे, यू शुड ऑलवेज मेक अ डायग्नोसिस ऑफ वेंट्रिकल। अगेन डायग्नोसिस उसी से जाओ, क्राइटेरिया से, जस्ट नहीं मारना। एवीआरटी, बिकॉज स्लरिंग नहीं मिल रही ना तुमको लास्ट में क्यूआरएस के, एवीआरटी है, बिल्कुल क्लियर है। अब एट्रियल टैकीकार्डिया मैंने बताया था, कहीं से भी बस 2 में भी हम लोग कहते हैं, बट 1 की सबसे क्लियर होती है, लीड 1 और लीड 2। लीड 2 में क्यूआरएस के लास्ट में, और लीड V1 सबसे क्लासिकल V1 में। अब एट्रियल टैकीकार्डिया हो गया, तो समझो ये पूरा एट्रिया है, ये साइनस नोड है। अब पूरे एट्रिया में कहीं से भी टैकीकार्डिया क्रिएट हो सकता है, विच इज नोन एज एट्रियल। क्लियर? अब एट्रियल टैकीकार्डिया में क्या होता है, देखो ये है नॉर्मल साइनस, ये पी वेव है V1 की, ये पी वेव है V1 की, सडनली टैकीकार्डिया स्टार्ट हो गया, पी वेव मॉर्फोलॉजी क्या हुई, चेंज होती चली। तो ये तो इल सस्टेन है, मल्टीपल है तो मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया हो गया। अगर टैकीकार्डिया में सारों की पी वेव मॉर्फोलॉजी एक है तो यूनिफोकल टैकीकार्डिया हो गया। 4 फोकस से आ रहा तो मल्टीफोकल हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पी वेव, ठीक है। अब आओ इसमें डायग्नोसिस, चलो शुरू हो जाओ। डायग्नोसिस तो तुम्हें बनानी है। रेट है, टैकीकार्डिया बोलो, क्यूआरएस नैरो बोलो, रेगुलर है, फोर्थ पी वेव दिख रही है, हाँ वेरी गुड। क्यों है? अब यहां तो टी वेव में मर्ज हो गई है, लेकिन V1 में देखो, V1 में तो बहुत क्लियर है ना, ये देखो बीच में। अब तुम कहो लीड 2 में क्यों नहीं दिख रही, दिख तो रही है, लीड 2 में टी वेव में मर्ज है, इसलिए टी वेव इतनी पीकिंग होगी, टी होती है, गोल होती है। जब भी तुमको पी वेव टैकीकार्डिया में पीक मिले तो समझना वहां पर पी वेव है। क्लियर? अब डायग्नोसिस की बता दो क्या है। यस वेरी गुड, एट्रियल, परफेक्ट। तुम तो साइड भी अब अगर पढ़ाएंगे तो हमें लगता बताने लगोगी कहां से ओरिजिनेट हो। इसमें बता दो साइड क्या, हमेशा याद रखो, जब भी टैकीकार्डिया राइट साइड से आता है, V1 क्या होगी, लीड V1 में पी वेव क्या होगी, V1 लीड है, इसी के पीछे राइट एट्रियम होता है। और लेफ्ट साइड से आता है, ऊपर से आता है या नीचे से आता है, चार ही जगह से आ सकता है मोटा मोटा।
ऊपर से आता है तो इंफीरियर लीड में क्या होगी, क्या होगी, पॉजिटिव होगी। चलो अभी हम दिखाते हैं, इसमें तुम्हें क्लियर मिलेगा। अब इसकी डायग्नोसिस बना, रेट बढ़ा हुआ है, क्यूआरएस नैरो है, रिदम रेगुलर है, तो 6 डायग्नोसिस होगा। ठीक है, अब पी वेव दिख रही है, यस, तो एविन आरटी एवीआरटी आउट हो गया, तो 3 है, या तो साइनस टेकिकार्डिया या एक्टोपिक एट्रियल टेकिकार्डिया। अब पी वेव की मॉर्फोलॉजी देख लो, जो लीड 2 पॉजिटिव है, लेकिन V1 ऐसी तो होती नहीं, V1 में बाइफेसिक, V1 में एब्सोल्युटली पॉजिटिव है, तो कहां से आ रही है, LA से आ रही है। V1 में निगेटिव है तो कहां से आ रही है, राइट एट्रियम से, मोटा याद। तो V1 में इतनी पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये एक्टोपिक एट्रियल टेकिकार्डिया कहां से आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम से आ रहा है। और इंफीरियर लीड में पॉजिटिव है तो लेफ्ट एट्रियम में ऊपर से आ रहा है कि नीचे से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, सिंपल। तो इतनी अच्छी डायग्नोसिस तो MD वाले नहीं बना पाए। एक्टोपिक एट्रियल टेकिकार्डिया कमिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द, सिंपल, इसकी बना दो। मैं बता देना, मैं बंद कर दूंगा, जब टाइम हो जाए तो मुझे बता दो, ठीक है। आई विल स्टॉप, हो भी गया लगभग इनका, इतनी देर क्यों लग रही है। यस, एक्टोपिक टेकिकार्डिया कहां से आ रहा है, अरे लेफ्ट से क्यों आ रहा है, V1 में पी वेव क्या है, निगेटिव है, तो राइट से आ रहा है। और लीड 2 और 3 में पॉजिटिव है तो राइट, राइट एट्रियम के रूप से आ रहा है। एट्रियल फिब्रिलेशन में ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू सी अ पी वेव लाइक फिब्रिलेटरी वेव्स, इट इज एट्रियल। एट्रियल फिब्रिलेशन में आरआर इंटरवल क्या होगा, इर्रेगुलर होगा। तो इस ईसीजी में क्या है, रेट बढ़ा हुआ है, क्यूआरएस नैरो है, और रिदम इर्रेगुलर है, तो दो ही चीज हो गई, या तो एट्रियल फ्लटर हो गई या एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया। अब इसमें चूंकि फ्लटर वेव नहीं दिख रही है, फिब्रिलेटरी वेव दिख रही है, तो एट्रियल, ठीक है, ये देखो फिब्रिलेटरी वेव हर जगह दिख रही है, तो दिस इज एट्रियल फिब्रिलेशन। व्हाइट क्यूआरएस में हमेशा याद रखो दो चीज बस, लास्ट 2 स्लाइड्स, 5 मिनट्स मोर। अब इसमें ईसीजी में बताओ क्या क्या हो रहा है। पहला आया रेट बढ़ा हुआ है, क्यूआरएस वाइड, तो क्यूआरएस वाइड है तो डायग्नोसिस गई। अब कभी कभी एसवीटी में सपोज एसवीटी के साथ लेफ्ट बंडर ब्रांच ब्लॉक या राइट बंडर ब्रांच ब्लॉक है, तो लेफ्ट बंडर ब्रांच में क्यूआरएस ब्रॉड होता है ना, तो टेकिकार्डिया में भी ब्रॉड होगा। तो एसवीटी के साथ अगर एलबीबी है तो ब्रॉड क्यूआरएस होगा। दो चीज याद रखो, कभी एग्जामिनर तुमसे बहुत खुश हो जाए तो पूछ ले भाई अब बताइए कि, तो एक चीज याद रखो, एनी नैरो क्यूआरएस टेकिकार्डिया इसमें एवी डिसोसिएशन मिल जाए, तब ए अलग मिल जाए, वी अलग मिल जाए, क्या टेकिकार्डिया के बीच बीच में ये नैरो क्यूआरएस दिखने लगे, तो हम कहते हैं फ्यूजन और कैप्चर बीट, तो ये वेंट्रिकल टेकिकार्डिया, मोटा याद रखो। अब मैं दिखाता हूँ एक ईसीजी, ये एक ईसीजी इसकी डायग्नोसिस बना, हमारे हिसाब से रेट बढ़ी हुई है, रिदम रेगुलर है, क्यूआरएस 120 वाइड है, अगर सपोज कभी कभी ये 110 होता है, ये जो वीटी, ये वैरायटी की वीटी में 110 होता है, नैरो भी हो सकता है, तो तुम्हारी डायग्नोसिस ठीक है, या पी वेव दिख नहीं रही है तो या एवी नाटी या एवी आटी, सिंपल सी बात। बट कभी कभी थोड़ी निगाह देख लिया, एवी डिसोसिएशन मिल रहा है कि नहीं, इस लीड में अगर तुम ढंग से देखोगी, ढंग से यहाँ पी वेव दिख गई ना, और आगे 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 तो यहाँ पी वेव दिख, तो यहाँ एट्री अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल अपना कर रहा है, डायग्नोसिस क्या हो गई। वीटी में तो ऊपर नीचे डिसोसिएशन होगा, तो अभी कभी भी तुम दो चीज अगर ईसीजी में देखो, अगर नैरो ईसीजी, पहली तो बीच बीच में फ्यूजन मिल रहा है, देखो ब्रॉड के बाद नैरो बीच बीच, इसको हम लोग कैप्चर और फ्यूजन बीट कहते हैं,
और दूसरी ईसीजी में एवी डिसोसिएशन का फीचर मिल गया, तो इट इज अ वेंटिकल। देखो ये एक ईसीजी है ना, नैरो है, ये अगर नापोगी तो 100 मिलीसेकंड है, तो इसके हिसाब से ये एवी एनआरटी या एवी आरटी होनी चाहिए, डायग्नोसिस बनाई ठीक है। सबसे देखो हमने एक बात कही थी, नीचे की लीड में देखो क्या मिल रहा है, गोले में ब्रॉड ब्रॉड ब्रॉड, एक सडनली बहुत नैरो सा मिला, विच इज नोन एज फ्यूजन बीट और कैप्चर। अगर ऐसा कभी भी मिल रहा है तो तुम कह सकते हो यार ये तो वेंट्रिकल टेकिकार्डिया, बिकॉज आई एम गेटिंग अ फ्यूजन और कैप्चर। इतना मोटा मोटा बस ब्रॉड कॉम्प्लेक्स में याद। और ये वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की ईसीजी तो वैसे भी नहीं है, पेशेंट डेडी है। हमेशा याद रखो, जस्ट लास्ट स्लाइड, कोई भी टेकिकार्डिया है, पेशेंट हीमोडायनामिक स्टेबल है, सबसे पहले कैरोटिन मसाज दो, अगर नैरो है कैरोटिन मसाज से टेकिकार्डिया ब्रेक हो जाता है। नहीं होता है तो एडिनोसिन सबसे अच्छी है, एवीएनआरटी एवीआरटी के लिए द ड्रग ऑफ चॉइस इज एडिनोसिन। नहीं अवेलेबल है तो डेल्टिएजाम दे दो। लॉन्ग टर्म के लिए एब्लेशन करते हैं, जला देते हैं। प्लेटरल फिब्रिलेशन में आप याद रखो कि एवी नोडल ब्लॉकिंग एजेंट देते हैं, इससे हार्ट रेट कम हो जाए, वरना परमानेंट क्योर इज अब्लेशन। तो दिस इज हाउ यू एंड वीटी क्या, अगर वेंट्रिकल टेकिकार्डिया आ गया, अगेन अनस्टेबल है तो कार्डियोवर्जन करो, स्टेबल है तो ड्रग दो। और ड्रग क्या क्या अवेलेबल है, लिग्नोगेन, एमाड्रॉन, बीटा ब्लॉकर। एंड देन यू हैव टू फॉलो द पेशेंट की टेकिकार्डिया क्यों हुआ, हार्ट का फंक्शन खराब है तो और एडवांस ट्रीटमेंट। तो दिस इज हाउ यू डायग्नोस एट्रिया वेंट्रिकल टेक। तो गुड, तुमने तो सारे डायग्नोस कहा था 80% सब डायग्नोसिस बना लो। आज घर जाना, नेट में ईसीजी निकालना और अपनी डायग्नोसिस बना, ठीक है? कल तक आप लोग सब डायग्नोसिस बना। थैंक यू। अरे मैंने 1 घंटा पढ़ा दिया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ठीक है? बट जाना आज और नेट पे जरूर देख के बनाना। Sir, I sincerely thank and I express my gratitude for such a highly informative and interactive session with our students. Thank you so much for your presence over here. Thank you. Excuse me, Subhash sir, are you there?
Sir, please start the session. Subhash sir, please start the session. Sir, slide is also visible. Please start the presentation. Sir, your mic is off. Please turn it on. Excuse me, sir. Sir, you are not audible yet. Excuse me, sir. Subhash sir, you are not audible yet. Can you please start the session? Sir, we are doing the presentation from here. We have presented the screen. Yes, sir, you are audible. Sir, please continue. Can I share my screen, please? Just allow me once, if it is possible. Yes, sir, please. Sir, we have already presented your screen. Yes. I am ready with my screen. Please allow me to share my screen. Sir, it's already presented, sir. We have already started presenting your screen. Please, you may start the session. It would be nice if I could present from my side. If you can allow just once, if you can Okay, just sir. once. Okay, sir. I'll stop presenting. Let's try. I will please stop presenting. I will start. So, very good afternoon.
Is my screen visible to everyone? Hello. Yes, sir. Yes, it is visible. And Please can you see present the it next slide on. now? So please present it on slideshow mode. Sorry, slideshow mode. If Yes, possible. I'm on my slideshow mode now. Can you see my presentation? Yes, sir. Your presentation is visible. Okay, so I am on the second slide now. It says layout of presentation. Is it visible to everyone? No, sir. The first slide. We are on the first slide. Ah, okay, so we will go through these headings during this presentation. So now move to the next slide. Is it visible now? Understanding heart blocks. Hello. Yes, sir. You're audible. Please continue. Okay. So sorry for the delay and the internet connection was very slow here. So let's begin now without wasting time. So as we know that the heart acts as a pump and it pumps blood from the body to the rest of the organs. It collects the deoxygenated blood from the right side. It is collected on the right side of the heart and the right ventricle pumps it to the lungs. From where the blood is gets oxygenated and the oxygenated blood is they then returned to the left side of the heart and the left ventricle pumps it to the rest of the organs for oxygen to be delivered to the body. Sir, we are still on the first slide. You are still on the first slide. Okay. Sorry, then I'm stopping my presentation. You please share from your side then. Okay, sir. Sir? Yes, sir. Yes. Yes, it's visible to me. So we will go through the following headings during this presentation. We will understand what is heart blocks, and we will try to diagnose the heart blocks based on the ECG, and then we will try look at the management of these heart blocks, and finally we will conclude this session. Next slide, please. So the heart acts as a pump and it pumps blood to the rest of the organs. The right side pumps it to the lungs from where the blood gets oxygenated and it is returned back to the heart to the left side of the heart, and from there the left ventricle pumps it to the rest of the organs for the oxygen to be delivered to the rest of the body. Next. So actually the heart pumps acts like a pump only. Just you can see the animation on the right side of the screen. It shows that water is being pumped into the from the tube well. It is being pumped into the fields for irrigation. Similarly, the heart pumps the blood to the rest of the organs. Next. So this is powered by electricity. Electricity power is needed for the heart to pump and even for the artificial pump that we see on the right side. And when there is no power available, the heart stops. Next. This is the equivalent picture which shows the electrical circuit of the heart. The one on the left side shows the green colored circuit, which is the wires of the electrical circuit. On the right side, as you can see, the electrical circuit consists of a generator. From there, the electricity is transferred through wires or the cables, and finally it is delivered to the motor pump for the water to be pumped. Similarly, in the heart, there is a pulse generator, and from there which is the sinoatrial node, and from there the electrical current travels through these green colored wires, and from these wires it is transferred to the pump, which is the heart muscle. Heart muscle is the final pump which pumps the blood. It has the action, it has the power to deliver blood to the rest of the organs. So next. So the sinoatrial node acts as the pulse generator, from where the impulse is generated and is transferred through these green colored cables, and from there the electricity goes to finally to the heart muscles, from where the blood is pumped.
So if we see the sinoatrial node is the one which is generating the impulse. So if there is any defect which affects the sinoatrial node, so there won't be any generation of electrical signals. So the question arises whether the patient will immediately die or not. So the case is that the God has designed such a way that in case the sinoatrial node fails to generate an impulse, then the rest of the circuit, which includes the AV node and the His bundle and even the right and the left bundle branches, that can also generate impulses. But those Hello, excuse me, sir. You are not audible. so the main pulse generator remains the sinoatrial. Next, please. So this is the electrical circuit which shows that the electrical impulse is generated from the sinoatrial node. It travels through the electrical wires to the AV node where there is a delay. That is called the AV nodal delay, and from the AV node it is transferred to the His bundle. And from the His bundle it then divides into the left and the right bundle branches, and finally it travels to the Purkinje fibers from where the electrical signals is transferred to the heart muscles. Next. So this is the normal ECG. So to understand the normal ECG for us, so there is a P wave, there is a QRS complex, and there is a T wave which consists of a normal QRS complex, normal ECG. So in this, for understanding of arrhythmias, we can ignore the T waves and just look at the P waves and the R waves. The P wave denotes the depolarization of the atrium, and the R waves denotes the depolarization of the ventricle. So it is a relation between the atrial and the ventricular depolarization. So initially the atrium gets depolarized by the sinoatrial node, and later on through the AV node, the rest of the ventricle is depolarized, which generates the QRS complex. For simplicity, we won't say this as QRS complex. We'll just say this throughout this presentation as R, and the first wave as P. So in normal ECG, we can see that there is a P which is followed by an R wave, and there is a constant relation between the P and the R wave. The P is always followed by an R wave in normal conduction, and the PR interval is constant. This is called normal sinus rhythm. And for understanding of arrhythmias, it is very important to know that P and R should always be together for normal, for it to be called as normal. Next. So let's look at where all the heart blocks can occur. So it can occur in the sinoatrial node. It can also occur in the AV node. The His bundle can also, there can be a block there in the His bundle, and down below in the bundle branches, left and the right bundle branches, there can be block in the left and the right bundle branches also. For this presentation, we'll be focusing on the block in the AV node, which is the common terminology given for heart blocks. Heart blocks in general means that it can be located anywhere, but for sake of this today's discussion, we'll be focusing on the blocks which occurs at the AV node and look at the ECG patterns and try to diagnose AV nodal blocks. Next. So the sinoatrial node and the AV nodal blocks, they are also, there is a degree of blocks. There is a continuous degree and severity of the blocks, which could range from first degree to third degree, which denotes the severity of the blocks. The first degree being the mildest form of the AV node heart blocks, and the third degree being the most severe form. A good way to understand these degrees of block is to just look to understand it through the traffic lights. So the first degree AV block is colored here in green. So it is similar to the green signal that we see in traffic light, where there is where it means that all the signal will be going from across the AV node. So all the P waves will be followed by an QRS complex that is called a first degree AV block. We'll go in details of that. And in the second degree AV block, what will happen, as we know in traffic signal, the yellow signal means that we have to wait and watch and then move on. So in second degree AV block, what will happen that not all of the P waves will be conducted to the ventricles, and it will not all of the P waves will be followed by, some of the P waves will be followed by an QRS complex, but few of the P waves won't be followed by QRS complex. So there, in those cases, it is called a second degree AV block. It is further divided into type 1 and type 2 blocks, type 1 being the benign form and type 2 being the more sinister form of this second degree AV block. We'll go into details of this. And final is the third AV block, which is given here in red color. That means, as we know in the traffic signal also,
A red signal means everyone has to stop. No vehicle can pass across the traffic signal. So in third degree AV block, it means that all the periods will get blocked in the AV node and none of the signal will be transferred to the ventricles. So does it mean that the patient in third degree block will die immediately because none of the signal is getting transferred from the atrium to the ventricle? So the ventricles won't contract, so there will be no pumping of blood to the rest of the body. So as we had seen previously, it is not the case as like that. The God has designed some like the conduction fibers that we had seen below the AV node, which consists of the His bundle, the Purkinje fibers, and the left and the right bundle branches. They can also generate signals, but those signals will be weaker and their rate will be slower. But still, they can sustain life for some time, and they will. So these patients reach to the hospital by the time they have they went into third degree AV block. Still, they survive and they reach to the hospital and they receive treatment. Next, please. So this animation shows the first degree AV block. So in this one on the left side, we can see it is the normal conduction which is happening. The P wave has generated a signal. It is transferred to the AV node and finally to the conduction fibers to the ventricles. It is transferred. On the right side, we can see the first degree AV block. The signal has come from the P wave, but in the AV node, there is a delay. The conduction is getting slowed down in the AV node, and after that, the ventricles are getting activated. This is called as first degree AV block. Notice clearly that each of the P waves is getting transferred, the signal is getting transferred from the atrium to the ventricles. There is no block. Each of the P waves is getting transferred to the ventricle. So this is not second degree AV block, but just this is first degree AV block. So how to diagnose this on ECG? Next slide, please. So in this ECG, we can see that the ECG shows that the normal PR interval is whatever the normal PR interval, it gets prolonged. That is based on that on the prolongation of PR interval, we can diagnose first degree AV block. Next slide, please. So this is the first degree AV block. In this ECG, we can see that there is a P wave which is followed by an QRS complex, which is we can tell as R wave. So each of the P is followed by an R. Each of the P is followed by an R, but the PR interval is prolonged. So what is the cutoff for this normal PR interval? So normal PR interval is 200 milliseconds, which is this small box you can see, which is in dark red color. So if the PR interval is more than this small box, which is more than 200 milliseconds, in this case, the PR interval is 370 milliseconds. So this is first degree AV block. But clearly notice that each of the P wave is followed by an QRS complex, and there is but the PR interval is prolonged. So this is first degree AV block. Next slide, please. So now coming to the second degree AV block, we'll first discuss the type 1 AV block. So type 1 second degree AV block consists of that the P wave will be conducting through the AV node, but gradually the conduction will get slower till one of the P waves is not conducted to the ventricles. Then one of the P waves will get blocked, and finally again this circle will start. So some of the P waves will get transferred and one of the P waves will get blocked. This is called a second degree type 1. So how to diagnose this on ECG? Next slide, please. So in this ECG, we can see that there is a gradual prolongation of the PR interval. You see the initial QRS complex, and it is followed by preceded by a P wave, and the PR interval is short. The next cycle, you can see that the PR interval has got prolonged, and the third bit that has come, the PR interval has got further prolonged. The fourth bit, you can see that the P wave has come, but there is no following QRS complex. This is called as a blocked P wave. The QRS complex is not there after this P wave. So this is type 1 AV block. There will be gradual prolongation of PR interval. Following that, one of the P waves will not get conducted and it will be blocked at the AV node level. And finally, again, this cycle will start, and then the next P wave that you see after the blocked P wave, it has a PR interval which is similar to the first P wave. Next slide, please. So in this ECG, we can see it is type 1 second degree AV block, which is also called as Movitz type 1 AV block. And in common terminology, it is also called as Wakey-Back. So how to diagnose this on ECG? You look at this ECG, it is marked for you for your benefit. So the first P wave is followed by first QRS complex, but the PR interval is short.
The next P wave is followed again by a QRS complex, but it is there is prolongation of the PR interval. The PR interval gets further prolonged in the third bit, and the fourth bit does not get conducted. So this is type 1 Mobitz second degree AV block, which is also called as Venki back. So in this case, this cycle will get on repeating. So this is called as group beating. In based on this, you will see there are groups of QRS complexes followed by there is a gap in between, and again there are groups of QRS complexes and there is a gap in between. So this is called in common terminology as group beating. The number of QRS complexes will be one less than the number of P waves in each of these groups. And it is referred as 4:3 AV block, in which 4 denotes the number of P waves and 3 denotes the number of QRS complexes. And always the QRS complexes will be one less than the number of P waves. So this is 4:3 AV block. And this is type 1 Mobitz second degree AV block. Next slide, please. Now coming to the second type 2 second degree AV block. In type 2 second degree AV block, the P wave will get conducted through the AV node normally, and suddenly one of the P wave will get blocked. It's not like in type 1 where there will be gradual prolongation of PR interval. There will be sudden blockage of the P wave. It will be more clear on the ECG. Next slide, please. So in this ECG, you can see that there is a P wave which is followed by an R wave, and the PR interval is short. The next PR interval that we see, it is also short. And after that, the third P wave, that is not followed by an QRS complex. So that has got blocked. So why it is not type 1 second degree AV block? Because you can see note here that the PR interval is not getting prolonged. It is constant, it is same, it is remaining same throughout, and suddenly one of the PR has got blocked. When there is no prolongation of preceding PR intervals, PR interval remains same, and suddenly one of the PRs does not get conducted. It is called as type 2 second degree AV block, and it is a more dangerous form of AV block, and it requires treatment. And the second thing to be noted is that one of the point to differentiate between type 1 and type 2 is that type 2 can have a broad QRS complex. This is a narrow QRS complex, and now you can see that the QRS complex is broad and broad. So it is not a golden rule, but usually type 2 AV block will have a broad QRS complex. Next slide, please. So in this ECG, you can see clearly that the first P wave is followed by a R wave, and the PR interval is normal. And again, the second P wave is followed by the second QRS complex, and it is also the PR interval is same as compared to the previous one. And the third wave has got blocked. So this is type 2 AV block because there is no prolongation of the PR interval preceding to the blocked P wave. Next slide, please. So this type 2 AV block, in this ECG, we can see that you see in the QRS complexes in the middle, there are two consecutive QRS complexes which are having a P wave preceding those QRS complexes, and the PR interval is same for both the QRS complexes. But the next P wave has got blocked. And you see the following P wave, it has also not got conducted. So there are two consecutive P waves which are not followed by a QRS complex. And the third P wave that has come, it is again followed by a QRS complex. When there is two or more consecutive P waves which are not followed by a QRS complex, this is called as high grade AV block. It is also a type of type 2 AV block. And as we had already discussed previously, one less than the number of P waves. But here there are more number of P waves, and there are just two QRS complexes in between these four P waves. So the QRS complexes are two less than number of P waves. So this cannot be type 1 second degree AV block. This has to be type 2 second degree AV block. And this is a high grade AV block because two consecutive P waves are not followed by a QRS complexes. So this long pause is there in between, in which the ventricles has not pumped blood to the rest of the organs, and this patient can land up into syncope if this interval gets slightly more prolonged. Next slide, please.
Now coming to third degree AV block, which is the severest form of AV block. So this is complete. This is also called as complete AV block, in which none of the P waves get transmitted to the ventricles, and all the P waves get blocked in the AV node. So this is called as third degree AV block. This is called as complete heart block. I would like every student to note this one and look at the ECG and diagnose complete heart block based on ECG. No student should miss a diagnosis of complete heart block, because complete heart block is a life-threatening situation. It is an emergency and requires immediate treatment. So everyone should be able to diagnose complete heart block after this class. Next slide, please. So how to diagnose a complete heart block on ECG? So this is, as you can see, the P waves have been marked for your benefit and in violet colored arrows. So there are regular P waves coming here, and the number of P waves are much more than the number of R waves. You see, QRS complexes, there are just 3 QRS complexes, and there are 8 P waves in between those QRS complexes. So the number of QRS complexes are much less as compared to the number of QRS. And look at the PR intervals. The PR interval here is very prolonged, and the next PR interval is very short. And again, there is an intermediate PR interval. So the PR interval is variable. There is no constant relation of the PR interval. So in third degree AV block, there will be variable PR interval. This is very important sign to note for diagnosis of third degree AV block. And also you note that the QRS complexes are much less than the number of P waves, and there is no relation between the P waves and the QRS complexes, because the P waves are firing from the sinus node, but they are not getting connected to the ventricles. So these QRS complexes are not because of the conduction through the AV node. These QRS complexes are arising from the secondary pacemakers. This could be in the His bundle, or it could be in the left or the right ventricle bundle branches, or it could be in the Purkinje fibers. And if you look at the rate of these QRS complexes, these are very slow. So these are not reliable. These cannot sustain life for a long duration, and this can suddenly stop anytime, and the patient can have a sudden cardiac death anytime. So immediate treatment is needed. Next slide, please. So if you look at this animation, it will just give an idea about normal conduction and complete heart block. So the P and R are in synchrony in normal conduction. They move in synchrony. But in third degree AV block, the P wave is coming from the sinus node, but the R wave is being generated by other pacemaker, which is in the ventricles. So there is no relation between this P and R intervals. They are out of sync of each other, and the P waves are moving much faster as compared to the R waves, because the P waves arises from the sinus node, and it has a much higher active pulse generator activity as compared to the other small generator from the ventricles. So the number of R waves are much smaller, and they are out of sync. Next slide, please. Now kindly go to previous slide, please. Kindly go to previous slide, please. And previous slide, one more slide back, please. Just let us revise this ECG once more to be clear and never to miss diagnosis of complete heart block. So just for sake of completion, if somebody asks that why this is not type 2 second degree AV block, there also we have said that there will be a number of PR intervals, and number of PRs can be much more than the number of PR complexes. But look at the PR interval. The PR interval are variable. There is no fixed PR interval. In type 2 AV block, the second degree AV block, the PR interval will be fixed, and suddenly one of the PRs will get blocked. But here the PR interval is variable, so this cannot be type 2 second degree AV block. And if someone asks why this is not first degree type 1 second degree AV block, so look at the PR intervals again. There is no gradual prolongation of PR interval. So in say type 1 second degree AV block, there will be gradual prolongation of PR interval, which is not there in this ECG. And also we had told in type 1 second degree AV block that the number of QRS complexes will be just one less than the number of P waves. But here there are much more P waves as compared to the number of QRS complexes. So again, it cannot be type 1 second degree AV block, and it is definitely not first degree AV block, because not all of the periods are followed by equivalence complex. Next slide, please. Next slide. This I think we can skip this one because it would consume more time. Next slide, please.
Next slide. Next slide. Yes. So now coming to causes of heart blocks. Whenever you see heart blocks, whether it is first degree or third degree complete heart block, always look for what is the cause of heart block. So the first four important causes are hyperkalemia, then cardiac ischemia, which is heart attack. Usually patient comes in heart attack and they can have the various degrees of heart blocks. It could be related to beta blockers or calcium channel blockers or digoxin, which causes rate control, which are used for rate control in many of the heart diseases. But if there is an extra dosing of these drugs, that can lead to various degrees of heart blocks. And also CNS assault like CVA, it is a common cause of heart blocks. The other causes include hypothermia or hypothyroidism or any infection of the heart. Sleep apnea is an important cause. Post-valve surgeries and other vagal responses that can also cause heart blocks. But most important are these important first four causes, which are the most common causes that we see in practical experience. Next slide, please. So this is an important ECG. Just let's go through this ECG and analyze what is the diagnosis of this ECG. So just next slide, please. So in this ECG, we are seeing lead 1, lead 2, and lead 3. So in this lead 2 and lead 3, we can see there is an ST elevation present. And in lead 1, there is reciprocal ST depression. So this is an ST elevated myocardial infarction in the inferior lead. So this is inferior myocardial infarction. And inferior myocardial infarction is usually very commonly associated with heart blocks. Next slide, please. So now look at the P waves in this ECG. We have marked all the P waves in this ECG, and you see there is no constant relation between these P waves and the QRS complexes. See the P waves, they are much more than the number of QRS complexes. And next slide, please. Next, please. Next. And see, look, I have marked the PR intervals for you. Look at this. The PR interval is variable. There is no fixed relation between the P and the QRS complexes. So there is a complete heart block present. This is a case of inferior myocardial infarction with complete heart block. And this is, next slide please. And this is an important cause for reversible cause of complete heart block. If you revasculate this patient by thrombolysis or by primary PCI or maybe ISCABG. Many a times we have seen that this complete heart block resolves and the patient resumes his normal sinus rhythm and he does not require a pacemaker. Next slide, please. So in the management of heart blocks, always look for reversible causes, and these all four causes that we see in the top four, those all are reversible causes. If you treat hyperkalemia, heart blocks will improve. We have seen in the previous ECG, if you treat ischemia, heart blocks can improve. If you stop these medications, then like beta blockers, calcium channel blockers, again the heart blocks can improve. So if you treat hypothermia and hypothyroidism, again heart blocks can be improved. So our point to be noted is that, next slide please, always look for reversible causes and try to treat those causes. Most likely this will revert, and if there is no reversible cause, then definitely you have to go for other measures. Next slide please. So the management of heart blocks, it depends upon the degree of heart block. So first degree AV block usually does not cause any symptoms and does not require any treatment. Same goes for usually the second degree type 1 AV block, which is also called as Benki-Back or Movitz type 1 second degree AV block. These two entities usually does not require any treatment, and they usually does not cause any symptoms to the patient. But you have to be careful and you have to avoid drugs which can further aggravate the heart blocks, and always look for reversible causes in these cases. And the type 2 second degree AV block and type 3rd degree AV block, which is also called as complete heart block, this will require treatment. Next slide please. Next slide please. Next slide. So what is the initial management of these patients? So whenever you see a patient with heart blocks, usually they will have a very low heart rate, and the immediate thing you have to do, you can give an atropine, 1 vial stat IV bolus, which consists of 0.6 mg. Usually this will increase the sympathetic activation, and through that it will try to increase the heart rate. It is just a tide over thing which will help you to gain some time to treat the patient.
And also you can use isoprene infusion, which usually we give at 0.02 to 0.06 intravenous bolus, followed by 2 to 20 microgram per kg per minute, and we can up titrate the infusion rate based on the heart rate. And other life-saving procedures that you can do bedside are, you can start a transcutaneous pacing, in which pads are placed either on the anterior side, or one pad is placed on the anterior and the other on the back side. But this is a painful thing because the electrical signal passes through the muscles also, and it causes a pain to the patient. But this, in emergency cases, we can use this also. And the next thing that you can put on bedside is a temporary pacemaker. Next slide, please. After giving these drugs and putting a temporary pacemaker and looking for reversible causes, if you don't find anything, and if there is say type 2 second degree AV block or third degree AV block, then you have to give a pacemaker to the patient, which could consist of a single chamber or a dual chamber pacemaker. The single chamber pacemaker is usually placed in the right ventricle, and the double chamber pacemaker consists of two leads. One is placed in the right atrium and the other is placed in the right ventricle. Next slide, please. So other special interventions that are being done nowadays are his bundle pacing and left bundle pacing. These are physiological pacing maneuvers, and these have shown to be reduced chances of heart failure and atrial fibrillation. And the upcoming methods are leadless pacemakers, in which there is no lead placed here. All the generator and the pacing is done through this capsule, which is placed inside the right ventricle. Next slide, please. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you for your time. This was a very wonderful and informative session for us. Thank you for joining us, sir. Thank you for joining us. Is there any questions for the students? Please to ask. Blocks, first degree, second degree, type 1, type 2, third degree. Please ask. Yeah. What is CNS effort in the college? श्रद्धा पेसमेकर का नॉमेनक्लेचर भी पूछ लियो यार. What is the CNS assault in the fourth call? CNS assault. CNS assault. Explanation. What is that? Excuse me. Hello. What's the question, please? CNS assault टीम भी बोला सर, आपने बोला था. Students want to know what is that? The voice is not clear. Sorry. Can you repeat the question, please? Sir, CNS. What do you mean by CNS assault? CNS assaults. Okay. CNS assaults is which you commonly call as stroke or brain attack, which is consists of an it could be hemorrhagic stroke or an ischemic stroke, in which usually the patients have some degree of sympathetic drive gets lost, and there is AV block can occur because the sympathetic drive is the one which drive the pulse generator, the sinus node. Also, there could be Cushing reflex, in which because of the bleeding inside the cranium, there could be raised intracranial pressures, and because of the Cushing reflex, there can be bradycardia, and all these causes are reversible. If you treat the if you decrease intraventricular pressure, intracranial pressure with the drugs or decompression craniotomy, usually these heart blocks get resolved. Okay, sir. Thank you so much. Any other questions? Anybody else? Hello, Dr. Subhash. Madam. Yes, thank you so much for the most informative session you have taken, and we are very grateful to you. Thank you so much. Madam, and thank you And for you have been our student, now our AIIMS student. Sorry for the trouble that No issues. you had to face because of the presentation delay. Issues. We are very grateful to you. Thank you so much. Thank you so much, madam. So I would like to thank all the speakers of today's update, those who have shared their words of wisdom and experience. And I think all of you enjoyed all those sessions, no? And all the sessions were very informative
And fruitful, when I call it, it would be fruitful. It would be fruitful because of you, if you were attentive and you have learned. Okay. So now we will stop here, and you have to go to new LT for your lunch. So we are giving only 15 minutes. जल्दी करना पड़ेगा बेटा, because we are running short of time. Late शुरू हुआ था, and the reason is you people only. ठीक है, चले जाके आप न्यू एल टी जाएंगे. फोर्थ ईयर स्टूडेंट वुड बी देयर. प्लीज डोंट मेक नॉइज, आराम से खाना खा के आ जाओ आप लोग. ठीक है. एंड डोंट कीप एनी वैल्यूएबल थिंग इन स्टूडियो, अपने साथ लेके जाइए. हाँ, अटेंडेंस होगा बेटा. प्लीज पोस्ट लंच अटेंडेंस होगी. You will get certificate when you are, please, all the sessions would be over. तो आपको शाम को तभी सर्टिफिकेट मिलेगा जब आपकी अटेंडेंस होगी.
to this event. Uh, so I request Principal Ma'am to address the gathering. Ma'am, please. Good afternoon, all of you. Organized for the first time workshop in College of. We're all very fortunate to attend this workshop. Morning, you have attended the theoretical sessions. How did you find the sessions? Was interesting, informative, and I got very good feedback that the doctors who were taking the classes, they said you were able to answer most of the questions which they were asking. So that way, we are very happy that you are able to answer very well. That means you have already learned about ECG, all the concepts of ECG. And now we are organizing this program so that you will have focused attention. Because ECG is one of the area which is practiced in even in a small hospital. So wherever you are going to be working, you must have the skill of interpreting the ECG, and this skill might help a person who is dying in the remote area or in the uh, time, the golden minutes. We say the first few minutes are called as golden minute when somebody is going into cardiac arrest. In that golden minute, if you are able to recognize and intervene, you will be saving the lives of the patient. So that is why this course is very, very important. And one simple topic ECG, you will see when we were scheduling, we felt one day is not sufficient. How we are going to finish in one day? But still, no, we have to give equal weightage to all the other skills. So we could not spread it for more number of days. Otherwise, this course is worth even hosting it for 1 week. You can learn in depth and you can learn the interpretation. And I must be thankful to our faculty members who were highly interested when I said the idea. They immediately accepted and took all the pains to organize this event. You may be wondering why madam is telling pain, my specialty is obstetrics. Always pain results in a smile at the end in my specialty. So this pain, what the faculty have taken, will definitely result in the smile of all of you at the end of the day. And because they have to get the speakers, they have to fine tune the topics, they have to book the venue, they have to organize lot of other logistics arrangements and preparation of the content, how to deliver it to you in an understandable manner because you're all undergraduate students. So all these, no, like crafting something, it is an art. This course is like an art they have created. The background, the shaping, the fine tuning, the coloring. I must really appreciate Neelima. Even to prepare the flyer, how many changes, how many times, how many corrections, and every small thing. I must be available most of the time. I am also busy with administrative responsibility. So getting appointment from me, discussing with me, finalizing with me, getting approvals, getting the coordination of the faculty members, and she has also contacted all the practicing nursing officers from the clinical area because their wisdom is very important. They are day to day, they are practicing. They will be sharing their practical experience. So, this is the model, whichever program we are organizing in College of Nursing, we are following. That is, we will have medical faculty, and the nursing officers. So, why means the students get the wisdom of all of them. You get the knowledge of the medical faculty, you get the knowledge of the nursing faculty, and you get the practical wisdom from the nursing officer. So this way you will be able to get the best learning content from all of them, and also it creates a kind of what to say a multi-pronged approach for education. And when you go to the clinical area, all the nursing officers, they will continue their teaching because they were invited here to teach. So when they see you, they will recognize that teaching is also part of their integrated responsibility. So they will also continue to handhold all of you when you are posted in that area. So I am sure this course will be helpful for all of you to learn about the basics of EC.
and what all can be recognized as the normal components of an ECG. First of all, we should know normal component. Then you should know what are all the deviations which may happen, why it is happening, how you will within. I worked in ICU, CCU in Kuwait Army Hospital. So this is one of the very favorite subject, because when we were doing night duty and all, we used to see the central monitor. The moment we tack, you have to run and finish the interventions within seconds, otherwise you will lose the patient. So all these heart blocks, recognizing them, we also, this topic is also worth enough to convert it into a game. I will try to talk to some gaming people, and we can make it as a game. And if it is app based, you can play the game and you can identify, so you must be having some or other game in the mobile, like Sudoku or Candy Crush Saga or something, and you are addicted. um, if you're not having, it is good. But then, if similar type of game is there where you have ECG to find out what it is, no, then ABG values, all the other critical care nursing skills, I think automatically you will be playing and learning. So that also we should think of. So I'm so thankful to the nursing faculty members, especially Neelima, who is the organizing secretary of the event, and Dr. Seema and Miss Sibi, Hansaram. All of them have taken lot of effort, enjoy learning this course, and you can also give ideas, because when you are undergoing the course, so you will have some feeling in the corner of your mind, oh, this should have been there, or this should have been like this should have been like that, why not this? Whatever comes to your mind, please share it with us. So we want to continue this for all the batches in future. So with all your inputs, this course will get further refined to deliver at its best. Thank you all. So have a great learning. Thank you. Thank you so much, ma'am, for addressing this event and blessing this event with your presence. Thank you, ma'am. Please stand up for a pic. You guys can join here.
Please be seated. So we'll be moving forward with the next section, which will be taken by Mr. Sajin Abdul Kader on analysis, interpretation, and management of ischemia and infraction. So Sajin sir is actually nursing officer at AIIMS. He told to tell only this much, but I still remember he has taken 2 years back when we were in second year. He has taken BLS session with us. I am not able to forget the way he teach. I always looked up to him, and I have always thought if I become a teacher, ever become a teacher, I should be able to teach like him. So I invite Sajjan Bhaiya to take the class. Afternoon. Irreversible, we call it infarction. And otherwise, if it is reversible, we call it ischemia. Okay, so let's start. So my topic is ST changes and myocardial infarction. So we'll begin with infarction. We'll be also discussing ischemia. अच्छा बंद कर रहे हो? ठीक है, fine. Lights on कर दो पीछे, because I want to interact with them. Okay. So yes. So सबसे पहले we are going to discuss about ST segment, right? So ECG में ये if this is a random strip
of ECG, which one is the ST segment here? Do I have a pointer here? इसमें pointer है, excuse me. कहाँ गया भैया, कहाँ गया? उसको एक बार बुलाना. हाँ, इसमें ST segment कौन सी है? The first one that you see before a QRS complex is a P wave. Then you have a QRS complex. Then you have T wave. तो ST segment कहाँ आएगा? Between, pointer please, हाँ, between S and T wave. So when you say between S and T, it is at the end point of the S wave from the beginning, or from the end point of the S wave to the beginning of the T wave. Now this end point of S wave in ECG is also called as a J point. J point in the right. So you measure ST segment from the end point of, thank you so much, from the end point of the S wave to the beginning of the T wave. So that is an ST segment, right? Got it. So what does an ST segment represent? It represents the early repolarization phase of the ventricles, right? Okay, so this is ST segment, number one. Now, my next question is that, are all ST segment changes that you see, either elevation or depression, जो भी हो, are they all related to infarction or ischemia? Answer नहीं मिला. Are they all related to infarction or ischemia? No. तो कुछ और भी हो सकता है ना? Which means we have some criteria to be met to qualify any ST segment change to be related to ischemia or infarction, है ना? तो हम वो सीखेंगे पहले. सारे ST changes क्या नहीं है? Infarction, ischemia नहीं है. There are some specific criteria. Okay. So number one, the ST segment elevation. We'll talk about two things. One is ST segment elevation, and the second thing is ST segment depression. Right. So दो चीजें हैं. तो ST segment elevation, जब हम elevation बोलते हैं, कब बोल सकते हैं elevation? When can we say someone is tall and someone is short? We need a reference point. We need something to refer with. राइट, तब भी हमें बोल सकते हैं. एक रैंडम पर्सन को, एक मतलब अकेले एक बंदा को मिलेगा तो कैन वी से टॉल और शॉर्ट? नो, वी नीड समथिंग टू कंपेयर. So similarly, when we say ST segment elevation, we will be comparing this level of the ST segment with something else. So what is that something else? Isoelectric line. So where is isoelectric line in this ECG? Between? Yes, please. Between end of P wave and beginning of QRS complex. That is an isoelectric line. I agree. You have another piece of isoelectric line, portion of isoelectric line between S and T. That is another piece of isoelectric line. And you have a third one, which is between the T wave and the P wave. So they are all isoelectric line, I agree. But which one is the baseline? Are they all baselines? If they are all baselines, then how do we compare ST segment? Yes, exactly. Thank you so much. Your name? Shraddha. So Shraddha said it is between T and P, right? So that is the baseline. The TP segment in the ECG is the baseline. So you compare ST segment, you compare PR segment with the baseline, right? Now, when you compare, one criteria is ST elevation and second is ST depression. So ST elevation होना चाहिए. ST elevation कितना होना चाहिए? लिखा है कितना होना चाहिए? In case if it is lead V2 or V3, it has to be more than 2 mm, right? More than or equal to 2 mm to be significant. Or in case of any other leads in standard 12 lead, it has to be more than or equal to 1 mm to be significant, right? Now, is that the only criteria? No. You should find significant ST segment elevation. When I say significant ST segment elevation, it is more than or equal to 2 millimeters in V2 and V3, or more than or equal to 1 millimeter in any other lead. Okay, we'll discuss about posterior lead, which is different. Usme alag criteria hai.
So significant ST segment elevation should be seen in at least 2 contiguous leads. Contiguous leads means anatomically adjacent leads. So what are anatomically adjacent leads? Can you give me some examples of anatomically adjacent leads? V1, V2 anatomically adjacent है. Why? Because क्यों? हम इसको हाँ वो same जगह पे है. But that's not the sense it makes. You are correct. V1 and V2 are anatomically adjacent because they both represent the anterior wall of the heart. They both represent the septum of the heart. In that way, they are anatomically adjacent. ठीक है? So, can you give me another example? Yes, louder, please. V5 and V6. दोनों यहाँ है ना? V5 and V6. So, V5 and V6 represents which area? Which anterior है, lateral है, posterior है. Lateral wall को एक low lateral भी है, high lateral भी है. So which area it represents? V5, V6. Low lateral area. So they are anatomically adjacent. Lead 2, 3 and AVF. They are all representing the inferior wall of the heart. They are anatomically adjacent. But at the same time, lead 1 and 2, are they anatomically adjacent? Lead 1, lead 2, are they anatomically adjacent? No. Why? Lead 1 represents which area? Upper lateral, high lateral area. Lead 1 represents high lateral area. And lead 2 represent inferior wall. Are they anatomically adjacent? No. So what is the criteria? We need ST segment elevation. Significant level of ST segment elevation in at least 2 anatomically adjacent leads. So when you say inferior wall MI, you should have at least in lead 2 or lead 3 or in 3 or AVF or in 2 and AVF. You need it as such. Minimum 2 adjacent leads में चाहिए. So that is one criteria. And when you talk about ST depression becomes a part of myocardial infarction in form of a reciprocal change. So reciprocal change के बारे में morning में बताया था वाणी मैडम के session में, right? What is a reciprocal change? Mirror image कहाँ मिलेगा आपको? Posterior में मिलेगा. किसका mirror image? Anterior का mirror image. और posterior का mirror image कहाँ मिलेगा? Anterior. Inferior का mirror image कहाँ मिलेगा? High lateral. Because heart doesn't have a superior wall. Heart को superior wall है? नहीं, superior wall की जगह पे क्या है? You have all major vessels. So heart doesn't have a superior wall. So instead, what do you have? You have a low lateral wall and it is curving like this, right? So a low lateral and high lateral. So anatomically opposite to inferior is high lateral, right? So high lateral and inferior are anatomically opposite. Anterior and posterior are anatomically opposite. So anterior पे ST elevation मिल रहा है, तो posterior पे क्या मिलना चाहिए? ST depression. High lateral पे ST elevation मिल रहा है, तो posterior पे क्या मिलना चाहिए? Inferior पे क्या मिलना चाहिए? अब समझ में आया what is reciprocal change, what is mirror image change? Yes. So this is also another criteria in diagnosing myocardial infarction. And when we talk about ST segment depression, how much is the measurement? कितना होना चाहिए? 2 mm चाहिए? 1 mm is enough. Okay, 1 mm is enough. Now, ST segment depression can be in 3 different ways. It can be either upsloping, downsloping, or horizontal. अब जो XT segment है, I will show you examples. जब वो नीचे आएगा, वो 3 तरीके में नीचे आ सकता है. एक जैसे है वैसे ही नीचे आ सकता है, which is horizontal ST segment depression. Second is टेढ़ा होके, मतलब upsloping. J point can come down and the connection with the T wave is up. So this is upsloping ST segment. The next is the other one, downsloping ST segment. J point is in the baseline, but it is coming down. So इसमें से the upsloping ST segment depression is not significant. It is not related to myocardial infarction, right? So what is important is either it should be horizontal or downsloping ST segment depression with minimum 1 millimeter of variation from the baseline. So similarly, we have T wave also, T wave change also. We say 1 millimeter T wave flattening or T wave inversion should be there. Again, both these changes should be in at least in 2 adjacent leads. So criteria क्या समझ में आया? So now you know what is an ST segment, and second thing you also know
कि एसटी सेगमेंट में वो चेंज है उसको एमआई से कैसे रिलेट कर सकते हैं. दीज टू थिंग्स नाउ यू नो, राइट? साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, समझ में आया? ओके, सो नाउ लेट अस सी इन एन एमआई how does the ECG change over time. Now a patient is coming or a patient at the home is complaining of chest pain. Just now onset of chest pain हो गया, ठीक है? Now if you get an ECG of this patient done, what is the ECG change that you have? And if you get an ECG done after few hours of the onset of pain, वो फिर कैसे दिखेगा? एक दो दिन के बाद ECG कैसे दिखेगा? This is what being explained here. So the very first ECG change is something called as a hyperacute T wave. The first change to happen in the ECG is a hyperacute T wave. T wave बड़ा हो जाएगा. जैसे as you can see here. This is a normal T wave. This is a normal T wave. P wave हो गया, QRS complex हो गया, and then you have a very huge T wave. You have a hyperacute T wave. Have you heard about hyperacute T waves? इसके पहले कहीं पे भी in any conditions or electrolyte imbalances or something like that? Hyperkalemia. तो hyperkalemia में भी hyperacute T waves होते हैं. तब question आया, क्या question आया? तो differentiate कैसे करेंगे? How do we know is this hyperkalemia or is infarction? So the answer for that, in hyperkalemia, the hyperacute T wave is symmetrical. Symmetrical मतलब ये देखा आपने, इसका जो ascending limb है, ऊपर जो limb जा रहा है T wave का, that is more slopy, and the descending limb is sharp. So this is asymmetrical. So in infarction, the hyperacute T waves are asymmetrical. In hyperkalemia, the hyperacute T waves are symmetrical. Symmetrical. The upward limb and the downward limb looks same. समझ में आया? So this is the first change that you see in ECG. The next change that you see in ECG is a very, very predominant ST segment elevation, as you can see here. Can you see that? ST segment is well elevated, and here starts the T wave, and the end portion of the T wave is inverted. We call it terminal T wave inversion. And you can also see a very, very prominent Q wave. इतना बड़ा Q wave normally दिखते नहीं है. ठीक है? When you see a very, very prominent Q wave, that is also consistent with MI, or infarction is setting in, or irreversible injury is setting in. So these three things you see next. One is a very prominent ST segment elevation. Second is inversion of the end part of the T wave. And third is you will see a very prominent Q wave. So Q wave का मतलब ये है कि muscle has started undergoing irreversible damage. So very often people come to the emergency department, chest pain हो रहा है, कब शुरू हो गया? कल रात को. कब आ रहे हैं? आज 12 बजे. ठीक है, ECG ले लिया, you will see big Q waves, and the resident immediately shouts, आप इतने देर क्या कर रहे थे? Because problem क्या है? Lot of muscle has already undergone damage. Now this patient will either go into cardiogenic shock or he'll develop heart failure. Right? So salvageable area of the muscle is reduced. So that is a problem with the Q wave. So Q wave you should watch with caution. Right? Q waves, large Q waves like this, especially in the anterior leads. Anterior leads में normally Q waves दिखते नहीं है. So if you see large Q waves like this, which means the muscle has already undergone irreversible damage. समझ में आया? So this is the second change. And the third change, after several days, the ST segment comes to normal. The T wave becomes normal. But the Q wave, the damage that has happened to the Q wave remains same. वही होता है, वो जो स्कार, परमानेंट स्कार होता है ना दिल में, जो फर्स्ट लव का, वैसे रह जाते हैं जिंदगी भर. ठीक है? सो दैट इज Q wave. समझ में आया? अभी Q wave भूल जाएगा नहीं. So this is how ECG evolves. नहीं है ना? Because first you should forget that. Okay, now before I start giving you samples of different varieties of MI, I want you to be familiar with this, lead orientation. Okay.
ये कंसेप्ट ऑलरेडी आपको समझ आया है? You are familiar with? So who can explain? Tell me. Lead orientations. Yes, you said yes. Yes, please try. V1, V2, V3, V4. Which all areas of the heart is this facing to? These leads. It's very clear from the animation. Please. ये कौन सी wall है heart का? Anterior wall. Right. It's very obvious. Right. It's the anterior wall. So V1, V2, V3, V4 is anterior wall. Yeah, sure. Then lateral wall. See. V5 and V6 lateral wall hai. So lateral wall is extending from the apex to the great vessels. So it has got a lower half and an upper half. So which half of the lateral wall is V5 and V6 covering? Lower half. So upper half में कौन-कौन सी leads है? See? 1 and AVL. So this image you should have in your mind. So 1 and AVL is covering the upper half of the lateral wall. V5 and V6 is covering the lower half of the lateral wall. V1, V2, V3, V4 is covering the anterior aspect of the heart, anterior wall of the heart. Specifically V1 and V2 are, yes, septal. And then on the right side you have AV, R, and inferior कौन-कौन सी है? I will not say. 2, 3, AVF. Is that clear? Can you see that? Yeah. So अगर ये concept सही हो गया तो then we can move on to the ECG samples. Right. Yeah. Inferior wall you have not seen. What is that? 2, 3 AVF. Okay. So, okay, I'm not going to the localizing changes now because I think I can directly go with ACG because you are already familiar with the areas which each lead represent. Now, when you start analyzing an ECG 12 lead rhythm strip like this, okay, so you have patient presentation before you. Okay, 65-year-old man, non-case of diabetes and hypertension since last 10 years on irregular treatment, had a history of PCI 5 years back, coming to the MSc with chest discomfort, lightheadedness, and cold sweats. So what are you suspecting from the symptoms and presentation? It's very obvious. Classic signs. क्या है? Okay, thank you. MI है ना? So what is the area of the ECG strip that you have to focus on? ST segment. So you have a 12-lead ECG with you. Now you start assessing the patient from analyzing the ECG from lead 1. So lead 1 you see ST segment कैसा है? Baseline भी देखो, ST segment भी देखो. Excuse me. Is it elevated? Is it normal or depressed? Definitely elevated. कितना elevated है? कितना mm elevated है? Definitely more than 1 mm. Yes. Lead 1 में 1 mm काफी है या 2 mm चाहिए? Don't get confused. 2 mm कहाँ है? कौन सी लीड में है? V2 and V3. बाकी सारे लीड्स में 1 mm काफी है. अभी लीड 1 में कितना mm elevated है? 1 mm elevated है? Yes. So is this clinically significant? Yes. So lead 1 में ST segment है. क्राइटेरिया फुलफिल हो गया? MI. और क्या क्राइटेरिया चाहिए? 2 anatomically adjacent लीड में होना चाहिए. So lead 1 का anatomically adjacent लीड कौन सी है? I have shown you the animation right now. Yes. जोर से बोलो. 5, 6 are low. AVL. You're sure? AVL है ना? तो लीड 1 में ST एलिवेशन है तो इमीडिएटली नजर कहां जाना चाहिए? AVL में जाना चाहिए. AVL में देखो, do we have ST segment elevation? Very subtle. We are not convinced. We are not convinced, right? Okay, fine. So we are doubtful about lateral wall. Okay, now go. नीचे आ जाओ. Lead 2. Do we have ST segment elevation in lead 2? Lead 2 में ST segment elevation है तो कहां देखना और कहां देखना है? 3 and AVF. 3 and AVF में ST segment elevation है? Yes. So what do that meet the criteria? Yes. So what wall MI is this? Inferior wall MI. Happy? खत्म हो गया? और कुछ देखना नहीं है और कोई वॉल्स नहीं है हार्ट में?
Your diagnosis is not complete until and unless you read the entire ECG, because you may have problems with other walls also. Okay, so inferior खत्म हो गया, lateral खत्म हो गया. Which क्या pending है? Anterior. Normal ECG में 12 ECG में posterior मिलेगा. Normally V7, V8, V9 record करते हो? No, we don't record it normally. Right. So what do we record normally? Anterior. So क्या बचा हुआ है? V1, V2, V3, V4. So look at V1, V2, V3, V4. What do we have in V1, V2, V3, V4? ST segment? ST segment? Exactly. ST segment depression. What does that mean? Posterior में elevation हो सकता है ना? तो वो कैसे पता चलेगा posterior में elevation है कि नहीं? हाँ? We will do posterior ECG, right? तो posterior ECG करना है. तो posterior ECG करेंगे तो confirm हो जाएगा, है ना? तो तभी confirm होगा. But we still have some clues in this ECG which is suggestive of a posterior wall MI. Number one, V1, V2, V3 आप closely देखोगे, the ST segment is horizontally depressed. Number one. Number two, the R waves are unusually tall. Usually V1, V2, V3 में इतना tall R waves मिलते नहीं है. We usually have very small R waves in V1, V2, V3. And we will have big R waves in V5, V6. जहाँ apex आते हैं वहाँ पे बड़ा R waves मिलते हैं. यहाँ पे it is away from the ventricle. तो वहाँ पे R waves छोटा मिलते हैं. ठीक है. But here you have, yes. Yeah. So here you have unusually larger R waves in the right-sided chest leads, right-sided precordial leads. So that is the second clue. And third clue is that the T waves are upright. Usually V1 में T waves inverted या flat या biphasic होते हैं. इतना upright T waves V1 में नहीं होता. So here we have upright T waves. So three clues. Number one, horizontal ST segment depression. Number two, tall peaked R waves in the right-sided precordial leads. And number three, you have upright T waves, all suggestive of posterior wall MI. All suggestive of posterior wall MI. Confirm कैसे करेंगे? Posterior lead लेना है. Posterior leads कौन कौन सी है? 7, 8, 9. तो 7, 8, 9 मैंने ले लिया. तो ये सब आपने ऑलरेडी पकड़ लिया. ठीक है. 7, 8, 9 में क्या मिला? Significant ST segment elevation है. This is very significant because according to the criteria, posterior lead में even 0.5 millimeter ST elevation is significant, clinically significant. ठीक है. So this is posterior wall. सिर्फ posterior wall है. और क्या है? Inferior भी है. सिर्फ inferior है. थोड़ा बहुत lead 1 में भी मिला है ना. थोड़ा बहुत lateral का भी involvement है. So this is postero, infero, lateral wall MI. बचा क्या है? कुछ भी नहीं है. तो क्या करना है? हंसना है? We have a beautiful ECG. Wow. So in emergency department patient आ गया and you take an ECG. Ishan में wow, we have a beautiful ECG. Academic interest है. You have changes in lateral wall, inferior wall, posterior wall. Wonderful, fantastic. सबको बुला के दिखाना है. ये करना है. Why do we learn all these complicated stuff? Management apply करना है. So what should come immediately into your mind? इस पेशेंट का ना पोस्टीरियर वॉल बचा है, ना लैटरल वॉल बचा है, ना इंफीरियर वॉल बचा है. क्या बचा है सिर्फ? So the patient and सिर्फ एंटीरियर वॉल ढंग से काम कर रहा है. So the heart is pumping very very ineffectively. So this patient can anytime go into cardiogenic shock. तो क्या रेडी करना है? Okay, fine, defibrillator. So you have to make ready the crash cart. You have to keep ready inotropic drugs. So the patient can anytime crash. ठीक है, समझ में आया? This is the nursing consideration. इसीलिए सीख रहे ECG. This is the reason why you learn ECG. It's not wow, मैंने identify कर दिया. No, that is not the end point. That is the starting point. समझ में आया? So this is posterior wall MI. Thank you so much. Now again, restart. पीछे से. Start assessing from lead 1. Yes, madam. Specs. Yeah. Sorry, I don't know your name. Please stand up. So start assessing from lead 1. Look at the ST segment. Alexa didn't understand. Okay. Yes.
लुक एट लीड 1 एसटी सेगमेंट, कैसा दिख रहा है? डिप्रेस्ड है। तो ST1 में, थैंक यू सो मच। सो लीड 1 में ST डिप्रेशन है, तो नेक्स्ट कहां देखना है? AVL। AVL में क्या है? ST डिप्रेशन है, तो AVL कहां का लीड है? 1 एंड AVL हाई लैटरल। हाई लैटरल में ST डिप्रेशन है, तो फिर कहां देखना होगा? इंफीरियर में। इंफीरियर में क्या हो सकता है? एलिवेशन हो सकता है। इंफीरियर कहां का लीड्स है? मजा है ना? अच्छा गेम है ना? ओके फाइन। तो इंफीरियर में क्या मिल सकता है? ST एलिवेशन मिल सकता है। सो व्हाट डू यू लुक एट? इंफीरियर लीड्स बताओ ना। 2-3 AVF, लुक एट 2-3 AVF, क्या मिल रहा है? ST एलिवेशन है अच्छे से, है ना? सो व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? Inferior wall MI. Are you stopping here? Where do you go? Lateral हो गया, inferior हो गया, अब क्या बचा हुआ है? Anterior. Anterior में कहां देखना है? V1, V2, V3, V4. क्या do we have any significant ST segment elevation? Yes, but I'll come to that later. Okay, but that is not clinically, वो anterior MI नहीं है, we'll come to that later. Okay, next, last क्या आएगा? Posterior है इसमें? No. Okay, so let's wait for that. वो डिस्कस करने से पहले आई हैव टू डिस्कस समथिंग एल्स. नाउ दिस इज इंफीरियर वॉल एमआई. ओके, so with inferior wall MI we have to always keep in mind, again, why are we learning this? For the benefit of the, otherwise कोई फायदा है? You are a master of ECG, बहुत knowledge है, कोई फायदा है if it is not translated into your patient care? No. Okay, so now please understand, among entire patients who is coming with the problem of MI, 40% are patients of inferior wall MI. 40% लोगों में क्या है? Inferior wall MI है, ठीक है? Now among the all patients of inferior wall MI, another 40%, मतलब within inferior wall MI, 40% of people develop RV infarction. RV infarction is right ventricular infarction. Okay, right ventricle का wall infarct हो गया, ठीक है? तो क्या प्रॉब्लम है? Right ventricle is not pumping effectively, तो ब्लड अच्छे से कहां नहीं जा रहा? लंग्स में नहीं जा रहा. लंग्स में अच्छे से ब्लड नहीं आ रहा, तो कहां नहीं आएगा? लेफ्ट में नहीं आएगा. तो बीपी अच्छा होगा या बीपी कम होगा? सो दिस पेशेंट्स प्रीलोड इज ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड एंड इट इज कॉम्प्रोमाइजिंग हिज सिस्टमिक सर्कुलेशन, right? So patients of right ventricular infarction are preload dependent. Preload dependent. So in these patients usually हम MI में क्या देते हैं? We give nitrates देते हैं, हम डायूरेटिक्स देते हैं, है ना? So nitrates and diuretics, which is vasodilators and volume depleters, are contraindicated in patients with inferior wall MI with RV infarction. Because अगर आपने गलती से ये दे दिया तो patient will collapse, उनका preload और कम हो जाएगा, patient will collapse. Why I am telling this? Because normally in MI patients we give this. Nitrates देते हैं, Lasix देते हैं workload कम करने के लिए, but we don't give it in established inferior wall MI with RV infarction. तो बताओ nursing consideration क्या है? इंफीरियर वॉल MI आ गया एंड उनके इंस्ट्रक्शन बुक में क्या देखा आपने? नाइट्रेट्स देखा, लैसिक्स देखा. तो विल यू ब्लाइंडली फॉलो दिस ऑर्डर? अब समझ में आया व्हाई आर वी लर्निंग ECG? ओके, सो दैट इज सेकेंड थिंग. नाउ अभी इंफीरियर वॉल MI हमें पता है 40% केसेस में होते हैं. आई मीन RV इन्फेक्शन 40% केसेस में होते हैं. ओके, तो हाउ डू वी नो दिस पेशेंट, वेदर दिस पेशेंट इज हैविंग RV इन्फेक्शन और नॉट? कैसे पता चलेगा? Which is that particular lead in the ECG which is facing right ventricle? Right ventricle, नीचे से. Which is that particular lead where is right ventricle? This one is right ventricle, right? Which is that lead that is specifically focusing on right ventricle? This is right ventricle. Lead 3. Got it? So it is lead 3 that is specifically focusing on right
वेंट्रिकल. सो हमें क्या करना है, कौन सी लीड में देखना है आरवी इन्फेक्शन कंफर्म करने के लिए? वी लुक एट लीड 3. तो लीड 3 में क्या है? वी हैव ST segment elevation. Now you compare the ST segment elevation that you see in lead 3 with that of lead 2. बड़ा कौन सी है? Lead 3 में you see a big ST segment elevation, right? So that confirms, that doesn't confirms, that gives you a suspicion that this patient is likely to have right ventricular infarction. Confirm कैसे करेंगे? Which CCG? Right-sided ECG. Excellent. Thank you so much. So right-sided ECG में specifically you focus on lead V4R. V4R. So I'm getting right-sided ECG for this patient, and okay. So this is what I have. This is V4R. So क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? ST segment elevation. So is this patient a case of simply inferior wall MI or inferior wall MI with RV infarction? तो क्या करना है, क्या सोचना है? Okay, I have an ECG of a patient with inferior wall MI and RV infarction. What should I do? Nitrates and vasodilators and volume depleters like Lasix are contraindicated in this patient. Number 1, and number 2, you should also think about another problem. In inferior wall MI, 20% of people usually develop heart blocks, advanced heart blocks. Heart blocks सीखा था वीडियो, I mean उसमें. So advanced heart block like 3rd degree and 2nd degree type 2. So advanced heart blocks are very common among these patients. So if you have this patient, 2 things you have to do. 1, you have to make sure that the preload is maintained. The BP is managed by fluids. You will not give vasodilators and volume depleters, and if the order is there, you will have to recheck it. This is the nursing consideration. And 3rd thing, you know that such patients are prone for advanced heart block, so you keep ready the pacing machine. You keep ready you don't need to wait for the order of a doctor. If you see the ECG, you have to do this. This is proactive nursing. This is called proactive nursing. This is why we are there in hospital. It's not just to blindly follow orders. It is your responsibility to recheck orders and to anticipate patient problems and to keep ready things accordingly. That is why you learn this. Otherwise, सिर्फ order follow ना कर रहे हैं तो ये सब सीखने की क्या जरूरत है? बस procedure सीखो, clinic में जाओ. ठीक है? समझ आया? So this is the clinical significance of inferior wall MI. Yes, next ECG. Yeah, madam, please. Yes, yourself. नहीं, next. Yeah. Scan. Yeah. कितना time? How long? 3:15 तक? ठीक है? Yeah. Okay. Lead 1, you find ST segment elevation. Okay. हाँ. Yes. हो गया. हाँ, आपका okay. हो गया ना? तो 5 मिनट. No, please. No. ठीक है, Take फिर तो place, we have to go for post. ठीक है. हाँ, 5 minutes में. हाँ. Okay. तो ये तो anterior हो गया, and then I'll stop. Yes. So lead 1, you find ST segment elevation. So if you find in lead 1, where next you have to see? AVL. AVL में है. So which wall is involved? Just lateral wall? Upper lateral, high lateral is involved. Okay, screen further. Lead 2. Do you have ST segment change in lead 2? ST segment elevation hai? See the J point. No, the J point is at the baseline, right? The J point is at the baseline. You don't have ST segment elevation. Yes. Next. Lead 3. Lead 3 में क्या है? Yes, you're right. ST segment depression, which is a reciprocal change of the high lateral lead. Right, high lateral का reciprocal change है. तो inferior clear हो गया. Inferior में सिर्फ reciprocal change है ना? So lateral wall is involved. तो inferior का screening हो गया. Now moving to anterior. Anterior में कौन सी lead है? V1, V2, V3, V4. क्या है? ST elevation है? Okay, ST elevation है. तो ये सारे में ST elevation है. This is anterior wall MI. So anterior भी है, lateral भी है. So this is example of anterolateral. But if you closely examine, you also have ST segment elevation in V5 and V6. Right. So low lateral भी involved है, high lateral भी involved है. दोनों involved है.
है ना? So this is called as extensive anterolateral MI. Okay, so different varieties and anterior MI. I'm not going to those details. Okay. Okay, so this is anterior wall MI. Again, for clinical significance, anterior wall MI, 27% of people with anterior wall MI will, mortality rate 27% active. So it's a very high rate. So anterior wall is a big wall. So a big wall, when it is involved, it really compromises the circulation. Patient can go for cardiogenic shock, arrhythmias, and arrest. So this is your nursing consideration. You have to be ready with the crash cart and all resuscitation equipments and inotropes. Clear ho gaya? Okay, the last ECG in infarction is this one. Okay, which one is remaining? Which one is remaining? First, lead one. Yes. One में problem है तो कहाँ देखना है? AVL में problem है? So okay, AVL में problem है. And in inferior walls, you will see reciprocal changes. That's it. Right? Now you move on to V5 and V6. How is the T wave? Hyperacute T waves, right? Hyperacute T waves in V5 and V6. Right? So this is evolving MI. So this is lateral wall MI. ठीक है? So सारे examples मिल गए आपको? ठीक है? So this is how you interpret MI in ECG. Now, nursing considerations management may we have, but I'm not going to those details because I have limitation in limited time. So, but you can always read about this. What are the nursing considerations? You just note it down. What are the nursing consideration in administration of aspirin, in administration of nitrates to patients in MI? ये दोनों points note कर लेना. Just read. Okay. So these two things you are supposed to read, and the third thing you are supposed to read is the American Heart Association's algorithm for management of ACS. Acute coronary syndrome का management algorithm देखना है. That's it. और कुछ नहीं. And the last thing that I would like to tell you is ischemia, nothing else. So ischemia में दो ही चीज आपको ध्यान रखना है. Number one is ST segment depression and T inversion. These are the two signs of ischemia. So unlike MI, you will not find active reciprocal changes in ischemia. MI में reciprocal changes मिलेगा. Ischemia में less likely you will have reciprocal change आपको होगा ही नहीं. अगर होगा तो that is MI. It's not ischemia. ये आपको ध्यान में रखना है. And very important, not all ST segment depression and T inversion are ischemic, because you can have it in hypertrophic conditions, you can have it in drug effects like digoxin. In सब में STT deviations होता है, inversion and T inversion होता है. But how do you differentiate? Dynamic changes. Dynamic मतलब when the patient is resting, ECG is normal. When the patient is exerting, there is ST segment depression and T inversion. So this is called as dynamic STT changes. So when there is dynamic STT depression and T inversion, that is ischemia. Resting may be ऐसा ही है, then that is not ischemia. That is something else. So this is how you differentiate. Is that clear? Now this is an example of subendocardial ischemia. I'm not going to those details. Okay, I'm winding it up. Any questions? बस ग्रॉसली मैंने आपको MI कैसे आइडेंटिफाई करना है वो बता दिया. नर्सिंग कंसिडरेशन हर एक MI का बताया, एंड बस इस्कीमिया का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ही बताया. Yes, right. If you have any questions, you can ask. Otherwise, we'll wind up. Any questions? इतना बुरा था, कुछ भी नहीं समझ आया? Yes? Are you sure? Okay, thank you so much. ये ले लो. हाँ बता दो मेरी. Thank you so much, Sajjan sir, for such a wonderful session. So, how is the Josh? Hi. How is the Josh? Sir भी बोल सकते हैं. हाँ. So now we are having a session. For whatever we have learned, we are going to do it in a practical way. We are having a skill lab. So skill station. 7 stations will be there. Students will have to move in 11 group. Group of 11. Group of 11. Nandita, Anisha Chowdhury, Anjali,
Ashdeep, Asha, Athena, and Ayushi. Ashwin. Sorry, Athena will do. Ayushi will next group. Please go faster. You know the roll numbers, na? You can line up first. Next. Please be prepared. Ayushi, Bharti, Bhavna, Daljit, Geetika, Harshita, Hema, Manshi, and Jyoti. Go to station number 2. Next, Karishma, Kavita, Kavita Sharma, Kavita Tori, Mamta, Maria, Meena, Monica Chauhan, Neha Jangir. Last floor. And Nisha also. Station 3. Next, Nishika, Preeti, Priya, Priyanka Yadav, Rachna Kumari, Rajashri, Renu, and Riya Sharma. And Roshni also. Station 4. Please go quickly. Next. Soumya, Shaina, Shivani Yadav, Shraddha, Shalu, Sneha, Sonia. Please don't be in front of the camera. Viewing. Sunita Devi, Sunita Singh, and Tanya. Next station 5. Teresa, Vartika, Vinita, Vishakha, Ananya, Anita, Anjali, Kirti, Mari, Suman. How many students are remaining? 6. कितना students remaining है अभी? सब लोग 7 में चले जाना जो भी रिमेनिंग है, ठीक है? So 6 station ही है. 6. Excuse. thank you so much for all those who have joined in YouTube and online mode. I sincerely express my gratitude for all those who have joined for giving your special time for us. Thank you.